Hello, good morning. Welcome to CACSIS. This early morning, we have been here to start a new marathon series about the current affairs, right? The current affairs series start kariba. For starting, just give me minutes, get the link, and then we will start the session. Correct? So, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ join କରିବାକୁ time ଦେଇଦେବା. Correct? Let everyone join. ठीक, चलो. So, good morning, everyone. Again, then. Today we will be starting the current affairs marathon. Basically, current affairs marathon mane kona, we will be doing some important current affairs of some of the few ones. Current affairs ro marathon session tomaro dita section rachi. Dita section re mane aji ame kichita basic kariba, basic some of the objective question current affairs ro objective kariba. In the later second session joda habo au kichi din pare mane other PYQs, P0 PYQs डिस्कशन कर साला परे आउ गोटे करंट अफेयर सेशन हबो सेथिरे आमे आउ किछिटा इंपोर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी करबा आज भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अछि बट इन दी सेगमेंट इट इज वेरी लेस so that we will get an overall news को cover करि परिबा maximum coverage maximum important events को discuss करि परिबा सेथि पय आजिकार सेशन ता अछि ए सेशन ता कंटिन्यू हबो beginning from me I'll start from the month of January February March April एमती सेगमेंट रे कंटिन्यू करिवो all of the faculties coming and they will be taking this series continuously. Correct? Mu January start karuchi. Then Devashish sir asibe, then tomra mane Pavitra sir asibe, and Nandina ma'am asibe, and we will be discussing all of the current affairs. तो सेति भाई एटा गोटे लॉन्ग सेशन पुनी आउथरा चलिबो तो सेति भाई जो माने भी इंटरेस्टेड अछ जो माने करंट अफेयर्स देखिनो जो माने करंट अफेयर्स कवर करिनो किबा माने कर स्किप करिचो ताहले तम पई बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन रहइबो many of the questions will be discussed which will be important for your examination correct तो लेट न करके we will start with the question किछटा इजी क्वेश्चन भी अछि किछटा ट्रिकी क्वेश्चन भी अछि ट्राई टू आंसर अदरवाइज एल्स आमे स्टार्ट करबा डिस्कशन आई विल बी टेलिंग यू ऑल ऑफ द आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची फर्स्ट क्वेश्चन कहूची which city was officially notified as the 6th municipal corporation of odisha on January 1 2026 January 1 2026 रे को सिटी को ऑफिशियली 6th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करा गला तो एबे 6th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माने कोन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सही टाउन्स को करा जाए जो जहार पॉपुलेशन 10 लाख प्लस हो जाए 10 लाख प्लस रो जदी पॉपुलेशन थिबो ताहाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करा जिवो आ एटा 6th टाउन किए हला ता माने आगुरु हम पाखरे केतरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अछंती आगुरु हम पाखरे पांचटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आगुरु ही थिले किए जेमति कि भुवनेश्वर कटक करेक्ट बीबीएसआर कटक बरहमपुर देन संबलपुर and Raurkela. Correct. These 5 were there. आगुरु ए पांचटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम पाखरे थिले एबे 6th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काहाको करा हला के कहि परिबो कोन कहू यस सकाल सकाल कहारी नि दवांगी नि The 6th municipal corporation notified in January was Puri. Puri को 6th municipal corporation कहला because the population has crossed 10 lakh plus. तो सेटा गोटे large town रे convert हेगला. Municipality is basically 1 lakh to 10 lakh population. Municipality जोटा कुआ जाए सेटा 1 lakh to 10 lakh थाए तो बाकी सब smaller towns so municipality municipal corporation ओडिसा रे 6टा रहला. Clear? Moving on to the next question. Right?
Second question goes, Chief Minister Mohan Charan Maji launched which digital portal in January 2026 for a real-time tracking of state and central finance commission funded projects. Central और state रो finance माने funded projects गुड़ा को track करिवा पाई को digital portal को launch करा है तला आ भितरे चारिटा ऑप्शन अछि प्रगति, मो विकास, समीक्षा और अनुदान. Yes, fast सेटा फटाफट आंसर करिवो सेटा फटाफट सेशन चलिवो सेटा अधिका क्वेश्चन रो कवरेज होबो विद इन कैलकुलेटेड टाइम और एल्स अगेन लास्ट मैराथन सेशन जेमिति हमर आगु पढिला. वेरी गुड प्रिया. समीक्षा करेक्ट. एबे प्रगति पोर्टल टा कोन थिला? प्रगति पोर्टल टा बेसिकली तमरो प्रोग्रेसिव माने प्रोएक्टिव टाइमली गवर्नेंस तो प्रोग्रेसिव एक्शन ग्रोथ ए सब दिन को ट्रैक करा पे हेतला. एटा 2015 लॉन्च हेतला सेंट्रल मिनिस्टर माने यूनियन सेगमेंट रे. तो यूनियन सेंट्रल सेगमेंट रे एटा लॉन्च करा हेतला. एटा होची तमरो गवर्नेंस फंडेड प्रोजेक्ट जेति कि भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट होती ता भितरे इन्फॉर्मेशन पे प्रगति लॉन्च हेतला. मो विकास एमती मो विकास रे किछ खास स्कीम नाही. पीएम विकास रो गोटे स्कीम अछि जोटा कि स्किल ट्रेनिंग विषय रे इन्फॉर्मेशन दिए. तो स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट पाई गोटे पीएम विकास स्कीम अछि. ई अनुदान टा होची एनजीओ रजिस्ट्रेशन करेक्ट. एनजीओ रजिस्ट्रेशन किंबा तमरो बेसिकली जो माने सर्टिफाई करूछंती गोटे सर्टिफिकेट दरकार पड़िबो जो एनजीओस सेति पई ई अनुदान रो पोर्टल टा हेतला राइट. तो सेति पई कोन हे जिवो प्रगति इज डेफिनेटली नॉट देयर. प्रगति होबो नाही, ई अनुदान होबो नाही. मो विकास तो सेमति स्कीम नाही. समीक्षा पोर्टल इज बेसिकली द पोर्टल लॉन्च्ड फॉर ओडिशा स्पेसिफिकली. ओडिशा रे जति कि स्टेट और सेंट्रल फाइनेंस कमिशन रो जति कि भी प्रोजेक्ट फंडेड होची ते विषय इन्फॉर्मेशन समीक्षा पोर्टल रे मिलिबो करेक्ट. नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखिए डरिबो नाही. दीज आर इजी क्वेश्चंस हला. एडा फर्स्ट सेशन करंट अफेयर्स तो इजी क्वेश्चंस ही अछि, किछ असुविधा नाही. मु स्टेटमेंट पढि दोछि. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओडिशास मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स. मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स माने कोन माने बेसिकली तमरो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइबा पई ओडिसा रा किछरा स्टेप्स निया आइछि आ सेहि पई किछरा दिनस देखिबा. Paradip port became the first major port on the eastern coast to operationalize a fully AI-based cargo traffic monitoring system. AI-based cargo traffic monitoring system lagila Paradip re boli kuha jauchi. Second, the proposed expansion of Subarnarekha port aims to strengthen coastal trade connectivity with Southeast Asian nations. Boli kohuchi. Then, Odisha's port-led industrial strategy is being aligned with the National Maritime Amritkal Vision 2047 framework. Amritkal Vision sangere maritime activities align kara jauchi, and that is what the question is asking. Yes. Kon hava answer? No one? Nahi? Good. देखो, Paradip port become the first major port on the eastern coast to operationalize a fully AI-based cargo traffic monitoring system. एटा cargo traffic monitoring system नु है जो vessel traffic monitoring system को indicate कराए छी VTMIS बोली कुहा जाए. तो जति कि vessels आसु सेमान को monitor करिवा पई गोटे AI based system लागि छी. 3D माने 3D टेक्नोलॉजी बेसिकली तमरो 3D टेक्नोलॉजी भी अछि जोथरे कि तमरो वेसल मूवमेंट आ वेसल रो अप्रोचिंग सिस्टम को जणा पड़ी परिबो. तो सेति पई खाली कार्गो पई नुहे सबु दिन पई सबु वेसल रो मूवमेंट पई एटा को इंप्लीमेंट करा हेची. कार्गो ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम रे सेंसिस कोन जो कार्गो नै कि आसुचंदी केवल तांकु नुहे शिप्स हो कि तमरो जहां भी छोटो मोटो बोट्स हला सेमान को भी मॉनिटर करा होची. तो VTMI सिस्टम यस दैट इज बीन इंप्लीमेंटेड. VTMI सिस्टम इंप्लीमेंट करूची किंतु से जेहेतु लेखुची कार्गो ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम सेति पई ए स्टेटमेंट ता कोन हे जिवो भूल हे जिवो. सेकंड, द प्रपोज्ड एक्सपेंशन ऑफ सुवर्णरेखा पोर्ट एम्स टू स्ट्रेंथन कोस्टल ट्रेड कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्टर्न नेशंस. आसियान नेशंस को सहित ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़िवा पई सुवर्णरेखा रे डेफिनेटली बहुत सारा प्रोजेक्ट चली छी. आउ ट्रेड रूट्स को रीवाइटलाइज करा होची एंड दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट.
Odisha's port-led industrial strategy is being aligned with the National Maritime Amritkal Vision 2047. This statement is also a genuine statement. ताहले ए statement टा भी ठीक रहबो. तो कौन है जो आंसर 2 and 3 correct. First statement को छाड़ देगी 2 and 3 only will be the correct answer. Is that clear? अरे बुझे होची ना नहीं? बुझे होची? Getting the point? Correct. Current affairs you have to take it as it is. तो current affairs कौन factual information event news तो सेटा जते तमे रिपीट करबो जते प्रैक्टिस करबो सेही हिसाब रे तुमको करंट अफेयर्स टा अधिक मन रहबो तापर जते वाइड कवरेज रहबो सेते तमे ओएस पाई प्रिपेयर हेकी चालिछो बनी जणा पड़िबो. Question number 4. In January 2026 the Defense Research and Development Organization DRDO successfully conducted a salvo launch of which indigenously developed missile of the Odisha coast near Chandipur. चांदीपुर रे जनवरी रे को मिसाइल टाकू इनिशिएट करा हला किबा टेस्टिंग करा हला. Agni 5 na Prithvi 2 na Pralay na Akash NG which was tested in this in the month of January in the coast of Chandipur. कोटा टेस्टिंग करा हला कोटा टेस्टिंग करा हला Agni 5 तो आगु टेस्टिंग सरी जाईची. Agni 5 गोटे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ता माने कोन तार रेंज ता केते 5000 करेक्ट 5000 किलोमीटर्स रो रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. एबे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल रो डिफरेंस आई बिलीव यू मस्ट बी नोइंग. तमे समस्त जानि थेबो बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन रे लॉन्च करा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन रे जाउची जेहेतु एटा को बैलिस्टिक कहा जाए. क्रूज मिसाइल रे गोटे जीपीएस गाइडेड सिस्टम था तो सेटा गाइड करके नहीं जाए एंड दैट इज कॉल्ड एज द जीपीएस मिसाइल. पृथ्वी 2 इज आल्सो ए पर्टिकुलर बैलिस्टिक मिसाइल बट जहार रेंज ता 252 300 किलोमीटर्स भितरे लिमिटेड अछि करेक्ट. एटा भी गोटे बैलिस्टिक मिसाइल but our range टा limited. Pralay was tested in January. Pralay missile was tested in January and Pralay missile को चांदीपुर बीच पाखरे टेस्टिंग करा हला. This is also an indigenous developed missile. Akash NG ए NG टा माने कोन Akash NG माने एटा होची न्यू जनरेशन मिसाइल. ए न्यू जनरेशन मिसाइल बेसिकली इंडिया रो डिफेंस सिस्टम रे लागिथिला जेतबेले सिंदूर ऑपरेशन चलिथिला. तो से डिफेंस सिस्टम रे कोन आकाश एनजी बेसिकली 60 टू 80 किलोमीटर्स रो रेंज भितरे जो कोनसी मिसाइल आसुथबो ताकू इंटरसेप्ट करिकी ब्लास्ट करिवारे हेल्प करे. तो आकाश एनजी टा डिफेंस सिस्टम रे लागि छी करेक्ट. नमस्कार कुंवर बास्की राइट चलो बुझला. तो कोटा मिसाइल टेस्टिंग हला प्रलय मिसाइल वाज टेस्टेड करेक्ट. नेक्स्ट who from Odisha won the prestigious Saraswat Samman 2026 for outstanding literary excellence. Saraswat Samman award किए जीतिले. Out of all of these four, Saraswat Samman award किए जीतिले. फटाफट आंसर करो. Saraswat Samman 2026 ये समस्ते जो माने अछंती महेंद्र कुमार मिश्र, शरद कुमार पात्र, चरण हेम्ब्रम एवं समस्ते पद्मश्री सुजीत कुमार सतपति बलांगीर रो जने पोएट एंड साइंस टीचर तांको कहा जाए एंड सेति पई सीए जितिले सारस्वत सम्मान अवार्ड 2026. बाकी जो माने अछंती महेंद्र कुमार मिश्र, शरद कुमार पात्र, चरण हेम्ब्रम एवं समस्ते पद्मश्री 2026 लिस्ट रे दे हैव वन द पद्मश्री अवार्ड्स करेक्ट. तो से माने पद्मश्री अवार्ड जीति चंती एठो गोटी ही ना अछि जे कि सारस्वत सम्मान अवार्ड जीति right. Next which wildlife sanctuary in Odisha was officially declared entirely Maoist free in January 2026 clearing the path for robust wildlife monitoring पे को दिन सटा तमरा को wildlife sanctuary Maoist free हला. Maoist free से wildlife sanctuary हेतिबो जो wildlife sanctuary ता कोन हेतिबो Maoist area रे थिबो. तो सबुटु इंटरेस्टिंग दिन हो जे भितरकनिका केंद्रापड़ा भितरकनिका wildlife sanctuary तेथरे Maoist area थिला ही नाही. Simlipal wildlife sanctuary you can say कि Simlipal side रे Maoist area नथिले but that was a tribal populated wildlife sanctuary. तो basically Simlipal भितरकु जत्तबे जीवो सेतना अधिका tribal population सबुठु हाईएस्ट वाटरफॉल्स तमर सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे मिले. इट वाज सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोटा कि तुमको माओइस्ट फ्री डिक्लेयर कर दिया गला. सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को माओइस्ट फ्री डिक्लेयर करा हला. आ एबे सेटा वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग पाई रोबस्ट फॉर्मेशन
आगु को बढ़ेबो करेक्ट तो दैट इज व्हाई द आंसर विल बी सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लियर next what was the central theme of Odisha's Republic Day tableau at New Delhi for January 26 2026 ओडिशा रो रिपब्लिक डे रो थीम कोन थिला रिपब्लिक डे टैब्ल्यू 2026 रे जो ओडिशा रो टैब्ल्यू जाइथिला सेतिरे तांकर कोन इन्फॉर्मेशन थिला माने कोन थीम बेसिकली थिला ओडिशा रो थीम थिला कोन जगन्नाथ कल्चर एंड हेरिटेज ना वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल ओडिशा ना सॉइल टू सिलिकॉन ना मैरीटाइम ग्लोरी ऑफ कलिंग कोन थिला तांकर थीम एज यू ऑल आर आंसरिंग तो ठीक अछि करेक्ट यदि आंसर करू जो तो फटाफट आंसर करि चलो मो संगे कौन थिला आंसर कौन थिला तांकर थीम थिला सॉइल टू सिलिकॉन सॉइल कौन पई सॉइल थिला सॉइल बिकॉज ऑफ ट्राइबल कल्चर ओडिसा रा ट्राइबल कल्चर को रिप्रेजेंट करा होतला से पे ता थीम थिला सॉइल तापर थिला सिलिकॉन सिलिकॉन इन द सेंस इज सिलिकॉन वैली ओडिसा एबे नुआ रे आईटी हब कन्वर्ट होची एंड इट इज बिकमिंग आईटी हब तो सेति पे ओडिसा जति एबे भुवनेश्वर रे बहुत सारा आईटी सेक्टर होची आईटी हब कन्वर्ट होची and that is why Silicon Valley भी कहा होता है soil to silicon was the theme of Odisha's tableau at Republic Day 26 right next with reference to renewable energy developments in Odisha during January renewable energy रो development को regard करिकी किछटा question देखो renewable energy segment रे कोन development हेतला Odisha announced a policy emphasis on floating solar projects रो गोटे policy implement करा हला in reservoirs associated with major irrigation systems correct second the state identified Ganjam and Kalahandi as priority districts for offshore wind energy mapping wind energy pai Ganjam and Kalahandi को integrate करा हला offshore wind energy okay then Gridco entered into new agreements for procurement of green energy to support industrial decarbonization pai Gridco enter कला बोली कहा जाउची then which of the following statements are correct which of the following statements are correct को statement ठीक हबो yes first statement account कहूची floating solar projects in reservoirs definitely जोठी reservoir अछि major irrigation project जोठी अछि जोठी dams अछि छोटो छोटो dams create करा हैछि और reservoir अछि सेठी एही solar project को implement करा हैछि ए statement तो ठीक अछि second कहूची the state identified Ganjam and Kalahandi as priority districts for offshore wind energy mapping माने कोन shore रु दूर रे थाई के wind energy mapping but then Kalahandi टा basically कोन हे जिवो जंगल एरिया तो जंगल एरिया रे सेते wind generate हुए नाही Ganjam रे yes it has been dedicated as an offshore wind energy project Kalahandi रे सेति के wind energy generate हे परिबो नाही and that is why ए statement टा भूल हे जिवो Gridco entered into new agreements for procurement of green energy to support industrial decarbonization this statement is also correct answer कोन हे जिवो one and three only correct बुझियला next Simanjal Patra, who was selected for the Padma Shri Award in January 2026, is a renowned master artist of which traditional folk theatre? Gotipo dance, Pala, Prahalad Nataka, or Dandanat? Dandanat जरा क्वेश्चन तमे देखि देखि देखु देखु दंडनाट को एलिमिनेट कर दे पारिबो बिकॉज़ दंडनाट इज ए रीजनल फेस्टिवल एबे सीजीएल रे भी तमरा क्वेश्चन आसीतला रिगार्डिंग दंडनाट तो सेथिरे दंडनाट रो थीम पचरा हेतला तो दैट में ओडिसा रो जति कि रिलीजियस सेगमेंट अछि ता ऊपरे भी थीम ऊपरे भी क्वेश्चन बेस करि पारे वी आर नॉट सेइंग कि ओडिसा रो किछि भी दिनस को तमे स्किप करि पारिबो नाही एज यू आर द मेंबर ऑफ और द सिटीजन ऑफ ओडिसा तो सेति पे तमे से माइंड रखिबो गोटी पुओ रे मागुरी चरण दास एंड केळु चरण पात्र सेमानकर बहुत ही पार्टीशन सबुटो इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी एठी गोटी पुओ रे मागुरी चरण दास अछन पालारे सेमती बेसी रिनाउंड आर्टिस्ट वी हैव नॉट नोन अबाउट दैट प्रहलाद नाटक रे सीमांचल पात्र गोटे रिनाउंड आर्टिस्ट थिले एंड प्रहलाद नाटक पई तांको पद्मश्री अवार्ड मिली करेक्ट नेक्स्ट
Deputy Chief Minister Pravati Parida inaugurated a tribal language based early education pilot program. Tribal language based माने कौन? Tribal language based माने basically तुम्हारा tribal language of Munda language, Tui language, Tora language ए सब ऊपर बेस करिकी गोटे नुआ प्रोजेक्ट तैयारी करा हेची जोथरे की सेटा अर्ली पायलट प्रोग्राम स्टेज रे अछि आ सेटा एबे इंप्लीमेंट करा हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स districts is part of the first phase out माने इनिशियली ए दिन सडा को कोठी लॉन्च करा होची ता माने ए मदर टंग को इंट्रोड्यूस करा होची इनटू एजुकेशन सिस्टम एंड ए ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रमोशन भी मिल जिवो तो ए जो फर्स्ट फेज आउट हबो डेफिनेटली से लोकेशन रे हबो जो लोकेशन पे लैंग्वेज बिलोंग करे एंड ए लैंग्वेज का कोठी बिलोंग करूची आ भितरे जो कटक पूरी लेखा है दीज आर ऑल माने एथिरे ट्राइबल पॉपुलेशन अधिका नाही तो तेणु करी ए सब जिनस को एलिमिनेट कर साला पर यू विल गेट द आंसर केउंझर कंधमाल एंड मालकानगिरी केउंझर कंधमाल एंड मालकानगिरी भितरे एक प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज आउट रे इंट्रोड्यूस करा हेची धीरे धीरे सेटा अदर एरियाज को भी इंप्लीमेंट करा हबो राइट next consider the following statements about Odisha's tribal welfare initiatives highlighted in January 2026 tribal welfare initiatives जोटा को January 2026 highlight कराला the state expanded digital documentation of particularly vulnerable tribal groups PVTGs are an interesting and important question of OPSC PVTGs good morning PVTGs ऊपर OPSC repeatedly बारंबार क्वेश्चन पचारुची so you have to see the PVTGs regularly under an integrated livelihood tracking program okay PVTGs ऊपर जहाँ भी क्वेश्चन देथिबो जदि सेटा पॉजिटिव अछि ताले से स्टेटमेंट ता डेफिनेटली ठीक हेतिबो काहे ना PVTGs रो प्रमोशन पई एबे गवर्नमेंट एंड सरकार बहुत दिन से करूचंती करेक्ट ओडिशा proposed inclusion of additional tribal languages in early grade multilingual education एबे ही ए दिन सटा कले मुंडा लैंग्वेज कुई लैंग्वेज सोरा ट्राइब लैंग्वेज कुवी लैंग्वेज एगुडा के सब एबे नुआ एजुकेशनल सिस्टम रे इंट्रोड्यूस कराला ना नहीं फर्स्ट फेज आउट एबे तो जस्ट कोला क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक अछि देन a dedicated tribal climate resilience mission was launched exclusively for coastal tribal communities climate resilience mission exclusively केबे लॉन्च हबो नाही काहे कि ना एटा समस्तंग पई इंक्लूड हेतिबो तो एटा इंक्लूसिव परफॉर्मेंस हबो एक्सक्लूसिव केवल ट्राइबल कम्युनिटीज पई क्लाइमेट रेजिलियंस मिशन लॉन्च हबो नाही समस्तंग पई लॉन्च हबो करेक्ट तो सेति पई ए स्टेटमेंट ता कोन हे जिवो भूल हे जिवो आंसर कोन क्लियर अरे बुझी पारछो ना नाही ठीक moving on to the next segment in the context of Odisha's disaster preparedness measures reported in January 2026 माने disaster preparedness माने 2025 रे ओडिसा रे जति भी disaster हेतिला ताकू नै कि गोटे रिपोर्ट तयारी करा हेतिला आ सेही रिपोर्ट रे कोन कोन दिनस कुहा हेछि सेही दिनसटा क्वेश्चन पचारुछि Odisha strengthened its community based cyclone shelter management model with AI enabled warriors with AI enabled warning dissemination तामाने community based programs को अधिका promotion करायतला the state government proposed integration of mangrove restoration with coastal disaster mitigation planning then Odisha disaster rapid action force ODRAF was merged with the NDRF National Disaster Response Force during this period last year रे ODRAF and NDRF को merge करा हेतला बोली से कहूची which of the following statements are correct first statement कौन कहूची फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची तार कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम को साइक्लोन शेल्टर मैनेजमेंट सहित आउ एआई एनेबल्ड डिसेमिनेशन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करा हला डेफिनेटली ए दिनसटा लास्ट ईयर देखा जायतला जेतेबेले भी ओडिसा बे स्ट्रेंथन करूची तार साइक्लोन शेल्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम एटा टिके कम्युनिटी बेस्ड रहूची ता माने एनजीओ एंड अदर कम्युनिटीज व्हिच आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द बेसिक माने फ्लड साइक्लोन रिलीफ जो माने काम करतुंदी से माने को इंटीग्रेट करा हला ता सहित एआई एनेबल्ड सिस्टम्स भी वार्निंग सिस्टम कराला the statement is a genuine statement अब ये स्टेटमेंट ता ठीक हबो तापरे the state government proposed integration of mangrove restoration mangroves सुडा को basically shock absorbers बोली कहा जाय तो तेनु करी mangroves माने shock absorbers in the sense जति भी फ्लड साइक्लोन थाए सेना mangroves माने absorb करंती और तापरे ताकू रिस्टोर करिकि ताकू एनहांस करिवार प्रोजेक्ट ता डेफिनेटली डिजास्टर मिटिगेशन प्लानिंग रे इंक्लूड हेकी अछि ए स्टेटमेंट ता भी कोन हे जिवो ठीक हे जिवो देन कहूची ओड्राफ्ट एनडीआरएफ सहित मर्ज हेतिला ओड्राफ्ट एनडीआरएफ सहित मर्ज होबो नाही एटा गोटे स्टेट एटा होची सेंटर ए माने अलगा यूनिटीज रहंती सेपरेट एंटिटीज हेकी ए माने काम करंती बट
एमाने लास्ट को जेतेबेले तमरो कोन हुए जेतेबेले तमरो कोठी भी डिजास्टर हुए एमाने मिसी की काम करंती बट एमाने सेपरेट एंटिटी ही रुहंती एमाने केबे मर्ज हुंती नाही सो सेति पे थर्ड स्टेटमेंट ता भूल हे गेले आंसर कोन हे जिवो 1 and 2 ओनली करेक्ट अरे बुझ परछ ना नहीं डी केमिति हबो सब स्टेटमेंट ठीक नाही ना एटा मर्ज हला ओड्राफ्ट मर्ज थोड़ी हला इंडिया रफ संगे करेक्ट Next, in January 2026, an MOU was signed. MOU is in the sense is memorandum of understanding. Memorandum of understanding in एथिरे कोनसी कोलैटरल सिस्टम नाही एठी गोटे अंडरस्टैंडिंग रो मेमोरेंडम बेसिकली ट्रस्ट रो थ्योरी करेक्ट ट्रस्ट रो थ्योरी ऊपर गोटे बेसिक साइन करा हेची मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन NHAI एंड व्हिच रेलवे एंटरप्राइज NHAI आउ को रेलवे एंटरप्राइज MOU साइन करिसंती जोटा कि ओडिशा रे रेल कॉरिडोर्स बिल्ड करिया पे हेल्प करबे जोटा कि हाई टेरेन माने जोटा तमरो बहुत ही हाईली एलिवेशन रे अछि से हाई एलिवेशंस रे कोठी रोड तयारी हवा पे ए जिंसटा हेल्प करिवो आ ए एमओयू टा कहा कहा भीतर साइन हेछि NHAI आ ईस्ट कोस्ट रेलवे भीतर साइन हेछि ना कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित साइन हेछि ना तमरो इरकॉन इंटरनेशनल बिसरे साइन हेछि ना रेल विकास निगम लिमिटेड सहित साइन हेछि जस्ट अ सेकंड Okay, sorry for the interference. There was an important call. ठीक तो एबे कोन हे जिवो ऑडिबल अरे साउंड आछिना नहीं देखो कोन हे जिवो का से तो बेसिकली NHAI MOU साइन करिछि ओडिसा रो हाई टेरेन्स रे गोटा रेलवे कॉरिडोर को साइन करबा पे माने रेलवे कॉरिडोर बिल्ड करबा पे का से तो KRCL सहित कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित साइन करा हेछि आ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए जिंस रे हेल्प करिवो करेक्ट Next, consider the following statements regarding higher education reforms in Odisha in January 2026. Odisha initiated measures for integrating skill-based micro-credential courses. Skill-based micro-credential courses कौन? Skill enhancement, skill development पे छोटो मोटो course जोड़ा कि 3 months रो course, 6 months रो course एगुड़ा कहा जाए micro-credential courses within state universities. Ravencha University was designated as the nodal institution for a statewide heritage research network. Then the state announced complete replacement of conventional examinations by digital competency. Conventional examinations by digital competency. Then the state announced complete replacement of conventional examinations. A statement को कौन देखी कहबो complete replacement देछि कन्वेंशनल एग्जामिनेशंस को कंप्लीटली काहे की स्टेट रिप्लेस करे को चाहिबो बाकी सब स्कूल कॉलेजेस रे तो कन्वेंशनल एग्जामिनेशन हबो ना ए स्टेटमेंट तो देखि कि तमे एलिमिनेट कर दबो आ जदी थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दलो ऑप्शन कोन हे जिवो करेक्ट आ एलिमिनेशन मेथड रे तो तमे इजीली ही आंसर पाई जिवो राइट बट आ भितरे सब इंटरेस्टिंग न्यूज़ होची कोन रेवेन्सा यूनिवर्सिटी वाज प्रपोज्ड एज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर स्टेट वाइड हेरिटेज रिसर्च नेटवर्क दिस स्टेटमेंट इज ट्रू and एटा ही तमरो important news correct next with reference to Odisha's wildlife and conservation related developments January रे जति की conservation related developments in the census कोन January रे basically survey हुए माने जति की पाल रे तमरो tiger numbers जेमते भीतर कने गारे crocodiles अछन तो सेतरे number of olive ridley turtles ये सब सर्वे स्टार्ट हुए जनवरी मंथ रे इन जनरली तो लास्ट ईयर पूरा सर्वे हुए तो सही सर्वे रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आसीबो देन satellite assisted monitoring of olive ridley turtle congregation zones was intensified along Odisha's coastline. Similipal Biosphere Reserve adopted a drone supported anti poaching surveillance mechanism. Bhitarkanika National Park was declared India's first carbon neutral mangrove ecosystem. Which of the following statements are correct? आ भितरु को स्टेटमेंट ता ठीक अछि ओडिशा एबे इंक्रीजली सैटेलाइट टैगिंग GIS मैपिंग आउ कोस्टल सर्वेलेंस यूज करूची ना नहीं ओलिव रिडली टर्टल्स को ओलिव रिडली टर्टल्स रो मेजरमेंट पई GIS मैपिंग भी यूज होची GIS मैपिंग सैटेलाइट टैगिंग तो दिन से यूज होची
तो जदि ए सब जिंस यूज होची कोन हे जिवो ए स्टेटमेंट टा ठीक हे जिवो देन सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व रे ड्रोन सपोर्टेड एंटी पोचिंग माने सिमिलीपाल रे जेतबेले ए जो पोचिंग करा होची एनिमल्स को जो एनिमल्स रो मीट पई लेदर पई एनिमल रो स्किन बोन ए सब पई जो एनिमल पोचिंग करा होची ताकू हटेबा पई कोन करा हाइची ड्रोन्स को इंप्लीमेंट करा हाइची इज दिस करेक्ट और नॉट ड्रोन सर्विलेंस एंड मॉडर्न मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज एगुडा केबे नुआ रे इंट्रोड्यूस करा हाइची एंड दिस इज आल्सो करेक्ट ए सिस्टम टा भी ठीक अछि थर्ड सिस्टम कौन कहूँ थर्ड स्टेटमेंट भितरकनिका नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल मैंग्रोव इकोसिस्टम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल मैंग्रोव इकोसिस्टम भितरकनिका को डिक्लेयर कराला सेमिति किछि ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो आई नो दैट इट इज नॉट बीन देयर द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल मैंग्रोव सिस्टम तो एपर्यंत बोधे भी केही हेई नाहंती तेणु करी एही सिस्टम टा कोन हे जिवो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स आंसर कोन हे जिवो 1 and correct. The State Finance Commission report submitted to CM Mohan Charan Maji in January was headed by which chairman? Co-chairman द्वारा headed करा हेतला ओ दिन सटा तमरो State Finance Commission report. एटा केते नंबर फाइनेंस कमिशन हला स्टेट रो which number of finance commission was this? एटा केते नंबर State Finance Commission? Yes. It has sixth finance commission, correct? Sixth finance commission, अब sixth finance commission, sixth state finance commission. The sixth state finance commission कहा द्वारा headed थिला? Who headed this sixth state finance commission? Arun Kumar Panda. Arun Kumar Panda, the chairman of sixth state finance commission, basically handed over the report to CM Mohan Charan Maji, right? तो सेतवे एटा कौन है जो आंसर ए. Next. Consider the following statements regarding Odisha's industrial and investment landscape in January. Industrial investment landscape माने कोन ओडिसा तारो industrial scales आउ तमरो माने जति के भी industrial zones को भी अधिका boost. So Odisha emphasized downstream metal industries as part of its value addition strategy. Downstream metal industries माने जो माने core रे काम करू नाहंती ठीक है metal industries को help करंती बटे माने से माने कहा जाय downstream metal industry. Right, then green hydrogen linked industrial investment proposals received policy level encouragement from the state through green initiatives or green hydrogen linked projects को अधिका initiative मिलुची अधिका support मिलुची बोली से कहूची definitely ए statement टा एबे ठीक अछि काहे कि ना सबु एबे प्रायतः कोन करूचंती प्रायतः pollution free generate करबा को चेष्टा करूचंती तो pollution रु जेहेतु बंचिया को चेष्टा करूचंती कोन हे जिवो सेकंड स्टेटमेंट ता तो गोटे जनरल स्टेटमेंट जनरल जेन्युइन स्टेटमेंट एटा को ठीक कर दबो देन the state announced discontinuation of incentives for MSMEs operating in backward districts. MSMEs पाई backward districts रे जो माने रन करूचंती तांको incentivize करा जाउची discontinue नुहे तांको अधिका incentives दिया होची so that backward districts रे से माने रन करिकि सेठिकार population को बढ़ाई पारिबे माने population को माने improve करि पारिबे तांकर standard of living so that is why एटा हबो नाही right incentives को दिया जाउची अधिकारु अधिकार तो सेट स्टेटमेंट 3 भूल हे जिवो स्टेटमेंट 3 भूल हे गले भी यू हैव टू आइडेंटिफाई कोटा फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि ना नै ओडिसा एम्फसाइज डाउनस्ट्रीम मेटल इंडस्ट्रीज को ओडिसा तार वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट रखा हेची दैट इज आल्सो करेक्ट काहेना डाउनस्ट्रीम मेटल इंडस्ट्रीज जदी स्टील रे हो माने जेमते हमरो आयरन एंड स्टील रे कथा कहउचे तो आयरन एंड स्टील प्लांट्स रे एबे भी डाउनस्ट्रीम मेटल इंडस्ट्रीज ही मैक्सिमम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम फॉर्म रे दोचंती मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज रे कोन होची द एम्प्लॉयमेंट इज लिमिटेड तो सेति पे लो स्किल्ड पर्सन किंबा तमरो बेसिकली जो माने स्किल्ड अधिका नहंती जो माने अल्प बहुत किछि जानते जेमति कि तमरो आईटीआई सेगमेंट रे भी बहुत सारा पिला जनरेट होचंती आईटीआई रे डिप्लोमा रे तो सेमान को पई एम्प्लॉयमेंट सबठो अधिका ई डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज दो एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर कोन हे गेला प्रायतः थर्ड स्टेटमेंट तमरो क्वेश्चंस रे भूल रहउची इजी टू आइडेंटिफाई आल्सो करेक्ट सबुतरे सेमति होवनी with reference to agriculture related developments in Odisha during January 2026 consider the following statement Odisha expanded millet procurement operations under its nutrition oriented agricultural policy framework millet procurement एबे अधिका बढ़ी छिना नाही millet ऊपर प्रमोशन करा चलची millets को एबे गोटे अल्टरनेटिव हिसाब रे भी कंसीडर करा होची आ millet प्रोग्राम भी ओडिशा गवर्नमेंट काहे कि नेशनल गवर्नमेंट भी millet प्रोग्राम को अधिका रो अधिका प्रमोट करूची
so that millet of India's are exported, माने millet of India is exported into the global market. अब इथि भाई GI tag भी millet productions को दिया होची. Climate resilient paddy cultivation techniques were promoted in saline prone coastal districts. Saline prone coastal districts रे पैडी कल्टीवेशन को अधिका प्रमोट करा हला सो दैट माने जो जोटी सलाइन एरिया अछि सेठी भी ताको किछटा माने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखिया को मिल परिबो. देन third is the state prohibited community management seed banks in tribal dominated regions. Seed banks in the sense is community managed seed banks को कोन करा हला प्रोहिबिट करा हला बोली कहूची. which of the following statements are correct? आ भितर को स्टेटमेंट ठीक अछि बोली कहूची. right? Yes, first. एठी भी से सेम जिनस ही करि परिबा हमें बेसिकली कोन हुए ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज जोडा को रिमोट लोकालिटीज रे अछंती सेठी कम्युनिटी बेस्ड सीड बैंक्स को प्रमोट करा जाए. करेक्ट. तो सेठी रिमोट लोकालिटीज रे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स को कम्युनिटी बेस्ड सीड बैंक्स को प्रमोट करा जाए. आ जदी सेठी प्रमोट करा जाए सेठी प्रोहिबिट करिवार चांस ही नहीं. तो सेठी पई गवर्नमेंट कोन करे जाए माने बहुत सही ठिकार लोकल लोकों को नेकी सही ठिकेटे सीड बैंक तैयारी करे आ सही सीड बैंक्स रे कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करा जाए. करेक्ट. तो सेत थर्ड स्टेटमेंट ता भूल हेजिवो. बाकी ओडिशा एक्सपैंडेड मिलेट प्रोक्योरमेंट ए स्टेटमेंट ता ठीक अछि. क्लाइमेट रेजिलेंट पैडी कल्टीवेशन जोठी भी सलाइन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स अछि माने तमरो शोर डिस्ट्रिक्ट्स जोडा को तमरो कोस्टल बेल्ट को लागि चंती सेठी अधिका सैलिनिटी जोगु कल्टीवेशन ऑफ पैडी को इंप्रूव करा होची. 1 and 2 इज करेक्ट. right. Statement 1 and 2 is correct. 3 is भूल. तो again सही segment है गला. जो है easy to identify. वो सार easy question. easy question माने कौन आंसर न जाने की भी third statement eliminate कले आंसर में general से pattern टा follow भी करी परिबो. This is also important. You have to understand the pattern of the examination also. Pattern of the examination भी तुमको बहुत सारा आंसर करके दबो. Then which national conservation authority standing committee meeting in January 2026 reviewed projects within eco-sensitive zones relevant to Odisha's coastal belt. एठी project review कथा पचारुची आ भितरु किए project review करे को standing committee मीटिंग रे प्रोजेक्ट रिव्यू करे जति कि भी कोस्टल बेल्ट को रिलेटेड माने इको सेंसिटिव जोन को रिलेटेड जति कि भी तमरो प्रोजेक्ट अछि तांको किए आ भितरु रिव्यू करथिला बोली क्वेश्चन पचारुची. करेक्ट. गुड. फटाफट एनजीटी कौन करे एनजीटी पासेज दिए प्रोजेक्ट्स मान को जोठी भी इको सेंसिटिव जोन्स अछि किंबा केवल इको सेंसिटिव जोन रे जेकोसी वाइल्ड लाइफ कथा जतले पड़िबो से भितरे एनजीटी तमर कोन दिए पैसेज दिए टू ऑल ऑफ दी प्रोग्राम्स. एनजीटी हबो नाही. इट इज बेसिकली कोन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमिटी कोटा थिला पचारुची. एनजीटी बेसिकली जतले किछि क्लियरेंस दरकार हुए सेतल को एनजीटी क्लियरेंस प्रोवाइड करे एंड दैट इज आल्सो इन दी प्रोजेक्ट्स वेयर देयर इज ए हार्म टू वाइल्ड लाइफ. करेक्ट. तो एनजीटी जनरली समस्त मारिबे का जणा थिला बट एनजीटी हबो नाही. जो इको सेंसिटिव जोन ओडिसा रो एबे प्रोजेक्ट रिव्यू करा हला दैट वाज डन बाय नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमिटी. करेक्ट. नेक्स्ट. In January, major digital infrastructure campaigns saw localized expansion to link rural Odisha's primary health centers with AI-driven multilingual health records. एटा basically India रे भी चलीची पूरा completely हला digital records maintain करा जाउची health digital records को maintain करबा पई. किछि असुविधा नै पूजा. गुड मॉर्निंग नमस्कार. किछि असुविधा नै. We can continue from here. Then ए जो health records करा होची एटा definitely कहां अंडर रे करा होची कहां अंडर रे हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करा होची विच स्कीम अंडर रे को स्कीम अंडर रे डेफिनेटली एटा गोटी ही हबो. डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स तो हबो नाही. करेक्ट. भारत नेट प्रोजेक्ट तो हबो नाही. नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन भी हबोनी. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रे आभा अकाउंट्स तैयारी करा होची. आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा अकाउंट्स बोथ फॉर एडल्ट एंड फॉर चाइल्ड. एडल्ट पई भी तैयारी करा जाउची चाइल्ड पई भी तैयारी करा जाउची. एटा रिसेंटली भी हमें डिस्कस करथिले. तो बेसिकली आभा अकाउंट्स उडा क्रिएट करा होची कहा पई बिकॉज़ वैक्सीनेशन पई वैक्सीनेशन इन द सेंसेस वैक्सीनेशन फॉर मेंटेन करिया पई कहार के वैक्सीनेशन दिया हिची प्रेग्नेंट लेडीज चिल्ड्रन लैक्टेटिंग मदर्स सेमान को पई केते केते वैक्सीन्स दिया है सरलाणी केते वैक्सीन्स बाकी अछि ए सब दिन सबको नोट डाउन करा होची. दिस वाज योर
20 questions from Odisha history. First 20 questions Odisha history thila. Odisha history पढ़े I have been practiced with Odisha history. Odisha current affairs first 20 questions हमें discuss कर ले. Now we will discuss some of the important national current affairs. So national current affairs discuss करिबा and then we will grow forward. Correct? India officially assumed the prestigious chairmanship of which global intergovernmental bloc from January 1 to December 31. January 1 to December 31 पर्यंत ए year पे इंडिया ए ग्रुप्स मान भितर कहार चेयरमैनशिप को अचीव करिछि. यस कहार द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया एबे रिसीव करछि कहार ब्रिक्स रो. एबे किए थिला ब्रिक्स रो चेयरमैनशिप कहा पाखरे थिला ब्राजील पाखरे थिला. ब्राजील पाखरु सक्सीड करिछि किए इंडिया. ब्रिक्स समिट विषय यू डेफिनेटली मस्ट बी नोइंग ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ता सहित सेथिरे एबे नुवा मेंबर्स माने भी ऐड हिचंती. नुवा मेंबर्स इथियोपिया सऊदी अरेबिया एमाने भी ऐड हिचंती. तो द ब्रिक्स मेंबरशिप हैज बीन इंक्रीजिंग आ अधिकारु अधिका कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करिछि. आ तार चेयरमैनशिप 2020 कहा पाखरे अछि इंडिया पाखरे अछि. ता माने ब्रिक्स समिट किमा ब्रिक्स मीटिंग्स जति कि हबो 2026 रे सब इंडिया होस्ट करिवो. करेक्ट. नेक्स्ट fast. What is the official theme designated for the BRICS chairship under India's leadership in 2026? कौन theme थिला? BRICS रो theme कौन? एटा तो at least answer करो. Very good. BRICS रो theme कौन 2026 ପାଇଁ? Theme टा must. जहाँ जानो ना जानो theme जाने बेटा compulsory. नहीं कि? एई वर्ष रो theme कौन अछि? Building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. नुआ जिनस नुआ टेक्नोलॉजी एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करिकी एई थीम टा क्रिएट कराइछि. वेरी गुड. जो माने भी बी आंसर दैछंती सौरव मातारणी गुड. बिल्डिंग फॉर रेजुलेशन इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. करेक्ट. नेक्स्ट द इंडियन नेवी फॉर्मली inducted Anjadeep in January 2026. What class does this Anjadeep belong to? Anjadeep को क्लास को बिलोंग करू? yes definitely टीम टा जहाले भी इंपोर्टेंट रहउछ. अंजदीप को क्लास को बिलोंग करूची? गुड. अंजदीप belongs to the anti submarine warfare shallow water craft. Shallow water craft माने basically anti submarine भी अछि. It is considered that Anjadeep is the largest till date सबुठु बड़ वाटर क्राफ्ट तैयारी करा हैछि. आ सबुठु बड़ इन द सेंस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट. सबुठु बड़ माने वन ऑफ द लार्जेस्ट हला. एटा पूरा एंटायरली प्रोपेल्ड बाय एडवांस वाटर जेट सिस्टम फॉर लिटरल वार जोन. एटा वार जोन पे इंट्रोड्यूस करा हैछि. एडवांस लिटरल वार जोन एटा काम करि परबो. एडवांस प्रोपेलेंट सिस्टम भी लागिछि एंड दिस इज basically an anti submarine vessel. Correct. Anti submarine vessel एटा तेबे एटा इंट्रोड्यूस करा हला. India's first 3D flex aqueous angiography with eye stent was successfully performed at which premier institute? Angiography basically कौन हुए? What is angiography? Angiography is basically your माने scanning of the heart रे basically किछिटा blockage हे जाय जतबेले सेतबेल को एंजियोग्राफी करा जाए. आ ए जो एंजियोग्राफी करा जाए एइथिरे कोन जणा पड़े? हार्ट रो ब्लॉकेजेस जणा पड़े. समटाइम्स जतबेले माने इन द सेंसेस सम ऑफ द हार्ट बीट करिया पय भी बहुत प्रकार रो एनर्जी दरकार हार्ट को. माने इन जनरल हार्ट बीट करिया पय एनर्जी दरकार. जदि ब्लॉकेज थिबो तो हार्ट बीट करि पारेनी एंड दैट इज कॉल्ड एज द एंजाइना पेन. ता परे तमरो एंजाइना परे तमरो हार्ट चोक हवा आरंभ हुए. तो सेइथि पय राइट. नेक्स्ट तो से देखो एम्स रे हला माने ए जो एंजाइमा नुआ एक्वेस एंजियोग्राफी विथ आई स्टेंट सक्सेसफुली कोठी परफॉर्म करा गला. क्लियर. गुड. पिगमर चंडीगढ़ कहउछ? पिगमर चंडीगढ़ कहउछ? नॉट पिगमर चंडीगढ़. एम्स भी नुहे. इट इज बेसिकली
रिसर्च एंड रेफरल आर्मी हॉस्पिटल रे एटा सक्सेसफुली दिल्ली कैंट रे कंडक्ट कराला आर्मी हॉस्पिटल रे ए जिनसटा को सक्सेस हे सला परे एबे एम्स रे इंप्लीमेंटेशन करा हवा पई सेटा को फॉरवर्ड करा हेची करेक्ट which union ministry launched the flagship artificial intelligence initiative called Pancham initiative को किए launch करे to create a two-way digital communication link with elected local representatives संगरे कथा हवा पाई केबा तांग संगरे कांटेक्ट रहिबा पाई एटा को किए डेवलप करेची पंचम कहा द्वारा डेवलप करा हेची who has developed पंचम पंचम के एबे इनिशिएट कला पंचम is basically which union ministry पचारुची launched the flagship अच्छा किए इनिशिएट कला किए बनेला सेला दरकार नै किए लॉन्च कले बोली कहउची पंचम लॉन्च करा हेची मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज काहे की बिकॉज़ एटा लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स मानक सहित ग्रास रूट लेवल्स रे सब दिन सबु केते इंप्लीमेंट करा होची आ केते माने प्रोजेक्ट रही जाउची केते तमर प्रोजेक्ट को आगु को गलाडी ए सर्वे फीडबैक मेकानिज्म सब एथरे दिया हेची तो एटा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा लॉन्च करा हला इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करेक्ट समस्त मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रे अछन इन जनरल हवा कथा जे कोनसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अछि सेटा इन जनरल सेठी हवा कथा बट देन जो मिनिस्ट्री सेठी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री अछि तांको ऊपर भी डिपेंड करे India has officially nominated the living root bridges for UNESCO World Heritage status. In which Indian state are these eco-engineered architectural wonders primarily located? Living root bridges eta kouthi located heiki achi? Where are these located? Correct? तो बेसिकली जो लिविंग रूट ब्रिजेस कोन एटा होची तमरो चेरो रु किछटा ब्रिज तयारी करा जाय राइट रूट्स रु ब्रिज तयारी करा जाय बेसिकली दिस रूट्स आर यूज्ड एज मेकिंग ब्रिज तो सेतरे कोन बाकी आर्टिफिशियल किबा कोनसी केमिकल मटेरियल्स किबा ए जो सीमेंट पेमेंट यूज करा जाय नाही तो ए लिविंग रूट ब्रिजेस टाकू कोठी इंक्लूड करा हेची बेसिकली दिस लिविंग रूट ब्रिजेस आर कॉल्ड एज जिंकिंग करेक्ट जिंकिंग जरी बोली कहा जाय आ को माने एटाकू करंती लिविंग रूट ब्रिजेस ए रूट गुड़ाक टिके इलास्टिकल थाए तो सेति एटा को यार ट्री नाटा भी होची तमर कोन इलास्टिका फिस्कस इलास्टिका ट्री रु ए जिंस रूट्स गुड़ाक तयार करा जाय दिस आर मेनली पॉपुलर इन दी वेयर जैंतिया एंड खासी कम्युनिटीज एबे एरिया कोइ परिबो जैंतिया एंड खासी कम्युनिटीज एबे समस्त एरिया कोइ परिबो ना नाही कोठे हो एटा मेघालय करेक्ट Indian Railways deployed a cutting-edge humanoid robot ASC Arjun to enhance commuter guidance and security at which railway station? ASC Arjun एबे first को railway station रे introduce करा हले basically AI model ASC Arjun first एबे कोठी implement करा हला सिकंदराबाद railway station रे first implement करा हला factual information don't have to know much more about that but एबे AI driven robot system भी सबआडे introduce करा होचंती right good morning Sunita then Secunderabad railway station will be the answer moving on to the next question who was conferred with the Subhash Chandra Bose National Award for Disaster Management 2026 in the individual category एबे किए पाइले तमरो सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड who got the Subhash Chandra Bose National Award in the individual category के पाइले समझ रे लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के कोन पय पाइले फ्लैश फ्लड रेस्क्यूज पय पाइले फ्लैश फ्लड रेस्क्यूज रे तांकर बहुत अधिका मत माने पार्टिशन रहिछि तो फ्लड फ्लड रेस्क्यू एंड कहा पई एंड डिजास्टर मिटिगेशन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करबा पई से ए अवार्ड ता पाइले
आंसर कौन है जीवो लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक शेल्के करेक्ट गुड वेरी गुड Next, in January 2026, President Draupadi Murmu inaugurated Granth Kutir माने definitely जଣା पड़थबो कोन हेतिबो सबु ग्रंथ मानकर गोटे पर्टिकुलर असेंबली हेतिबो. Then at Rashtrapati Bhavan, what does Granth Kutir House mean? Granth Kutir House माने कोन basically? An exhibition of advanced indigenous space rovers, a rich repository of manuscripts and books in 11 classical Indian languages, a dedicated museum celebrating unsung women freedom fighters, a digital gallery displaying India's historical trade maps. ग्रंथ कुटीर माने तो मु डेफिनेटली कहि ही देली. ग्रंथ कुटीर माने जति के भी ग्रंथ थिबो सेमान को गोटे जगह रे कंपाइल करा होतबो एंड सेटा ग्रंथ कुटीर हबो. This will definitely be an easy question. A repository of manuscripts and books in 11 classical Indian languages. Indian languages or the classical languages are again in news. ओडिया को केबे classical language रो nomination मिलिला माने आख्या मिलिला केबे की कहि परिबो? When was Odia given as the designation of classical language? ओडिया केबे मिलला और classical languages रो classification ता सबटो first time पे कोठु start हेतिला. Where did this classical languages रे nomination start हला and first language कोटा थिला और last एबे 2024 रे जोडा हला last सेमानकर बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज को माने 2024 रे पाइले ए दिन सेटा के कहि परिबो फटाफट कमेंट कर चलो हला. फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज कोटा थिला ओडिया को केबे क्लासिकल लैंग्वेज रे आख्या मिलला एंड 2024 रे सब लास्ट को लैंग्वेज को आख्या मिलथिला करेक्ट. कमेंट रे कहि चलो तापरे मु सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आडको आगु को पढुछि. According to agricultural trade databases released in January 2026, India has overtaken China to become the world's largest producer of which essential commodity? आ भितरु India है largest producer of which essential commodity बोली को largest producer India कार ही परथिबो राष्ट्र पाली प्रकृत असमीज बंगाली ओके बंगाली आउ 2024 तेलुगु 2004 Telugu first Tamil first language to be accredited was Tamil correct Telugu नुहे ओडिया को केबे दिया हला 2014 very good सबटो हाईएस्ट वर्ल्ड रो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर समवॉट अराउंड 150 मिलियन टन्स को जे एक्सपोर्ट कला राइस करेक्ट. India has become the largest producer of rice correct good. Next, the Unique Identification Authority of India UIDI launched its official tech driven mascot launch kale. A tech driven mascot ro naata kono definitely question must be asking. In January 2026 to increase public awareness regarding Aadhaar updates, what is the name of this mascot ro naata kono? Aadhaar update ku public awareness program re basically Aadhaar update kon hei paribo correct. Yes good udai correct. Basically eta ku tome udai bhi कहि परिबो एटा तमरो chat assistant right. एटा chat assistant basically तुमको fraud रू बचै परिबो. fraud mechanics or fraud mechanism anti fraud mechanism भी अछि जो थरे की बाय चांस जदी तमरो माने डिटेल्स के लीक करे चाहतो कि डिटेल्स बाहर करे चाहतो सेटा को भी से डिटेक्ट करि परिबो. देन जो मानको जणा नाही कि जो मानको अवेयरनेस सरकार रिगार्डिंग द आधार डिटेल्स कि जहां भी तुमको क्वेश्चन थो जहां भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थो यू कैन आस्क इट एंड से तुमको आंसर दबो. तो दैट इज द आंसर correct. Next, India's first fully functional state funded and state managed high containment biosafety level 4 BSL4 laboratory is being set up in which state? BSL4 laboratory को state रे set up करा होची. What is this BSL4 basically? Yes,
एटा एटा कहा अंडर रे अछि बेसिकली ये जो BSL4 ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करेक्ट ICMR अंडर रे अछि ICMR भुवनेश्वर अछि ना नहीं यस ICMR भुवनेश्वर अछि ये जो BSL4 अछि एटा कोठी इंप्लीमेंट करा हला this BSL4 has been implemented in Gujarat correct महाराष्ट्र रे अछि ना नहीं NIV पुणे NIV is there in Pune सेटा भी गोटे BSL राइट बायोसेफ्टी लेवल 4 बायोसेफ्टी लेवल 4 इंस्टीट्यूशन गोटे NIV अछि पुणे रे सेटा भी जेमिति काम करछि एटा भी सेमिति ही काम करबो एटा कंप्लीटली स्टेट एडमिनिस्ट्रेड BSL4 जोटा एबे गुजरात रे रहिला सेटा एबे कंप्लीटली स्टेट एडमिनिस्ट्रेड करबो कोन पई होछि एटा बेसिकली वायरल डिजीजेस अगेंस्ट रे कोन करा होचंदी रिसर्च करिवे वायरल प्रोग्राम्स को शट डाउन करिवे जेमति के एबे नुवा नुवा वायरस अधिकारु अधिका इंप्लीमेंट करा हो माने अधिकारु अधिका एबे जनरेट होची जानता वायरस इबोला वायरस ए सब वायरस अगेंस्ट रे डिजीज एक्स अगेंस्ट रे से माने बेसिकली तांकर फंक्शनिंग को आगु को बढ़ाइबे सेटा को केमिति अटके पारिबे एटा केमिति कंटेनमेंट करि पारिबे से सब प्रोग्राम्स को माने विजुअलाइज करिबे राइट A new species of non-venomous reed snake, Calamaria mizoraменsis, discovered and catalogued in January 2026, is endemic to which geographic region? Endemic to which geographic region? माने को geographic region रे इटा मिले? Reed snake, Calamaria mizoraменsis, correct? को जगह रे मिले बोली से कहूची जेतेबेले भी किछिटा डेवलपमेंट हुए बायोडायवर्सिटी रे जेतेबेले नुवा स्पीसीज आसंती नुवा डेवलपमेंट हुए ताले आइदर सेटा तांकर लोकालिटी को नै कि नेमिंग होंती और एल्स जो साइंटिस्ट की जो रिसर्चर तांको ऊपर काम करंती से दिन सब नै कि से माने नेमिंग हो तो दिस इज विल बी इजी टू आइडेंटिफाई जब तमे से नेम ऊपर फोकस करबो ताले तमे डेफिनेटली एरिया को भी गेस कर दे पारिबो करेक्ट कोन हेजिबो कैलामारिया मिजोरामेंसिस माने कोन basically found in the subterranean region of Mizoram तो आंसर कोन है जिवो मिजोराम रु ए नुवा स्पीसीज को अवेलेबल करा है नॉन वेनमस माने बेसिकली विष नाही सेही सापर करेक्ट इट इज बेसिकली ए रीड टाइप ऑफ स्नेक The Indian Army declared the year 2026 as the theme year of 2026 को इंडियन आर्मी को थीम रे डेवलप करिछ माने को थीम को डेजिग्नेट करिसंती 2026 रे डेफिनेटली सबटु अधिका कोन चलची एआई चलची तो एआई ऊपर जहां भी देखिबो मारदबो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन इज एन ओल्ड थीम राइट तो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन माने फर्स्ट ऑफ ऑल जेतोल टेक्नोलॉजी आसतला टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करायतला सेतोल को ए थीमटा थिला एबे एआई ड्रिवन अछि सेति पे कोन हे जिवो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी Indian Army has dedicated the 2026 year as networking and data centricity. Theme networking and data centricity. Very good. 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 Pooja is good for answering first. So first Pooja answer kala. Then the world's largest stone sculpted shivling was successfully installed in January. At which place? Largest stone sculpted shivling. को जगह रहिला? एटा लार्जेस्ट स्टोन स्कल्पटेड शिवलिंग भी आउ भी काहे कि इंपोर्टेंट रहउची शिवलिंग ना एटा मोनोलिथिक गोटिए पत्थर मोनोलिथिक बेसिकली मोनोलिथिक दिनसटा राइट यस फटाफट को ए दिनसटा कोठी इंप्लीमेंट कराला बेसिकली द विराट रामायण टेंपल विराट राम टेंपल कोठी अछि एटा मोतिहारी बिहार करेक्ट स्टोन स्कल्पटेड शिवलिंग हाईएस्ट installed in January 2026 was in Bihar. Good. Question Bharan. Okay. OPSC previous year theme also definitely कहबा correct OPSC themes भी कह दबा सब important themes जति भी regarding examination important we'll discuss all of the don't worry the world's largest stone sculpted shivling was successful इटा वाले पर है sorry
Which Indian state topped the large states category in the fourth export preparedness index? Export preparedness index रे एठी किए टॉप करिछि बोली क्वेश्चन पचारुछि. Export preparedness index रे किए टॉप करिछि कहा द्वारा रिपोर्ट रिलीज हला? रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग. Which Indian states has topped the large states category? Large states category कहा को दिया जाए बेसिकली जे अधिकारु अधिका हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट करथुबो, राइट. हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट करथुबो, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जहार बड़ थिबो से ई लार्ज स्टेट्स कैटेगरी रे इंप्लीमेंट करा जाए. तो ई लार्ज स्टेट कैटेगरी कहा को दिया है? Which Indian state topped the large states category? Top the large state category. Definitely जहार कनेक्टिविटी अधिका थिबो, एक्सपोर्ट अधिका थिबो. महाराष्ट्र has the more connectivity and export robust system भी अछि. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सबुठ अधिका महाराष्ट्र रु भी हुए, and that is why सी ही लार्ज स्टेट्स कैटेगरी को इंक्लूड करथिला, माने लार्ज स्टेट कैटेगरी को टॉप करथिला, टॉप कर. What is the project GDP growth rate for India for the upcoming financial year? Project growth rate for GDP as per World Bank's global economic prospects. You have to look after ए दिनसडा. GDP बहुत जण एस्टिमेट दियंती, तो बहुत जण जेतोले GDP एस्टिमेट दियंती, इंडिया रो गवर्नमेंट केते एस्टिमेट देछि, आरबीआई केते एस्टिमेट देछि, वर्ल्ड बैंक केते एस्टिमेट देछि. तो ए सब दिनसर इंडिविजुअल रिपोर्ट थाए और सब आडे अलगा अलगा परसेंटेज रिकॉर्डिंग थाए. प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट केते देछि? वर्ल्ड बैंक एबे केते देछि? वर्ल्ड बैंक एबे 7.2% देछि, करेक्ट. वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रे प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ 7.2% रे अछि. इजी क्वेश्चन थिला, सो सेट पे इट इज फाइन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the high profile vibrant Gujarat regional conference in January. Which country was the premier partner nation for this economic conclave? ए इकोनॉमिक कॉन्क्लेव रे किए पार्टनर रहिला? इंडिया रो. इंडिया भी रिसेंटली कहा संगे अधिका पार्टनरशिप करूची, काठू अधिका इन्वेस्टमेंट आनिया को चेष्टा करूची, कहा सहित इकोनॉमिक टाई इंडिया बिल्ड करने को चेष्टा करूची. If you identify that also it is fine. Yes, very good. Sourav, Venom. Venom is your official name. ठीक अछि. Good morning Monalisa. क्या सहित डेफिनेटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ सहित पार्टनर करथिले. जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग पुशिंग इन्वेस्टमेंट सबु अधिकारु अधिका जेमिति हमरो बायलैटरल टाइज हुए सेमिति बायलैटरल टाइज रे ए पर्टिकुलर नेशन सहित अधिका इकोनॉमिक सेगमेंट को डेवलप करबा पई इंडिया रो इच्छा रहिछि. अरब कंट्रीज मिडिल ईस्ट भितर भी इंडिया निजर इन्फ्लुएंस को बढ़ेबा पई ए पर्टिकुलर सिस्टम को ग्रोथ दो, करेक्ट. The Reserve Bank of India in its monetary policy review update of January benchmark repo rate. Repo rate ता कौन बेसिकली किए कहबो? इंटरेस्टिंग डिस्कशन गुटे कर दवा ना. What is repo rate basically? Who will say that? फटाफट टाइप करो. रेपो रेट ता कौन? परसेंटेज ठीक अछि. रेपो रेट ता कौन फर्स्ट ऑफ ऑल? RBI takes interest for what? Very good. रेपो टा होची कौन? RBI कमर्शियल बैंक्स को दबो, करेक्ट. RBI कमर्शियल बैंक्स को दोची कौन दोची? लोन दोची ता ऊपर इंटरेस्ट होची, करेक्ट. रिवर्स रेपो टा बेसिकली कौन? रिवर्स रेपो टा RBI लोन नोची. एबे रिवर्स रेपो रो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होची, RBI लोन काहे कि नोची? RBI लोन नबो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, माने गुडा कंट्री रो सेंट्रल बैंक काहे कि लोन नोची. My question will be that जे कोटो कंट्री रो सेंट्रल बैंक रो कोन एमती इमरजेंसी पड़ जाउची जे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स टू लोन नेबा को पड़ची ना, सेटा जस्ट फॉर टू पुल आउट द इन्फ्लेशन, माने टू मनी लिक्विडिटी टा को कंट्रोल करबा पई, सेटू पुल आउट करबा पई, मार्केट रो मनी पुल आउट करबा पई एटा गोटा स्टेप ना. सतरे आरबीआई को पैसा दरकार पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोजेक्ट्स को फंड करबा पई, ता पई ना कोन पई आरबीआई काहे की पैसा नै आ एटा को नाटा एटा को लोन कहा जाय. एटा को कोन कहा जाय? व्हाट इज रेपो? बेसिकली रेपो होची रीपर्चेज ऑर्डर, करेक्ट.
रेपर मानेटा होची रिपर्चेस ऑर्डर. माय क्वेश्चन फॉर यू ऑल विल बी ए जिनसटा खाली मॉनिटरी माने मॉनिटरी पॉलिसी को खाली मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल करिया पई थाए ना सतरे सेमति किछि गवर्नमेंट सेंट्रल प्रोजेक्ट्स रुहे जहा पई आरबीआई गवर्नमेंट को भी लोन दिए एंड आरबीआई सब कमर्शियल बैंक्स को पैसा नेकी गवर्नमेंट को लोन दिए एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करे. व्हाट विल बी योर आंसर? करेक्ट. सेति मते कमेंट रे जणा. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हला सर ये आंसर टा को है ना रेपो रेट को एबे केते रखा है 5.25 राइट 5.25% रे रेपो रखा है एबे. Next, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) signed a landmark 270 crore commercial sponsorship deal for the IPL season with which advanced AI platform को AI platform सहित ए साइन टा करा हेतला. BCCI बेसिकली AI platform जदी कहबा दीटा ही पॉपुलर चैट जेमिनाई गोटे चैट जीपीटी गोटे हला नै जेमिनाई गोटे चैट जीपीटी गोटे दीटा ही माने मोस्ट इंपोर्टेंट. माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जोटा सेटा ऑफिशियल सेगमेंट रे अधिकार हुए तो आईटी सेक्टर रे एटा को रहबो. क्लाउड जो एंथ्रोपिक लिखा है क्लाउड एंथ्रोपिक एबे डिस्कशन रे नाही. बीसीसीआई ए दीटा भितर का सहित करथिबो गूगल जेमिनाई सहित करिछि चैट जीपीटी सहित करिनै. गूगल जेमिनाई रो बेसिकली बीसीसीआई सहित टाइप टा अधिका अछि. गुड. हाँ कंट्रोल मनी सप्लाई तो समस्त कहते जे यू आर सेइंग कि बेसिकली आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स टू नोची खाली मनी सप्लाई को कंट्रोल करे पे नोची एंड नॉट टू फंड एनी काइंड्स ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स. ता माने आरबीआई को केबे सेमते पैसा दरकार पड़े नाही आ सेत पे खाली मॉनेटरी सप्लाई पाई से पुल आउट करे पैसा. तो ठीक अछि किछ असुविधा no issues. You will definitely discuss. Ananya ma'am will take your class nebe. We will have the discussions of GS subjects, history, geography सब subject पे होबो. अनन्या मैम तुमको आउट के डिटेल रे एक्सप्लेनेशन करबे जदी गोटिए ही सेगमेंट रे सब प्रकार रा कंट्रोल हे पारि थांता मनी पुल आउट हे पार थांता ताले सीआरआर एसएलआर ए सब दिन सबको इंट्रोड्यूस काहे कर हला एंड व्हाट इज द फाइनल बेसिक मोटिव और द बेसिक प्रिंसिपल जे सब दिन केमिति कंट्रोल करा होची आ सब दिन साइमल्टेनियसली काहे की इंप्लीमेंट करा जाउची. I'll tell definitely, right? चलो एडी आंसर देखले. गूगल जेमिनाई सहित बीसीसीआई टाइप करथिला ए आईपीएल सीजन 2026 पे एंड जेमिनाई इज गुड. करेक्ट. द रिजल्ट्स ऑफ जेमिनाई इज गुड. नो डाउट सेमान समस्त ही एआई सब थरे एरर अधिका अछि बट चैट जीपीटी अपेक्षा जेमिनाई रो एरर टिके कम. राइट. और जेमिनाई टिके स्टैंडर्डाइज्ड हेके अछि. Which public sector manufacturer is spearheading the commercial design and engine integration for India's upcoming indigenously developed hydrogen powered passenger train? Hydrogen powered passenger train पे को कंपनी को बेसिकली ये प्रोजेक्ट टा दिया है जी टेंडर टा दिया है जी जे कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन बनोची माने हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन बनेवा को चेष्टा करूची. राइट. गुड. को का से तो होची who is making that? Very good. ICF Chennai along with RDSO सहित मिसी की ए माने जिनसडा बनाउचंती आ एटा गोटे प्रोटोटाइप हबो. एटा डायरेक्टली एबे इंप्लीमेंट हबनी. विल बी फर्स्ट स्केल प्रोटोटाइप. एटा एबे प्रोटोटाइप हबो तापरे धीरे धीरे एटा इंप्लीमेंट हवा पे चेष्टा करबो. नेट जीरो मोटिव जो नेट जीरो टारगेट अछि इंडिया रो ताको हेल्प करया पे ए जिनसडा पर्टिकुलरली इंप्रूव करा होची. करेक्ट. नेट जीरो मिशन अंडर रे प्रोग्राम टा आछि. Next, which historical leader's birth anniversary was observed on January 28, which with nationwide tribute celebrating his role as the Punjab Kesari? Easy question. Very easy question. Punjab Kesari kaha kuha jautala? Who was called as Punjab Kesari? Punjab Kesari kaha kuha jautala? jahaku Lahore re bahut mada marthile. Lahore re jahaku bahut mada mara heitila. His name is popular for that also. He was injured and he died due to heart condition. पूजा बाल गंगाधर तिलक केमतला पंजाब केसरी बाल गंगाधर तिलक हेले सानिया मानिया रे आंसर दो छो. गुड. टाइटी क्वेश्चन टा इजी देखि कि बहुत कॉन्फिडेंस आसेला फटाफट टिक कले. डू नॉट डू दैट. बी वेरी केयरफुल विथ योर आंसर. बहुत केयरफुली आंसर करिया के चेष्टा करो. गुड. मोनालिसा
आ बाकी समस्ते जो माने भी दे छथि हां यस दैट इज व्हाट आई एम सेइंग बेले बेले सेमति हुए जे क्वेश्चन ता बहुत इजी पड़ गेला तो फटाफट देखि कि टिक कला को बाय चांस देयर माइट बी ए पर्टिकुलर रॉन्ग आंसर हला तो से दिन सेटा को टिके अवॉइड करे को चेष्टा करिवो आंसर कोन गेला एठी लाला लजपत राय करेक्ट लाला लजपत राय वाज नोन एज पंजाब केसरी जनवरी 28 रे तांकर बर्थडे सेलिब्रेट करा Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary, which was officially designated as an eco-sensitive zone by the Union Environment Ministry in January 2026. Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary co state रे अछि basically the question is that easy question अछि eco sensitive zone status ताको दिया है ना नहीं it is given the eco sensitive zone co state रे अछि आ कौन पे पॉपुलर कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली कौन पे पॉपुलर इंडियन वुल्फ पॉपुलेशन इंडियन वुल्फ पॉपुलेशन पाई आ इंडियन वुल्फ को प्रोटेक्शन दबा पाई एटा को बेसिकली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करा हला राइट वेरी गुड तेबे इंडियन वुल्फ पॉपुलेशन को कौन करा है छी कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन कोठी अछि एटा राजस्थान करेक्ट राजस्थान रे कमर्शियल एक्टिविटीज को बेसिकली बैन करा हला कमर्शियल एक्टिविटीज को बैन करा हला एंड इंडियन वुल्फ पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन दिया हला ए पर्टिकुलर एक्टिविटी को सेति पय बंद करा राइट Kaladi, a traditional dairy product whose shelf life extension and export reach are being upscaled under the one district one product initiative belongs to which region ए कलादी डेयरी प्रोडक्ट है को रीजन को बिलोंग करे रीजन ने को रीजन को बिलोंग करे बेसिकली एटा कोन डेयरी प्रोडक्ट माने एटा बेसिकली कोन एटा चीज फॉरेन कंट्रीज रे तमे देखुतबो हला चीज बहुत दिन पय स्टोर भी करा जाय बहुत डेंस चीज भी तैयारी करा जाय आ सेही चीज को से माने एक्सपोर्ट भी करंती सम ऑफ द हाई क्वालिटी चीज बनाती बहुत प्रकार चीज अछि तमरो मोजरेला चीज नेचुरल चीज अछि तो सेमती बहुत प्रकार चीज को एक्सपोर्ट करा जाय सेमती कलादी भी चीज एक्सपोर्ट हुए दिस इज आल्सो ए वेरी हाईली डेंस चीज को जगह एटा पॉपुलैरिटी Udhampur of Jammu and Kashmir. The Kaladi cheese is popular from Udhampur and of Jammu and Kashmir. Correct? Right? आगे बढ़िया. Which state government signed a major pact with the United Arab Emirates at the World Economic Forum WF 2026 रे net zero भारत फ्यूचर सिटी बिल्ड करबा पई यूएई सहित किए साइन करिछि डील which country has signed which state has signed this deal particularly UAE सहित highly digitized city build करा हबो highly digitized city will be built को एरिया पाखरे अब किए साइन कला Hyderabad and Secunderabad project basically Hyderabad and Secunderabad भितरे तमरो digitized project start होची तो सेही digitized project को किए start करिछि Telangana this particular project was signed with UAE by Telangana अब एथिरे भारत फ्यूचर सिटी बिल्ड करा जिवो हैदराबाद पाखरे ए सिटीटा बिल्ड करा हबो हाई डिजिटाइज्ड लो कार्बन एमिशन सिटी दैट इज बेसिकली द प्लान राइट अरे बुझा पड़छ ना नहीं नेक्स्ट The World Economic Forum released the 21st edition of its Global Risks Report. Which of the following was identified as the single highest short-term risk threat globally? Globally, first, सबुठु अधिका threat को थरे identify करिछि in the risk report. Risk report WF रो risk report रे सबुठु अधिका risk को थरे अछि बोली कुआ जाउछि. एबे सबुठु अधिका कोन चालथिला
there is something else also going in the chat box, right? I have been missing some of this. I have not seen some of these things. ठीक है, क्वेश्चन ऊपर फोकस करो. कौन हेतला एबे सबुठु अधिका कौन चलीची? What is running more and more? The more and more segment रे जदी अछि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमिक sanctions उपरे कथा कहूची. एबे दुनिया रे माने वर्ल्ड रे एंटायर वर्ल्ड रे इकोनॉमिक sanctions रो अधिका प्रॉब्लम चलीची. Every country is trying to sanction a lot of segments into other countries. माने पावरफुल कंट्रीज तांकर sanctions को यूटिलाइज करिकी अदर कंट्रीज को अटकाइबा को चेष्टा करूचंती. जेमति कि इंडिया रशिया लिंक को बेसिकली अमेरिका sanctions to रेल अटकाइबा को चेष्टा कला. And these sanctions are posing a greater threat. तो ये sanction tag को heading under रे आसुची. These sanctions come under geo-economic confrontation. Geo-economic confrontation under रे sanctions आसुची. ये sanctions plus ता सहित economic risks ता माने कोन basically तमरो technology blocking आ तमरो tariffs important माने trade tariffs sanctions आउ technology blocks माने technology के का सहित एबे आउ recently share करिया को चाहू नांती सेटा को geo-economic confrontation कहा जाय, right? According to the WF Global Risks Report 2026, which risk saw the most rapid rise in severity over a long-term horizon? Global Risk Report रे आउ गोटे segment ए same दिन सही कहूची हला. ये basically सेतोले पचा that question was this question you don't have to do this question. The question that question was asking सबुटु अधिका report कहार अछि. एठी कहूची सबुटु अधिका growth 10 year horizon भितरे सबुटु अधिका growth किए नेछि. That particular thing is asking same दिन so AI technologies basically set the tariff. एठी कोन AI technologies सबुटु अधिका threat pose करूची. This is not an important question. You can skip that question. गोटिए report रही सब questions discuss हे जाय. ठीक. Next. The powerful eruption of the Chevrolet volcano in January, few volcanic ash plumes nearly 9,000 meters high, disrupting regional aviation. Where is this active volcano located? Powerful eruption of the Chevrolet volcano. Chevrolet volcano kouthi achi? Where is this volcano located? Where is this volcano? I'll give you a hint. It is the largest and most volatile volcano recently. Correct? Largest and most volatile bhi achi. Eta kouthi achi? It is there in Kamchatka Peninsula, Russia. Kamchatka Peninsula, Russia. Correct? There it is located. Yes, Monalisa, definitely. Question skip kariya kahil to kar delo, but there were some of the important discussions going on. Seta ko skip kari parlo ni kehi. Nahi? Could not skip that particular part. Question skip kariya kahil sarthak फटाफट question ta skip kar dele. Question skip kar dele easy. Right? Good. Clear? Next. Oh, Aethera, we have easy questions, na? Aethera, we have given objective questions, right? Aradna, yes, tama answer bhi asuchi, definitely. So, Aethera easy questions achi to samaste bahut answer do. So, in the next current affairs session, we will see how much depth of current affairs you have. Right? Important facts and events, basically, it events pachra hochi, objective question achi, objective style or pattern re achi. So, sethipai easily फटाफट answer पळेई आसी समझ. I definitely know that. Next important session रे देखिबा कौन होची. Which country will एई दिनसटा एथि पई भी करा जाय जे एबे if this segment रे if you start preparation objective question रू start कले कोन होबो कि preparation टा interesting लागे माने basically easy लागे तो mind रे गोटे confidence आसे and interesting भी लागे. Then जेतोले statement wise आसीबो सेतल को आहुरी मजा लागिबो काइना गोटे first phase पळै थिबो जोते तमे basic दिनसटा बुझि जायथिबो, right? Good. Which country will host the opening match of the highly anticipated FIFA World Cup 2026? FIFA World Cup 2026 रो opening match किए hold करिबे. Which country will host the opening match? Yes. Estadio Azteca. Historic Estadio Azteca will hold. Eta कोडी अछि? Good. Therein
Mexico. So Mexico will hold the opening match of FIFA World Cup 2026. Correct? Next. The United Nations has designated which date to be observed globally as the International Day of Clean Energy. International Day of Clean Energy. Yes, definitely. Sunita, statement based question asiba next. इन जनरल एबे जो माने करंट अफेयर्स बहुत अधिका पढिथिबे कि अधिका करंट अफेयर्स जानिथिबे सेमानको ए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लागु नथबो सेतिबाई ही आमे करंट अफेयर्स को दीटा सेगमेंट रखिछे गोटे सेगमेंट जोथरे आमे बेसिक डिस्कशन करबा आ गोटे सेगमेंट जोथरे आमे इंट्रिकेट क्वेश्चंस को डिस्कस करबा राइट गुड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी केबे स्टार्ट हेतिला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी International Day of Clean Energy coincides with Republic Day of India, January 26. Correct? It has started from January 26. Next. Which prominent European political leader and opposition head visited India in mid-January? ये visit करिथिले basically security cooperation को बढ़ाइबा पई who visited India? Basically खाली सेटा security cooperation को नथिला लेबर इंटेंसिव मीटिंग भी थिला लेबर इंटेंसिव मीटिंग माने लेबर्स मानकर जोटा माइग्रेशन होची आ लेबर्स मानकर सिक्योरिटी लेबर्स मान सेठी देखा जिवो एंड लेबर्स मानकर केमि केयर निया जिवो सेही प्रकार डिस्कशन भी स्टार्ट हेतला तो बेसिकली इट वाज सही जो कोची सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन तेरा बेसिकली जो लेबर्स मानक विषय पे डिस्कशन होतला का सहित हेतला एटा का सहित दिस वाज विथ बेसिकली जर्मनी जर्मनी सहित हेतला फ्रेडरिक फ्रेडरिक मर्ज सहित डिस्कशन हेतला ही हैड विजिटेड इंडिया एंड बहुत सारा जिनस ऊपर डिस्कशन चलतला बहुत सारा जिनस माने एटा बेसिकली गोटे हाई लेवल मीटिंग बोले कुआ जाउतला कोन हाई लेवल मीटिंग हला डिस्कशन हला सेटा तो जाना नहीं किंतु लेबर्स मानकर राइट्स ऊपर डिस्कशन चल राइट which city is scheduled to host the winter olympic games from February 6 to 22 2026 winter olympic games जनवरी करंट अफेयर्स तो सेति से लिखिला जे विंटर ओलंपिक गेम्स कोठी हबो बोली लिखा है बट इफ यू डेफिनेटली नो दैट ताले February 6 रे जो विंटर ओलंपिक गेम्स हला कोठी हेतला वेयर वाज इट हेल्ड विंटर ओलंपिक गेम्स कोठी हेतला मिलान कॉर्टिना इटाली राइट तमे कहीं की कॉकरोच व्हाई आर यू राइटिंग अबाउट अच्छा अच्छा but cockroach you are surviving in all types of good for you right interesting next in the prestigious IEEE medals announced for 2026 who received Francis E. Allen medal for inventing captcha and recaptcha system first of all I will definitely want to ask what is this captcha and recaptcha system captcha and recaptcha systems टा कौन ये कहि परिबो yes okay Italy Milan and very good captcha and recaptcha system और ठीक अछि कैप्चा सिस्टम तो सफिशिएंट थिला ना आई एम नॉट अ रोबोट डिक्लेयर करिया पे व्हाट वाज द रीकैप्चा सिस्टम रीकैप्चा सिस्टम कौन व्हाई वाज द रीकैप्चा सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड okay
कैप्चा सिस्टम टा बेसिकली आगुर आसुतला लेटर्स दउतला नंबर्स दउतला जो सिस्टम रे तमे प्राय देखिथिबो गोटे लेटर देइथबो कि नंबर देइथबो गोटे सीक्वेंस देइथबो सेटा होजे कैप्चा सिस्टम रिकैप्चा सिस्टम टा कोन मशीन लर्निंग इन्वेंट हे साला परे मशीन लर्निंग थ्रू रे रिकैप्चा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा हेतला जोथरे कि कैप्चा सिस्टम को गोटे सीरीज ऑफ सिस्टम कर दिया गला ता माने तमे किछटा वेबसाइट रे देखिथिबो किछटा पिक्चर्स क्लिक करिया को कहथबो किबा किछटा लाइट्स एंड लैंप्स क्लिक करिया को कहथबो सेटा कोन तमरो बिहेवियर को ट्रेस करे ता माने कैप्चा एंड रिकैप्चा कोन गोटे पर्टिकुलर सेगमेंट देतो ब्लैंक देतो तमे सेठी फिल अप कलो एटा कैप्चा सिस्टम रिकैप्चा सिस्टम आउट के एडवांस फॉर्म ऑफ सिस्टम जोथरे कि यूजर रो माने बिहेवियर टाको इंड्यूस करा जाय ता माने कोन गोटे इंस्टेंस रे हुए तो प्रोग्रामिंग हेइ थाइ पारे तो सेति पय रोबोट गोटे इंस्टेंस करि पारिबो किंतु जो बिहेवियर टा ट्रेस आउट करा जाय सेथिरे आइडेंटिफाई करा जाय एटा मशीन लर्निंग रो नुवा एडवांस सिस्टम the recaptcha system were basically the machine learning system introduce करा हेतला कैप्चा टा तमरो बेसिक फॉर्मेट जोटा तमे कहलो आई एम नॉट अ रोबोट को आइडेंटिफाई करिया पय ये करथिले बेसिकली लुइस वॉन आन Louis von Ahn won the award correct in the theme of global environmental security updates for 2026 pufferfish poisoning was highlighted due to rising sea temperatures this lethal poisoning is caused by which potent neurotoxin basically कौन neuro give the answer I'll be back in 30 seconds yes सेटा सिस्टम तमे तमे राति दिटार लॉगिन करछो the computer does not know the time तो सेटा that is a bit right image matching good next go yes न्यूरोटॉक्सिन माने बेसिकली तमरो न्यूरल सिस्टम्स को डैमेज करा जाए माने डैमेज करे तो न्यूरल सिस्टम को जोड़ा डैमेज करे सेटा न्यूरोटॉक्सिन को जाए फाउंड इन व्हिच पर्टिकुलर फिश से कोन कहूची पफर फिश पॉइजनिंग ता माने पफर फिश रे अवेलेबल होती हो यस ओके ओके बेसिकली कौन हुए ये जो न्यूरोटॉक्सिन टा तम ब्रेन को सोडियम रो कनेक्टिविटी ब्रेक कर दिए आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट दैट जदि जते बेले भी तुमको गोटे पर्टिकुलरली हेडेक होची दैट हेडेक इज ड्यू टू सोडियम लैक ऑफ सोडियम और सोडियम डेफिशिएंसी पई हुए सोडियम डेफिशिएंसी हले कौन हुए जो ब्लड वेसल्स माइग्रेट करे ब्रेन रे से ब्लड वेसल्स करेक्ट रत्ता तमे आंसर दलनी से ब्लड वेसल्स बेसिकली कौन हुए माने पेन हुए माने ब्लड वेसल्स लिप करे तो सेति पई हेडेक टा बेसिकली हुए तो सोडियम डेफिशिएंसी पई हेडेक हुए if you want to get away from the headache or if you want to get away from the neural damage तो सोडियम रो माने अधिका मात्रा टिके रखिले तो बॉडी रो बैलेंस रहइबो फ्लूइडिटी बैलेंस रहइबो तो सही हिसाब रे एटी न्यूरोटॉक्सिन रो बेसिकली कोन हुए ये सोडियम कट ऑफ करे सोडियम कट ऑफ कर साला परे सेटा नर्व्स डैमेज करे तो नर्व सेल्स डैमेज करे and that particular basically that particular neurotoxin which damages the nerve cell is called as tetrodotoxin correct tetrodotoxin कहा जाए सेटा को क्लियर आर्सेनिक कौन कौन आर्सेनिक आर्सेनिक व्हाई इज आर्सेनिक डेंजरस आर्सेनिक भी डेंजरस ना नहीं आर्सेनिक टा कौन पे डेंजरस यस आर्सेनिक टा कौन पे डेंजरस को देन मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेबा In January 2026, which global luxury brand group retained the title of India's strongest brand for the fourth consecutive year with a stellar AAA plus rating according to brand finance reports? एबे पर्यंत कहा पाखरे ए पर्टिकुलरली लग्जरी ब्रांड पाखरे अछि को लग्जरी ब्रांड पाखरे ए टाइटल टा एबे पर्यंत अछि 4 वर्ष हलानी कंटीन्यूअस सेगमेंट रे लग्जरी ब्रांड माने डेफिनेटली इजी टू आइडेंटिफाई आर्सेनिक I also know arsenic is highly poisonous. କିନ୍ତୁ କାହିଁକି poisonous? What does that do? कौन डैमेज करे? ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି tetrodotoxin କଣ କରେ?
सोडियम डेफिशिएंसी क्रिएट कराए तो सोडियम कट ऑफ करे नर्व सेमती आर्सेनिक कौन कट ऑफ करे व्हाई इज दैट डेंजरस यस गुड एटी बेसिकली तुम जो लग्जरी ब्रांड कथा कहूँ लग्जरी एटी कौटी थी इनफोसिस टेक लग्जरी तो नुह एटा कौन समस्त को जॉब दौर एम्प्लॉयमेंट दौर फैब इंडिया मे बी लग्जरी होता है रिलायंस रिटेल रे लग्जरियस आइटम्स कौन लग्जरी माने इन द बेसिस लोक जो एंजॉय करने जाती तो से सब अधिका कौन रोचे AAA+ रेटिंग ताज होटेल्स एटा ही तुम लग्जरी को अधिका रु अधिका ब्रांड नोटिफाई करिछि तो ताज होटेल्स ही पर्टिकुलर माने अवार्ड टाको 4 वर्ष हलानी निज पाखे रखिछि because it is providing luxurious items to its customers को luxury item दोची तापरे arsenic को कहि दोची हला arsenic रो डैमेज होची तो रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स को डैमेज करे काहे के क्वेश्चन टा पचारली arsenic रो थेरेपी अछि ता माने जदी arsenic अधिका हे गेला तम बॉडी रे सेटा डेथ हेई पारे काहे ना सेटा तमरो RBCs एंड WBCs डैमेज करबो बेसिकली तो arsenic को कोन चेलाशिन थेरेपी गोटे दिया जाय तो चेलाशिन थेरेपी रे बेसिकली arsenic को बाइंड करके बॉडी रो बाहर कर दिया जाय पारे बट टेट्रोडोटॉक्सिन जोटा हम कथा हले इन द लास्ट क्वेश्चन सेटा को बॉडी रु कोनोसी प्रकार रे थेरेपी देकी बाहर करि जीवा माने बाहर करा जाय परिबो नाही एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रोडोटॉक्सिन पई कोनोसी प्रकार रे एंटीडोट नाही जेतेबेले कि आर्सेनिक पई हम पाखरे एंटीडोट अछि आर्सेनिक जदी बॉडी रे कम हला ताहले तुमको नसिया हबो वोमिटिंग हबो जदी अधिक हला ताहले तुमरो डेथ हे जाय परिबो correct that is why the question was asked you must know some of the important segments hala we are basically binded by time so I have to discuss within time so sethi pai jeti information possible I am basically giving that but definitely mon rakho if I bring out some of the less questions mane in 2 hours basically in the next session I'll try to discuss some around 30 questions statement based 30 questions in around 2 hours so 30 questions jadon am discuss kariba I'll give you lot of information regarding jaha bhi science and tech अछि jaha bhi current affairs अछि ता विषय बहुत सारा इनफॉरमेशन सेतबेल को देबी हला आज पई खाली हमें डिस्कस करबा बहुत सारा दिन कोन कोन हेची कोन नाही इवेंट्स डिस्कस करूचे जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन माने बेसिस नेक्स्ट with what is the defining operational feature of a light water reactor not defining operational feature kon achi right light water reactor heavy water reactors and ebe ame nuwa FBR bisare discuss करथले fast breeder reactors bisare discuss करथले a technology whose private sector investment in India accelerated in January 2026 right तार ऑपरेशनल फीचर टा कोन जनवरी कहीं कि एबे तो तमे एफबीआर अचीवमेंट कर सला पर अप्रैल रे तमे आहुरी भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट देखिबो इंडिया रे न्यूक्लियर रिगार्डिंग रे पावर पॉइंट माने न्यूक्लियर रिएक्टर्स रे यस फास्ट यस ओके गुड लाइट वाटर रिएक्टर समस्त जानते हेवी वाटर ड्यूटेरियम कहा जाए गुड वेरी गुड दैट इज आल्सो लाइट वाटर रिएक्टर नॉर्मल पानी ही हेतिबो तो नॉर्मल पानी ही हेतिबो जदी कोन हेतिबो ए पानी टाकू से कोन पे यूज करथबो लाइट वाटर रिएक्टर्स पानी ही यूज करंती कोन पे यूज करंती एटा आगुरु भी मु बहुत थोड़ा डिस्कस करिछि आगुरु भी कहिछि कोन मॉडरेटर्स भलिया भी काम दियंती वाटर हीट को भी ट्रैप करे ता सहित न्यूट्रॉन भी एब्जॉर्ब करे ता माने जो न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हुए इन दी न्यूक्लियर रिएक्टर भीतर जो न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हुए से बॉम्बार्डमेंट रे जो एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स बाहर सेटा को भी वाटर एब्जॉर्ब करे आ सेटा को बॉम्बार्डमेंट रो बाहर करे तो न्यूक्लियर रिएक्शन को बेसिकली कंट्रोल करबा पई ए पर्टिकुलर सिस्टम टा को इंट्रोड्यूस करा जाय एफबीआर रे कोन इंट्रोड्यूस करा हैछि एलडब्ल्यूआर लाइट वाटर एचडब्ल्यूआर हेवी वाटर
FBR रे सोडियम इंट्रोड्यूस कराई सोडियम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए मॉडरेटर वाटर भी अछि एटा बेसिकली वाटर न हले स्टीम जनरेट होबनी कि तमरो टरबाइन चलबनी तो पावर जनरेशन हे परिबनी वाटर भी अछि बट सोडियम एज ए मॉडरेटर एक्ट्स इन FBR तो एतरे कोन हे जबो इट यूजेस हेवी वाटर नाइ it does not use heavy water, it uses ordinary water as both a coolant and a neutron moderator. Definitely correct. तो सही पानी भितर ही बुड़े की रखा जाए पूरा एंटायर सेटअप टाको गुड ग्राफाइट भी दिया जाए अदर मेटल्स भी दिया जाए किछ माने सेमती फिक्सेशन नहीं जे ग्राफाइट ही दिया जाए बॉन्डिंग करा जाए माने तो हमरा इफ यू टॉक अबाउट द टाइटेनियम बॉन्डिंग करा जाए माने कोन जो जो फाइल मटेरियल जोड़ा अछि जोड़ा मटेरियल यूज करा जाए सेटा डायरेक्टली सेमती यूज करा जाए परिबोनी तो सेटा गोटे मेटल अलॉय संगे रखा जाए देन से मेटल अलॉय को डिप करा जाए तो ग्राफाइट एक्ट्स एज अ मॉडरेटर अदर मेटल्स आर आल्सो देयर व्हिच कैन एक्ट एज अ मॉडरेटर पानी भी मॉडरेटर त माने बहुत सारा मॉडरेटर्स यूज पे साइमल्टेनियसली मॉडरेटर रॉड्स भी यूज पे हला we will discuss all of these details whenever we get time regarding अबे तो preliminary basis रे objective segment रे जानि जाओ जेतल मेंस segment को आसीबा सेतल को हमें detailed discussion भी करबा correct detailed discussion माने science and tech paper this time science and tech paper was hard difficult science and tech paper रे अधिकारु अधिका information केगो पड़िबो if there is a question on the scientific advancement or scientific developments then you have to write some of the internal topics internal matters सेतरे भी लेके आगो पड़िबो correct thank you next which country's parliament passed the Comprehensive Coins Act under its National Defense Authorization to monitor and restrict outbound investments in critical foreign tech sectors? Outbound investment को monitor करिबा पई माने निज कंट्री रु बाहर को जीवा को देबे नाही ता पई रेस्ट्रिक्शन कले who would let this thank you for the information 57A United Kingdom, you are saying which country's parliament passed the Comprehensive Coins Act? Comprehensive Coins Act किए पास कला कौन पे पास हला एटा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करबा को देबे नाही बोली कहिले ता माने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिया को देबे नाही कहिले को कंट्री एबे रिसेंटली तार टेक्नोलॉजी बाहर को जीवा को दउनी आ को कंट्री पाखरे ए टेक्नोलॉजी अछि माने बेसिकली जदि हम कथा कहबा क्वांटिंग माने जो क्वांटम कंप्यूटिंग रो टेक्नोलॉजी कहा पाखरे अछि कॉइन्स रो फुल फॉर्म ही से कॉम्प्रिहेंसिव प्रणाम जगन कॉइन्स रो फुल फॉर्म ही से कॉम्प्रिहेंसिव आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट करेक्ट तो कॉइन्स एक्ट रे एटा किए बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स क्वांटम कंप्यूटिंग रो टेक्नोलॉजी ता बाय चांस यूनाइटेड स्टेट्स रे जदी कोनोसी कंपनी अछि आ सीए ए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिया को चाहूची ताहले सेटा यूनाइटेड स्टेट्स रु बाहर को जाई परिबो नाही बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स रु कोन सी कंप्यूटिंग सेक्टर्स एटी फॉरेन कैपिटल देकी एठू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली तार क्वांटम कंप्यूटिंग ऊपर फोकस अछि क्वांटम कंप्यूटिंग को जेमती यूनाइटेड स्टेट्स रु बाहर को न निया जाई पारो एबे ता सहित बहुत जिनस ऐड कला सेतरे एआई टेक्नोलॉजी भी अछि एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी माने सेमीकंडक्टर्स जोड़ा यूज हो सेटा भी यूएस रु बाहर को जेमती न जाओ सेही प्रकार रो रेस्ट्रिक्शंस यूएस लगाइला राइट यूएस को बहुत डर जदि तार टेक्नोलॉजी बाहर को पळेबो ताको आउ के पचारिबे नाही तार कोनोसी प्रकार रो वैल्यू रहबो नाही राइट एमआईटी इज टेक्नोलॉजी thank you ratna all rounder to nuhe we are also appearing the examination and those who are appearing in the examination they have to be the jack of all trades beta bhi barambar kohe you want to qualify the examination of OS ro qualification chahucho jack of all trades master of none konosi din master haba chesta karibo nahi otherwise else master hi hejibo au padeba start karibo you be the jack of all trades examination qualify habo and bahut din so minimum jani ke bhi qualify kari paribo right good chalo MIT's technology review list highlighted generative coding as a top breakthrough what does this technology primarily involve
जनरेटिव कोडिंग माने ऑटोमेटिक जनरेट होतबो डेफिनेटली राइट ऑटोमेटिक जनरेट होतबो सॉफ्टवेयर डिबग भी होतबो तो ये जनरेटिव कोडिंग टा किए डेवलप करथिबो यस क्वांटम एनक्रिप्शन तो बेसिकली गोटे टेक्नोलॉजी रो एनक्रिप्शन तो क्वांटम एनक्रिप्शन तो हबनी टेक्नोलॉजी रो एनक्रिप्शन तापरे क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज करा जाए जेनरेटिव कोडिंग जदी कहबा ताले डेफिनेटली आगुरु जो कोडिंग लिखा जाउतला आगुरु जो कोडिंग सब करा होतला सेटा को बे जेनरेटिव स्टाइल रे पकै चंदी कहा द्वारा एआई मॉडल्स द्वारा जेनरेटिव कोडिंग को जेनरेट करके टाइम फ्रेम टाको कमै दैचंती कोडिंग रो टाइम फ्रेम टाको शॉर्टन कर दैचंती एंड दैट इज व्हाई एआई मॉडल्स यूज करा होचे एटा सॉफ्टवेयर डिबगिंग भी करि दबो कोड जनरेशन भी कर दबो करेक्ट बायोलॉजिकल न्यूरल तो किसी दरकार नहीं एठी एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एथरे भी किसी इंप्लीमेंट हुए नहीं इज दैट क्लियर The Director General of Civil Aviation (DGCA) in India slapped a hefty 22 crore fine on which major airline carrier for the systemic flight disruptions. कहा ऊपर 22 कोटी टंकार फाइन लगेला DGCA. It was there in news also. गोटे पर्टिकुलर फ्लाइट बहुत ही असुविधा रे चली थिला राइट वेरी गुड एटा इजी क्वेश्चन इंडिगो करेक्ट इंडिगो ऊपर बेसिकली यही फाइनटा लागि था which globally recognized historic monthly spiritual and cultural magazine originally launched in 1927 Simon Commission time was highlighted in National Cultural Archives for its contribution to Indian philosophy. Yes. नाइनटीन 27 रु एरिया कहि दउछि गोरखपुर रु बेसिकली एटा पब्लिश हुए आइडेंटिफाई करो 60 ओके जगन जगन इज सेइंग गीता संदेश देन आउ कार कोन आंसर अछि ओके बेसिकली एटा गोरखपुर रो गीता प्रेस ऑफ गोरखपुर this has introduced this generational cultural right yes not sure it is basically kalyan of gita press gorakhpur this particular magazine has been given a particular importance why because eta bahut gote generation helani seta introduce heki chalichi a gote generation pura se maintain kariki chalichi right 1 minute this will be all from my side for today correct I hope current affairs ro bahut sara questions ame discuss kari sariche I hope this will be definitely helpful for you तुमको बहुत सारा हेल्प मिले थिबो बेसिकली ए मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर मैराथन इज गिव यू एन ऑल राउंड कवरेज ऑफ 4 मंथ्स जनवरी मु डिस्कस कर देली एबे देवाशीष सर वेलकम एंड ही विल बी टेकिंग योर फेब्रुअरी मंथ करंट अफेयर्स देन मार्च रो चलिबो देन अप्रैल चलिबो तो ओवरऑल 66 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी मंथ डिस्कस करा होची तो अराउंड 240 टू 250 क्वेश्चंस तुमको मिले जिवो फ्रॉम ईच एंड एवरी मंथ इन द सेकंड सेशन जोडा हम चेष्टा करबा वी विल ट्राई टू ब्रिंग आउट सम ऑफ द लेस क्वेश्चन so that अधिका डेप्थ रे हम एनालाइज करिकि चारटा दिन डिस्कस करि परिबा तो सही हिसाब रे द टारगेट इज टू ब्रिंग आउट 60 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट सेशन 40 क्वेश्चंस इन सेकंड सेशन तो 100 क्वेश्चंस ईच एंड एवरी मंथ रे जति हम डिस्कस करिबा 4 मास रा पाखा पाखी 400 टा करंट अफेयर्स
हमें डिस्कस करि सारथिबा आ चारि छटा क्वेश्चन भितरे मु चेष्टा करबी इन द नेक्स्ट टाइम जोटा स्टेटमेंट बेस्ड करबा सेथरे हमें दि तीनटा पॉइंट को किबा दि तीनटा न्यूज़ को एकाथरे मर्ज करके आनिबा सो दैट चारि छटा क्वेश्चन कला भितरे हम पाखरे कम से कम 600 न्यूज़ पॉइंट्स रह जाइतिबो तो सेही 600 जो न्यूज़ पॉइंट जदी तमे कवर करि पारो छ 4 मंथ्स definitely more than enough रहिबो प्राय तो सब कवर हेकि रहिबो बट देन I will also tell you OPSC is uncertain. It is not UPSC. UPSC रो गोटे थळकूळ अछि UPSC रो गोटे श्योर अछि OPSC रो किछि श्योर नाही कोठु भी क्वेश्चन आसी पारे जेल रो आसी पारे आरआई रो आसी पारे आरआई बेस्ड एक एग्जामिनेशन तो आसी पारे अदर स्टेट पीसी तो आसी पारे कोठु भी क्वेश्चन आसी पारे यू डोंट हैव एनी आईडिया OPSC कोठु क्वेश्चन दोछि सिलेबस रो थाई पारे सिलेबस रो न थाई पारे OPSC रो कोनसी थळकूळ नाही तो तेणु करी जते आमे एडवांस माने जते अधिका कवरेज नै कि चलेबा सेते बेटर OPSC पे अदरवाइज एल्स आई ऑलवेज से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रे तो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस मिलिबो चेष्टा करिवो मैक्सिमम क्वेश्चंस जति कि तम द्वारा कॉन्फिडेंटली होची सेति कि ही करिवो नेगेटिव को डेफिनेटली अवॉइड करिवो करेक्ट नेगेटिव को अवॉइड करिकि तमे मैक्सिमम माने कवरेज नै परिवो 400 टा 400 प्लस सीट्स आर देयर वैकेंसीज देयर कट ऑफ कम जीवो तो एते मरि पड़ी कि 80 90 करिवा दरकार नाही कैन स्किप 20 to 30 questions then it depends okay see last time easy question आस्थिला एथरो हुए तो easy आसीबनी but then it is fine right yes, Jagan, definitely. That is what I'm saying. We will be definitely getting over to all of the segment of the current affairs. हला सबु levels of current affairs को हमें cover करने की चेष्टा करिबा. एबे जेहेतु एटा beginning अछि in this session माने ए जो first session एटा सेति पे ठीक light questions रो हमें start करिबा. But definitely माने मु कहबा चाहते जे कोन it is not important we cover how many questions. It is important केतेटा news हमें cover करछे. We will definitely try to have statement based question जेमति मु कहली next session रे दि तीनटा न्यूज़ को मर्ज करके गोटे क्वेश्चन बिल्ड अप करबा एंड देन वी विल कम फॉरवर्ड राइट किछ असुविधा नै सुनीता इफ यू आर अपीयरिंग इन द नेक्स्ट ईयर आल्सो देन आल्सो इट इज फाइन प्रिपरेशन तमे जते आगुरु स्टार्ट कर दबो सेते बेटर ता माने इफ यू हैव ए पर्टिकुलर मिशन तमर जदी मिशन अछि ओपीएस ओएस हबार किमा जदी पैशन अछि तारो तो जते अर्ली स्टार्ट करबो सेते बेटर तमको सब्जेक्ट को रिवीजन करिया को टाइम मिलेबो सब्जेक्ट ऊपर होल्ड नबा को भी सेति के टाइम मिलेबो माने यू विल डेफिनेटली टेक वन ईयर पखा बाकी वन ईयर तो लागे सब्जेक्ट को होल्ड करिया पे तापरे सेटा को रिवीजन करिया पई आ 6 मंथ रो टाइम लागे तो 1.5 वर्ष 2 वर्ष रो हाराहारी टाइम नै कि चलो संगे जदि से तमे आगुरु प्रिपेयर करछो गुड फॉर यू डेफिनेटली वेरी माने लीडिंग पोजीशन रे थबो फर्स्ट अटेम्प्ट ही नबो एंड से क्वालिफाई भी कर जाई पारो राइट चलो थैंक यू सो मच हला दिस विल ऑल बी फ्रॉम माय साइड देवाशीष सर इज हियर ही विल बी टेकिंग योर नेक्स्ट डिस्कशन एबे तमरो डिस्कशन ता जोटा हबो सेला देवाशीष सर स्टार्ट करिवे फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुअरी करेक्ट I'll hand over and I will be Good morning, everyone. Just wait a minute. Let me open the PDF. Okay. Good morning, Aisa. Good morning, Aisa, to everyone. So, Satya sir, Satya sir, ତମାନଙ୍କର current affair ର ଆମର କଣ କୁହନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମାସର ନଉଥିଲେ କି କୋଉ ମାସର ନଉଥିଲେ?
right now I'll be taking the current affairs of February. Okay, February 2026 I'll be taking. So let's start without any delay. As usual, I'll show you the question. तापर तमने answer करियो, and then we'll discuss on the topic. Okay. ज्ञान तमे क्वेश्चन न सुनो आंसर डी दे देला. Okay. 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 ठीक अछि. चलो let's start. PDF updates ପାଇଁ क्या access है नले मोर Telegram channel join कर दो. ठीक अछि. Then let's start. Chief Minister Mohan Charan Majhi launched the Niti Aayog prepared economic plan for BCPR region to target a $500 billion economy by 2047. What does this BCPPER stand for? Options: Baleswar, Cuttack, Puri, Paradip economic region, Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Paradip economic region, Baripada, Cuttack, Puri, Paradip economic region, Berhampur, Cuttack, Puri, Paradip economic region. So try to answer. Okay, very good. So the answer here is correct. Most of you have given the correct answer. The answer is option B. Okay. It is Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Paradip economic. Now, Niti Aayog has, like the question statement is saying, that Niti Aayog has prepared this economic plan. Niti Aayog कौन करची ना 20टा economic plan बनेची for the entire country. ता भितरु टॉप 5 plans एमती economic region किस्टा बनिबो जो economic region माने कोन जहा भितरे तमनकु different economic activities import export trade manufacturing different zone ऊपर depend करके एडा माने बेसिकली हमकु इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिवारे ए रीजन टाकू हेल्प यूज करियार अछि राइट किछ ओडे प्लान्ड वे रे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिवा नाउ ए जो इकोनॉमिक रीजन टा रहिला भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप वाला रीजन टा इट इज अ पोर्ट लेड डेवलपमेंट टारगेट रही ठीक अछि विल बी अ पोर्ट लेड डेवलपमेंट कोन ना हमर जो पारादीप पोर्ट रहिला सेईडा को बेस करिकी we will be developing the nearby regions कौन करिया ना हमरो भुवनेश्वर को नियाइची एज अ भुवनेश्वर नॉट एक्जेक्टली भुवनेश्वर बट खोर्धा द एंटायर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट को नियाइची एज अ डिस्ट्रिक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ठीक अछि जोटी बहुत सारा फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो ओके कटक को नियाइची कोन पे कटक को नियाइची कॉमर्स पे ट्रेड एक्टिविटीज पुरी को नियाइची हेरिटेज पे ओके सिमिलरली जगत सिंहपुर को मोर पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट पे ठीक अछि तो सेमती डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट कोन कहबा एजेंडा दिया होची अंडर व्हिच द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी डन ओके so answer is B let's move ahead next question under the new rural infrastructure initiative introduced by Odisha budget 2026 to 27 what does the acronym POVAR signify? Poverty alleviation, water supply and roads, power, drinking water and roads, Panchayati Raj infrastructure, waste management and renewable, primary education, women welfare and rural bridges. Answer करो.
Okay, two. Well done. The answer here is option B. Power, drinking water, and roads. It is see the power initiative or power initiative. It is focus kurchi building of rural infrastructure. ठीक है. Water component will be under Jal Jeevan Mission, while the road component will focus on providing connectivity to unconnected tribal areas. ठीक है. बाकी power aspect रे सेमती किसी specific sub scheme create हैनी. Even drinking water रा sub scheme सेमती create हैनी. It is being merged with Jal Jeevan scheme. ठीक है. Now ओडिशा रा आउ गोटे कोन कहबा रूरल डेवलपमेंट स्कीम अछि जोटा कि एबे रिसेंटली द बीजेपी गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट ताकु नै कि किछटा कंट्रोवर्सी भी थिला सेडा होची कोन ना हमरो विकसित गांव विकसित ओडिशा. नाउ टेल मी व्हिच ऑफ माने ए जो स्कीम टा रहिला एटार प्रेडेसेसर रो नाटा कोन थिला. विकसित गांव विकसित ओडिशा एटा होची ओटे रूरल डेवलपमेंट स्कीम जो थरे कि हमें रूरल एरियाज ऊपर फोकस करी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करचे एजुकेशन ऊपर फोकस करचे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़िया चेष्टा करचे से सब जिंस हमें करिया चेष्टा करचे राइट. तो ए स्कीम माने ए जो विकसित गांव विकसित ओडिशा स्कीम टा आगुरु अंडर द बीजेडी गवर्नमेंट इट हैड डिफरेंट नेम्स. डिफरेंट नेम रो नेम गुराक के कहि परियो. आम ओडिशा नवीन ओडिशा ओके दैट इज वन. ता पूर्वर भी आ गोटे ना थिला. एनीवन एल्स no one. Okay. It was known as Ammo Ga Ammo Vikas. तापर हैला आमो ओडिशा नवीन ओडिशा. Then last year we got this. Okay. चलो next question को जीवा. Next question कौन? Consider the following statements regarding Odisha's mining and mineral sector developments reported in February 2026. कौन देची? Mining sector विषय रे question पचारुची. Odisha introduced measures to encourage beneficiation and value addition within the state before mineral export. The state proposed district level mineral sustainability plans in major mining belts. Next, Odisha became the first Indian state to completely prohibit private participation in chromite mining. Which of the statements is or are correct? Choose करेगी को. Channel is one is going with option B. Okay, let's see what the answer should be. बाकी समझते? Try to answer.
कौन जन दी जण आंसर दिथिलो जण निज आंसर टाको भी काटी देलो कौन चलची ओके तो कौन देची क्वेश्चन हमरो माइनिंग सेक्टर रे कौन डेवलपमेंट इज फेब्रुअरी एमती किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं दिस इज समवेयर इन द कौन कहबा ऑब्सक्योर करंट अफेयर पार्ट रे आसीओ जदी आसीओ बट सेटा को तमे निजरा कॉमन सेंस लगे कि भी आंसर कर परिबो ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट 3 देखो ओडिशा became the first Indian state to completely prohibit private sector in chromite mining completely prohibit हेइ थांदा जदी तमनु किछि त नॉलेज थांदा जे हां completely prohibit हेइछि से आइडिया तो तम मानू मिलिनी करंट अफेयर तो पढुथो रेगुलरली तो कंप्लीट प्रोहिबिशन हेइथिले से तळे गोटे बहुत ही बड़ इशू हेतांदा प्राइवेट सेक्टर को जदी माइनिंग रे तमे दबनी पार्टिसिपेशन पई then it will create a big issue right तो सेटा obviously statement 3 is wrong okay तो हमरो ऑप्शन बी और डी कटि गला we have between c and a so statement 1 automatically correct हे जाउची then state proposed district level mineral sustainability plans in major mining belt एटा तुमको टिके गेस करिया को पड़ियो like I said this is somewhat obscure question जोटा कि तमे डिफिकल्ट लेवल रे तमे ए क्वेश्चन ता पाइबो ठीक अछि तो एटा गेस करिकी पॉजिटिव वे रे ही गेस करियो एंड द आंसर हियर इज ऑप्शन ए ओनली ठीक अछि डिस्ट्रिक्ट लेवल एबे हमर सब जिंस रे फोकस होची इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट रेजिलियंस से सब ऊपर फोकस होची तो सेहिति पई सेटा भाबी कि तमे एटार भी स्टेटमेंट 2 को भी ठीक आंसर कर परियो ओके नाउ अंडर द फर्स्ट स्टेटमेंट हमें देखु छ बेनिफिशिएशन ठीक अछि व्हाट डू यू मीन बाय दिस बेनिफिशिएशन रो मीनिंग होची जे कोन हुए ना जेकोसी मिनरल्स रहिला तार गोटे ओर आसे राइट आई थिंक हमें लास्ट क्लास रे डिस्कस करथले बॉक्साइट केमती कन्वर्ट होची एल्युमिनियम राइट बॉक्साइट रे कोन रहउची जदी 6 टन बॉक्साइट हमें यूज करचे सेटारो हमें पाउचे 2 टन एल्युमिना एंड तादरु पाउचे 1 टन एल्युमिनियम 6 टन रु सीधा प्रोडक्ट बाहरची मात्र 1 टन राइट तो ए जो जिंसटा होची यादरे कोन रहला 5 टन रो इम्प्यूरिटीज हमको 1 टन रो से एल्युमिनियम टा दरकार बाकी जहाँ सब रहला सेगुरा काम पई इम्प्यूरिटी तो बेनिफिशिएशन रो माने होची हमें जो कोन करचे ना 6 टन को जो 2 टन को कन्वर्ट करके एल्युमिना बनी देला ना कोन कले हमें सेटा को एनरिच कर देले तो सही प्रोसेस टा होची बेनिफिशिएशन बेसिकली कोन ना तमरो जदी लो ग्रेड मिनरल्स अछि जोथरे की इम्प्यूरिटीज बहुत अधिक अछि ताकू जदी हमें कन्वर्ट करूचे थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस इनटू हाई ग्रेड मिनरल जो बेसिकली गोटे तार मॉडिफाइड फॉर्म को कन्वर्ट करचे एटा होची बेनिफिशिएशन प्रोसेस ठीक अछि गुड मॉर्निंग पायल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन in February 2026 India successfully test fired its intermediate range nuclear weapons capable ballistic missile from integrated test range at Chandipur Odisha which missile was it Agni Prime Agni 3 Agni 5 Pralay 2 right answer Agni 3 Agni 3 Pralay 2 option okay
So the correct answer here is Agni 3. Okay. Now Agni 3 टा को स्कीम अंडर रे हमर डेवलप हेतला और रादर को प्रोग्राम अंडर रे हमर डेवलप हेतला के कोइ परियो. The program was started in 1983 and it was the entire program is credited to Dr. APJ Abdul Kalam. Anyone? What is the name of the program? Under DRDO रे ही सब काम होची. DRDO is creating all the missiles. No one. So this was the integrated guided missile development program. ठीक है. DRDO is the organization or the body which is conducting the experiments and all, but the program's name is this Integrated Guided Missile Development Program, IGMDP. Okay. Now ये जो IGMDP रहिला या अंडर रे we see the Agni series, then we have the Prithvi, then we have Akash, we have Nag, finally we have Trishul. These are the missiles that are developed under the Integrated Guided Missile Development Program. ठीक अछि. Yes, IGMDP. Very good. चलो. Next question को जीवा. देखो तमनकु PDF सहित क्वेश्चन PDF सहित छिटा जिंस जोरा कि आई थिंक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू नीड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पई मु एमते डिफरेंट इमेजेस हमर कोन कोंदी infographics बने दीची. those infographics I will share with you in my telegram channel. सेटा तुम माने डाउनलोड करके रख दबो पढियो. This is all about the Agni series missiles. Agni रा टोटल रे 7 टा वेरिएंट अछि. Agni 1 रु Agni 6 पर्यंत तापरे आ गोटे अछि Agni prime. ठीक अछि. As you can see Agni prime जोटा Agni peak बोली लेखा. ठीक अछि. And all of the Agni missiles they are nuclear capable. ठीक अछि. केबे भी कंफ्यूज हबन जे को अग्नि मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल की कैपेबल न हो सेमति केबे भाबिबनी. So they are all the Agni missiles they are nuclear capable. तापरे कोन ना Agni 1 रु Agni 6 पर्यंत the range धीरे धीरे it is increasing so as to increase the coverage area of India's कोन कहबा nuclear weapons. Okay. चलो next question. The newly introduced Mukhyamantri Kanya Sumangal Yojana in the Odisha budget 2026-27 provides a saving instrument at birth and graduation cash incentive of up to dash 50,000, 75,000, 1 lakh 1,001 rupees, 1 lakh 50,000. Okay, so everyone has already answered option C. Very good. माने क्वेश्चन पढ़िया को गोटे सेकंड भी लागुन तुम मानो. Very nice. चलो the answer here is option C actually correct answer. Now see ये जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना this is not something new. एटा अदर स्टेट मानकरे आगुरु अछि. ओडिसा रे this was introduced in the 2026-27 budget. क्या अंडर रे कोन करा हबो ना at birth before that कोन हबो and this scheme is for EWS families. Okay, in case of EWS family हमें देखुचे कोन ना जदी हमें देखुचे birth of a girl child then कोन हबो ना state government will
create an economic instrument. now mu next points लिखला भितरे तमनंग भितरु किए भी चाहूछ जदी मीनिंग लिख व्हाट डू वी मीन बाय दिस इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल गोटे दीटा भी देदेले मु जानि जे हां तमे बुझुछ इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट माने कोन क्रिएट एन इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रुपीस 20,000 free. Okay, now ए जो 20,000 टा anyone what do we mean by this economic instrument? तो EWS फैमिली को मिलला तो ये जो 20,000 टा रहइबो तो माने इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट रो मीनिंग कहले देन वी कैन मूव फॉरवर्ड जदी कहि परिवनी आई विल जस्ट मूव अहेड तो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स रो एग्जांपल कोन स्टॉक्स बॉन्ड्स हमर जो कोन कोनती म्यूचुअल फंड्स राइट एई सब जिंस हुआ हुए हमर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स जोरा कि तुमको सम अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्रिएट करके देबे ओवर द इयर्स ठीक अछि नाउ ए जो 20,000 टंकार गोटे इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हबो दैट विल आल्सो क्रिएट सम अमाउंट ऑफ डिविडेंड ओवर द इयर्स सी ओडिशा गवर्नमेंट रो एग्जैक्ट डिटेल्स ए स्कीम विषय रे बाहरी स्कीम टा जो फेब्रुआरी मास रे रिलीज हेतला तापरे एमती किछि प्रॉपर डिटेलिंग बाहरनी अबाउट द स्कीम्स ठीक अछि तो सेति पई या विषय रे हमकु बेसी डिटेल जणा नै जेमति कि हमर इन केस ऑफ एमपी सेम स्कीम रे सेमानकर को फेज रे केते मिलियो क्लास 1 रु क्लास 5 भितर केते मिलियो 6 रु 10 भितर केते मिलियो 11 12 रे केते मिलियो ग्रेजुएशन रे केते मिलियो एमदी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस अछि व्हाट इज इट ज्ञान प्रलय 2 कोन प्रलय 2 the answer was agni 3 it is not pralay 2 okay तो ये जो इकोनॉमिक ओडिशा केस है से जिंसटा हमर हेनी तो माने किछि इंफॉर्मेशन नहीं तो हमें बस जानचे जे बर्थ रेट 20,000 डिपॉजिट हबो एज अ इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट एंड सेटा बाय ग्रेजुएशन it will grow up to more than 1 lakh हमर डेप्यूटी सीएम करो गोटे स्पीच आस्तला तादर से कहतले 1 लाख 1 रुपीस बट अदर सोर्सेस हिसाब रे इट इज 1 लाख 1,001 रुपीस तुमको जदी 1 लाख 1 रुपीस आस्थियो ऑप्शन रे सेटा तमे टिक मार परिबो किछि भूल होबनी 1 लाख 1,001 रुपीस भी जदी थिबो देन सेटा भी ठीक हबो किछि असुविधा नै पर जदी दीटा थिबो भगवान को अनै दे के जोडा गोटे मार दो ओपीएस रे टिके प्रकृति अछि सेमति क्वेश्चन पकेबा राइट नाउ with reference to Odisha's health sector initiatives in February 2026 consider the following statements Odisha expanded telemedicine connectivity in remote tribal regions through digital health platforms new initiatives were undertaken to strengthen sickle cell disease screening among tribal populations the state replaced all district hospitals with AI managed healthcare centers during this period. So, options are given. Choose the correct answer. Pranam Puja. Option C. Kyle is going with option C. Anyone else? कौन जणे दी जण ही खाली देखा जाउछ आंसर दबा बाकी समस्त कुआडे गलो
चलो कोई ना. So statement 1, Odisha expanded telemedicine connectivity in remote tribal regions through digital health platforms. So yes, this is correct. New initiatives were undertaken to strengthen sickle cell disease among the tribal population. This also is correct. But even if छाड़ तमे जाननो जे दीटा स्टेटमेंट करेक्ट बोली. ओके छाड़ दियो तमे जाननो. हमें एलिमिनेशन करिया. कौन थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द स्टेट रिप्लेस्ड ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स विथ एआई मैनेज्ड हेल्थ केयर सेंटर्स. एमती तो आम डिस्ट्रिक्ट रे ही नहीं. तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हेले बी आउ डी कटिगला. 1 दीटा करे अछि, सो स्टेटमेंट 1 इज ऑब्वियसली करेक्ट. स्टेटमेंट 2 ए जगह रे तुमको अगेन 50-50 वाला क्वेश्चन आसीगला. तुमको एई टाइप रो क्वेश्चन दबार रीजन होची से जे करंट अफेयर को तमे सब किछि जानि परिबोनी 100%. ठीक अछि. तो से केस रे you might have to take a guess एमिति वे रे. So here also the second statement is correct. कोन हिची ना सिकल सेल डिजीज रो स्क्रीनिंग पई गवर्नमेंट बहुत सारा एफर्ट मारुची. ट्राइबल एरियाज रे सिकल सेल एनी डिजीज पई कोन कोन दी अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाउची. इम्प्रूव्ड स्क्रीनिंग पई बहुत सारा कोन कोन दी हेल्थ सेंटर्स बनीची. तो से सब जिंस स्टेट गवर्नमेंट तरफ रु होची. गुड मॉर्निंग सौमित. मोनालिसा one only, all district रे AI ही नथि. Yes, see, this is what I am saying. You have to use that. Okay, ए 3 टा को एलिमिनेट कर दो. ए आउ सी भितरु तुमको चूज करियार अछि. सेई जगह रे तमरो स्टेटमेंट 1 तो डेफिनेटली करेक्ट हेला. 2 टा को टिके भल से पढियो. इज इट सेइंग समथिंग जेनेरिक? कोन ऑब्वियसली न्यू इनिशिएटिव्स सब बेले बाहरची फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन. आमे देखुचे ट्राइबल पॉपुलेशन रे सिकल सेल डिजीज टा बहुत अधिक रहउची. रेड ब्लड सेल टा गोटे सिकल बलिया शेप नै जाउची, व्हिच इज अ वेरी कोन कहबा सीरियस डिजीज. तादरे ब्लड रिलेटेड बहुत इश्यू. तो से जिंसटा आमे निजर कॉमन सेंस लगे कि जानि परिया जे 2 टा भी ठीक हबार चांसेस अधिक अछि. मे बी तमे 100% श्योरिटी सहित कहि न पारो. there will be a chance माने there will be a possibility तमे 80% तो श्योर थिवो ना. that is more than enough for your 2 marks. ठीक अछि. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. The special drive launched by Odisha Police in February 2026 that successfully rescued and reunited 5451 missing children and women with their families was named Operation Muskan, Operation Anveshan 2, Operation Milap, Operation Mukti. को घर लोकों सहित मिलैतिले तो किछ गोटे ना हेथियो राइट. ऑपरेशन के so very good. So the correct answer here is Operation Anveshan 2. एथरे कोन हेतला ना हमरो जनवरी मासर लास्ट 10 दिन 20 लास्ट 10 दिन नो 21st रु 30th जैन ता भितर हमरो अन्वेषण 2 हेतला. या माने कोन ऑब्वियसली अन्वेषण 1 भी गोटे ही सरची जोटा हमरो आई थिंक अगस्त मासरे हेतला. अगस्त 2025 रे हेतला राइट. तो से जो अन्वेषण 1 थिला ता अंडर रे स्टेट गवर्नमेंट तरफ रु नियरली 2500 पीपल रेस्क्यू करा हितले. तार सक्सेस को देखिकी अन्वेषण 2 वाज लॉन्च्ड एंड अन्वेषण 1 रा एंड रे भी स्टेट गवर्नमेंट तरफ रु पुलिस डिपार्टमेंट तरफ रु गोटे कम्युनिक दिया हितला जे हमें एमती ऑपरेशंस आगु कंटिन्यू करियो. ठीक अछि. तो या धरे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल majority were women and nearly 800 were children. तादरु 700 पाखापाखी थिले गर्ल चाइल्ड and nearly 70 or 80 were male childs or boy childs, right? now ए जो अन्वेषण 2 रहिला तादरे पूरी रे सबुठु अधिक लोक रेस्क्यू कराई जंती.
तापरे फॉलोड बाय कटक ओके तापरे आई थिंक बालेश्वर अछि टॉप 3 आर दिस ता सहित कोन हला यार आउट जिंस अन्वेषण 2 रे नॉट ओनली इनसाइड द स्टेट बट आउटसाइड द स्टेट भी ओडिशा पुलिस बहुत सारा ऑपरेशंस करिछि जोठी की ट्रैक कराइला जे हां मिसिंग पर्सन टा एई स्टेट रे अछि जांकी तो ओडिशा पुलिस रो गोटे टीम जाइछि सेठी से स्टेट को सेठू से मानन को रिकवर करके आनछि तो इट वाज अ नेशनल लेवल ऑपरेशन ठीक अछि स्टेट गवर्नमेंट रो बट नेशनल लेवल रे ऑपरेशन टा चलला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन who was honored with the prestigious Vyasakavi Fakir Mohan Odia Bhasha Samman in February 2026 for outstanding lifetime contribution to Odia literature. Nrsinga Charana Sarangi, Achyutananda Pati, Dr. Nrsinga Charana Ponda, Sarat Kumar Patra. What will be the answer? A is going D, A, Monaka D, A has changed her answer. Okay. So the correct answer here is Singacharana Sarangi. Okay. He got the prestigious literary and cultural award that is the Vyasakavi Fakir Mohan Odia Bhasha Samman. ठीक अछि. Now obviously ଆମର award ର ନାଁ ରୁ ଜାଣି ପାରୁଥିବ is to commemorate the father of modern Odia literature that is Vyasakavi Fakir Mohan. Okay. Different books लिखिथिले तांकर books ର किछटा नाँ कहि परिबो कि से फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बुक होची 6 माण 8 गुंठ राइट ता छडा आउ गोटे दीटा बहिर ना को व्हिच एवर यू नो नो मारो जो फकीर मोहन सेनापति ये एक्चुअली केंझर प्रिंसली स्टेट रो दीवान थिले एंड ही वाज कैप्चर्ड बाय द भुइया लीडर जो माने की रिवोल्ट करथले अगेंस्ट द ब्रिटिश एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट किंग ओके धरणीधर भुइया धरणीधर he captured फकीर मोहन सेनापति ठीक अछि तो सेही पॉइंट रे गोटे इंटरेस्टिंग मत्ती बैकुंठ माटी बैकुंठ ओके देवती मामू क्षमा वेरी गुड पूजा तो आमर धरणीधर भुइया ही कैप्चर्ड फकीर मोहन सेनापति तांको कैप्चर करके से ऑब्वियसली कैप्चर करथले माने कोन ही वाज टेकन हॉस्टेज एंड ए जो धरणीधर भुइया थिले तांकर से ही वाज द लीडर ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द भुइया अपराइजिंग ठीक अछि तो सी रिवोल्ट रे रीजन कोन थला धरणीधरंकर जे तांकर चाकरी पळैथिला एंड ही वाज ड्यूप्ड लाइक मन तांकर सहित पूरा प्रॉपर मूवी स्टाइल रे गोटे स्कीम कर दे कि तांको काढ देथिले चाकरी रु ही वाज वर्किंग अंडर द केंझर किंग ओके बट तांको काढ देले जेतु से रागी गेले ता सहित कोन होतला ना सेमानंगु बेठी खटौथिले सबले सुनिथियो मु कोन तोर बेठिया मु तोर बेठी खटिया को आसी एटा सुनिथियो तम माने होपफुली घरे तो एटलीस्ट सुनिथियो निजे यूज न करू थाई पारो मॉडर्न जुगर सडन छुआ ही थाई पारो बट घरे तमरो माँ की जेजे माँ की बापा जेजे बापा एमानो को कहथिवा सुनुथुओ राइट तो ए जो बेठीर मीनिंग होची कोन पोस्ट लेबर ओके फ्री लेबर जो कहंती बॉन्डेड लेबर तो दिस बॉन्डेड लेबर सेमानंगु करूथले भुइया मानंगु
केउंझर किंग करूले तो दिस वाज द मेन रीजन इमीडिएट ट्रिगर थिला धरणीधर लॉस्ट हिज जॉब ता पूर्वरु यस अनपेड लेबर यस 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 मागेणा ही थिला तो सेही जिनसटा ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଫକୀର ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଜ ଦ ଦିୱାନ ଅଫ କେଉଁଝର ସେଇଟା ଧରଣୀଧରକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଠିକ ଅଛି ତ ହି କ୍ୟାପଚର୍ଡ ଫକୀର ମୋହନ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ ଥିଲେ he considered himself as the son of the queen of Keonjhar. Okay, see the king that was ruling that time, Dhanurjaya Bhanja, he was not the legitimate son. He was an illegitimate son. ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି ଫୁଲ ବିବାହୀ ୱାଇଫ ଫୁଲ ବିବାହୀ ୱାଇଫ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇନଥିବ ବଟ୍ ବେସିକାଲି ଓଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍ସ ର लिव इन सिचुएशन थिला एटा ठीक अछि किंग माने जोडा करथुले कोन ना जणे तांको पसंद आसला सी तांको पसंद करछि सी ताको आनी कि निजे पाखे रख देले विदाउट मैरिज एटा को आवे फुल विवाही वाइफ ठीक अछि तो सेई जो फुल विवाही वाइफ थिले तांको पुओ थिला धनुर्जय ओके तो धनुर्जय वाज नॉट लाइक्ड बाय द मेन किंग जी मेन क्वीन का टाइटल टा कोन थला पट्ट महादेव ओके तो सीए तांको पसंद करू नथले तो सीए भी रिवोल्ट रे सपोर्ट करथले भुया मानन क्वीन महापट्टादी ओके जे चीफ क्वीन थिले तो धरणीधर भुया निजको सेही क्वीन कर पुओ बोली सबुआडे स्प्रेड करथले कथा राइट तो सेही जिंसटा को फकीर मोहन सेनापति जानिथिले सेहीटार से फायदा उठेले कोन कहले ना हमरो ताको कहले जे राजकुमार आपणकर जन्मदिन आसुची आपणक पई पान फान सब मगेबी आपणकू पूरा गोटे आलिशान फीस्ट देबी खाइयाकू आपण टिके मते गोटे लेटर देखियाउ दियंतु मो सांग को कहबी से पान पठेइ दबो आपण मानक पई ता सहित मोर अलगा गोटे काम अछि मोर आखु ये गोटे अछि कोन कोंती जमी गोटे अछि सेठी टिके पानी न मडेले आखु गुराक मरजिबे तो सी से गोटे लेटर एमती लिखते कौन ना सेंड 100 बीटल लीव्स विथ 200 कौन कहते सेटा को गुआ ओके तार इंग्लिश एटा मोर मन पड़े तो 100टा पान आउ 200टा गुआ पठेबो या माने थिला जे 100टा सोल्जर को एनफ एम्युनिशन सहित पठेबो तापरे कौन करथले नॉर्थ रु पानी दबो टू द सुगर केन फील्ड ओके तो नॉर्थ रु तमे ताकू इरिगेट करिया से कहले माने he gave the direction from which they should attack so that से माने स्पॉट हेबेनी ओके तो एमती करी की अरे पढ़िवाटा बेठी नुह पढ़िवाटा ज्ञान कौन करिया वृद्धि करिवा पढ़िवाटा कौन बेठी पानी आनी आउ कहले तमे बड़ भाई बड़ भउणी को कहदो जे मु तोर बेठिया नु हला तो तापरे माडो खाइबो पूरा consider the following statements regarding Odisha's sports ecosystem in February 2026 कौन ना Odisha strengthened partnerships with high performance training in hockey and athletics sports infrastructure development was expanded to aspirational and tribal districts the state announced withdrawal of financial assistance from grassroots sports academy see एटा भी again सेही टाइप रो गोटे क्वेश्चन जोठी कि तमे स्टेटमेंट ता भलो कि पढिले करेक्ट आंसर इजीली दे परिबो ओके हमो क्वेश्चन कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट तो ट्राई टू आंसर ओडिशा गवर्नमेंट रो बहुत सारा अचीवमेंट रहलानी स्पोर्ट्स फील्ड रे राइट हमरो चोपड़ा बाबू जैवलिन थ्रो रे तापरे ता सहित हॉकी एस्पेक्ट रे इंडिया रे ओडिशा रो बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहलानी तो स्टेट गवर्नमेंट तरफ रु बहुत ही अधिक सपोर्ट मिली चलची टू द एथलीट्स राइट तो सेही जिंसटा तम मानू कोन आंसर दबार अछि ओ
तीनटा भूल अछि study with DM option A we are asking okay chalo so the correct answer here is option B only 3 is statement 3 is incorrect 1 out 2 correct अछि obviously odisha has strengthened partnerships with high performance training in hockey and athletics सेटा ही चली माने बहुत लास्ट फ्यू इयर्स अब एटा बहुत ही कोन कहबा जोर शोर रे हमर स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट दबा चली छी sports infrastructure development was expanded to aspirational and tribal districts this also is a generic statement you can देखो तमे जदी exactly जानि ना then तमको एटी गेस करिया को ही पड़िबो right then third statement it is definitely wrong withdrawal of financial assistance for grassroots sports academies एटा तो बिल्कुल भी नुह right so this question is the statement 3 is the incorrect माने option okay चलो correct answer is option B next question Chief Minister Mohan Charan Majhi laid the foundation stone for a 100 crore mega textile park and a 187 crore disaster recovery and data center on the campus of which university Utkal University, Dharanidhar University, Sambalpur University, Fakir Mohon University. Could I have answer? चलो चलो बताओ okay. Only one person is saying giving the answers. Somit Babu, kuade galo? Yeah, is saying Keunjhar, Monalita is going Dharanidhar. Again saying Dodo, Gogo, Payal. बाकी सब कुआडे गले गायत्री study with PM option C no option C is incorrect the correct answer here is option B Dharanidhar University Keunjhar जोटा कि आगुरु केउंझर साइंस कॉलेज नारे जଣା थला it was initially a माने normal college which was affiliated with Utkal University tapare over the period of time it was built established in 1957-50 period over the times autonomous university autonomous college गोटे हला tapare autonomous college ru recently 2022 की 23 रे became a university now ए जो धरणीधर ये होजी सेही धरणीधर निया ओके किछटा जगह रे तम मन देखिया पाइबो धरणीधर नायक ओके सेम जिंस जिंस कोन he his real or rather कोन कहबो original name is Dharanidhar Bhuiya but he was given the title of Naik because he was the Naik of the Bhuiya people सेथि पई धरणीधर नायक भी लेखा हुए नायक माने लीडर ओके नायक मूवी तो देखिथिबो लीडर तो ही हां मु जो कहली जो हमरो भुइयार अपराइजिंग थिला that was in two phases okay phase 2 रा लीडर के थिला हमरो धरणीधर भुइया phase 1 was under रत्ना नायक और रत्ना भुइया ठीक अछि he organized the रत्ना मेली के जो phase 1 टाकू कुआ जाय रत्ना मेली and धरणीधर जोड़ा ये करथला ऑर्गेनाइज करथला दैट इज कॉल्ड एज धरणी मेली ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा consider the following statements regarding the Subhadra Plus outreach initiatives discussed in the Odisha during February 2026 the program aimed at strengthening financial literacy and digital inclusion among women beneficiaries it focused on convergence of self-help groups with livelihood and entrepreneurship schemes the initiative is implemented along with
mission shakti structures at the grassroots level. So correct statement कौन अच्छी, you have to choose the option accordingly. कौन सब ठीक लगुच देखिया 1 2 3 all A. Okay, so the correct answer here will be option D, that is all are correct. For that let me show one अभी मैं provide कर देबी. This is the Subhadra plus scheme. ठीक अछि कोन ना हमर सुभद्रा स्कीम जोडा थला तार एटा गोटे होची इम्प्रूव्ड वर्जन कहि पारो. कोन सुभद्रा स्कीम रे कोन थला 10000 एनुअली मिलिबो, paid in 2 installments of 5000. 2024 रु 2029 जाय थिला and target were the माने वुमन माननकु हेल्प करिया को इन द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हाउस होल्ड ये रे खर्च रे हेल्प करिया को, या फिर हमरो कोन कहबा से मन जदी किछि निजर बिजनेस स्टार्ट करिया चाहउछन सेडा रे भी एटा गोटे हेल्प हे जिवो. तो सेही एम सहित दिस स्कीम वाज स्टार्टेड, राइट. देन जो सुभद्रा प्लस रहिला एटा कोन करछि ना बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट सुभद्रा माने सुभद्रा स्कीम भलिया डिफरेंट अलगा जिंस या डिफरेंट कंपोनेंट्स बाहर करछि टू हेल्प विथ द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, राइट. कोन गोटे होची किशोरी सुभद्रा जोटा कि एडोलेसेंट गर्ल्स मानन पई हिची. सुभद्रा संचय एडा होची सेविंग्स रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स रिलेटेड. सुभद्रा सुरक्षा वुमेन सेफ्टी मानन पई. ओडिया वर्ड रो मीनिंग जदी तमे जानछो यू विल बी एबल टू नो व्हाट दिस डज. सुभद्रा सखी, सखी माने कोन सांग, सांग इज एसोसिएटेड विथ कम्युनिटी, राइट. सुभद्रा मिलिले किछि काम को आसुनी पेयर ड्रेस आनले से सही जाउ. तमे दी पेयर ड्रेस कहीं 10,000 टंका रे आनछो 10 पेयर आनी परिबो, राइट. तो सुभद्रा यात्री एटारे कोन ना ट्रांसपोर्टेशन जोटा कि वुमेन फ्रेंडली रहिबो. देन सुभद्रा संघ एटा होची कोन अगेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप्स से रिलेटेड एटा. कुह सुभद्रा एटा होची कॉल सेंटर और ग्रीवेंस रिड्रेसल पई. सुभद्रा सहयोगी कोन ना वुमेन माननकु as the workers स्कीम रे यूज करा बजे वुमेन विल बी द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक अछि. देन सुभद्रा स्कॉलर्स एटा होची कोन एजुकेशन पई स्कॉलरशिप गोटे बेसिकली. एंड सुयोग्य सुभद्रा दिस इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक अछि. so these are the total components of the subhadra plus scheme जोटा कि obviously गोटे upgrade from the subhadra scheme, right. major features जेमति कहली integrated model, focus on adolescent safety पई, financial inclusion ए सब जिंस हमर main focus रहउची. टोटल 10,000 आसुची ना तो सेटा मन रखिबो. ओके चलो तो ड्रेस कहीं किणुछ, ड्रेस जगह बही किणी दियो, सेटा तो तुमको किसी असुविधा हवा कथा नु, बुक तो रिक्वायरमेंट होतो. चलो कोई ना कोई ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में Subhadra plus is done. Let's go to the next question. Consider the following statements regarding PM Janman implementation in Odisha during February 2026. The scheme targeted particularly vulnerable tribal groups. Odisha accelerated infrastructure delivery in remote tribal habitations under the program. The program was exclusively related to urban housing development. Choose the correct answer. One only, 2 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3.
So କୁହ ଏଇଟା I see 1 and 2. Anyone else? Try to answer, then we'll discuss. ନା ଆଉ କାହାକୁ ଆସୁନି ପାଠଶାଠ ପଢୁନ କେହି ଆଉ ନା ଡର ଲାଗୁଛି ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ କିଏ ବେଜତି କରିଦବ କାହାର ବେଜତି ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସବୁ କ୍ଲାସରେ କହୁଛି ଏଠି ଯେତେ ଭୁଲ କରିବ ଏକ୍ସାମରେ ସେତେ କମ ଭୁଲ କରିବ ଏ study with D going with option 1 3 okay anyone else चलो कौन है हमारा पीएम जनमान स्कीम राइट this is related to development of tribals right with a special focus on pvtgs tribal area re road connectivity educational institution healthcare infrastructure so all kind of infrastructure development by this pm janman scheme was introduced in 2023 right so obviously statement 3 is wrong here so b कटिजिवो d कटिजिवो urban housing development नुह it is focusing on pvtgs it is focusing on all tribal areas but with a special focus on pvtgs odisha accelerated infrastructure एटा भी ठीक ही अछि okay so the answer here is option c बेजती हेले भी इज्जत मिलिबो ऑफिस ऑफिस की गवर्नमेंट खाया को मिल गवर्नमेंट पैसा खाइबो बाबा रे एथिक्स पेपर भल से पढ़ हाँ बाकी ओपनली यू आर एडमिटिंग गवर्नमेंट रो पैसा खाइबो ठीक अछि yes odisha has 30 pvtgs out of 75 all over india very good chalo next question which global financial entity partnered with the government of odisha under the bharat netra initiative to host the ai impact and fintech dialogue in bhubaneswar world bank global financial and technology network singapore asian development bank international monetary fund that is imf which will be the answer here Singapore B. Very good. Very good. So the correct answer here is option B. Now GFTN ओडिशा गवर्नमेंट सहित मिसिकी जो भारत नेत्रा इनिशिएटिव स्टार्ट करछि ता अंडर रे गोटे कोन एस्टैब्लिश हिछि इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब at okay so basically एटा अंडर रे कोन करा होछि यूजिंग एआई टू इंप्रूव द कोन कहबा गवर्नेंस इन द स्टेट सेटा पई हमरो ए जो भारत नेत्रा इनिशिएटिव से स्टार्ट कराई छै देन नेक्स्ट कोन द सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव नेम्ड डालखाई introduced in 2026-27 state budget focuses primarily on enhancing financial aid to Sambalpuri folk dancers, the rehabilitation and livelihood support to eliminate bonded labor, promoting organic cultivation of pulses in western Odisha, sponsoring higher education for tribal girl students. डाल खाई रे राइट नहीं नहीं सैलरी गवर्नमेंट ही तो बना गवर्नमेंट पैसा ना कथा कहली
सबूर 500 टଙ୍କା जदि मो बापा कि काहाकू दियो जल्दी काम हे बोली मु रागी जाए हाँ बट निजको मिलला बेले सेटा खुशी लागिव ना ओके बट गुड गुड तो अरे आराम से कि घरे लिखले चलिबो एनीवन एल्स आंसर प्लीज और आउ कि करंट अफेयर पढ़ू न ओनली पूजा इज स्टडीइंग द करंट अफेयर्स स्टडी विद डीएम ऑप्शंस ए so the correct answer here is option B ठीक अछि to be more like exact हवा जदि हमें सी एटा भी completely कोन कहबा this is a consequence bonded labor जो ये होची the main reason is to stop distress migration एटा को stop करिया को एटा को check करिया को the डालखाई scheme was initiated western ओडिसा रे बहुत सारा distress migration ताकू बंद करिया को डालखाई initiative was introduced by the government of Odisha okay तो ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव रला एथरे कोन हला ना माने जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होची ता रिजल्ट रे बहुत सारा लोक कोन होचंती ना कोन कोंदी दादन खटिया को जाउची कोंदी तो दैट इज समवट सिमिलर टू आवर बेठी राइट दिस इज आल्सो दादन जो कहउचंती दैट इज बॉन्डेड लेबर ओके तो सेही जो बॉन्डेड लेबर इज रिजल्टिंग फ्रॉम दिस डिस्ट्रेस माइग्रेशन तो सेटा को चेक करिया को हमर डालखाई इनिशिएटिव अछि सो दिस स्टेटमेंट हियर विल बी मोर अप्रोप्रिएट ओके पूजा नेम सुनले कि देखि तो भल नै कोन चलछि एठी तम मनकर पाठ ऊपर फोकस करछ ना आ किछि चलछि तम से तळ गोटे करप्शन 5000 टंका हेलो हेलो पढ़ाई पाठ ऊपर फोकस निज भितर झगड़ा नहीं एठी फोकस करो तमरा चैट बॉक्स रे नुह पाठ ओके with reference to the Dhauli Kalinga Mahotsav organized in February 2026 consider the following statements the festival highlighted Odisha's classical dance and martial traditions it symbolically connects the message of peace with historical transformation of Emperor Ashoka after the Kalinga War. The event is conducted by UNESCO with state participation and cultural organization. So, give the correct answer here. Yes, Swashri is very correct. Focus on studies. Baki, ignore everything. Okay. And also refrain from showing your personal prejudice and that is something baseless okay logical ये रे जदि तम माने निज भितरे कोन कोची गोटे डायलॉग रखुच कमेंट सेक्शन रे आई विल सपोर्ट ए क्वेश्चन रो आंसर एडा रहला ए क्वेश्चन रो आंसर एडा हबनी काहे की हबनी कोन हबो दैट इज यू कैन डू एनीथिंग लाइक दैट बट ए सब जिंस छोटो पिला वालिया जिंस अवॉइड करो you are preparing to become a civil servant okay so option A 1 and 2 only okay so the correct answer here is option B all the statements are correct it highlighted Odisha's classical dance kono Odissi martial traditions paiko nacho right jaga akda re amaro सब जो कुश्ती कसरत होची से सब जिंस right all of those are included here.
This is correct. Okay, 1 is correct. 2, it symbolically connects the message of peace with historical transformation of Emperor Ashoka. Right, Dhauli Kalinga Mahotsava. So this uh, Mahotsav is associated with the Ashoka ମାନେ କଳିଙ୍ଗ war जोटा कि धौली पाखरे ही थिला, राइट? तो सेटा सहित एटा को symbolically connect करछि and it was conducted by UNESCO. ठीक अछि, so all the 3 are correct. चलो next question को जिबा. Vedanta Aluminium commissioned Odisha's first all-woman power operations team in February 2026 at which of its facility? Lanjigad facility, Jharsuguda facility, Rayagada facility, Anuggul. The would have answer. See, Subhashri, the aim of this session is कि किसी जन स्टूडेंट थांती नुआन करंट अफेयर विषय रे सेते जानि न थांती, राइट? माने किछटा ऑब्सक्योर करंट अफेयर एमदी थाए जोटा कि तम पाखु को आसी पारेनी. तमे तो बसी की दिन सारा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तापरे एवरी अदर मैगजीन जहा बाउची तमे 10-15 टा पीआईबी, आईडीएसआर जेते जाबतीय सोर्स अछि करंट अफेयर रो बहुत टीचर बहुत सोर्स कहि दोथवे सब सब्जेक्ट पई गोटे दिटा कहि देबे. तो तमे तो बसी 20 टा 25 टा सोर्स छाटी परिवन ना, दैट इज अनरियलिस्टिक. तो सेति पई दिस सेशन इज कंडक्टेड कि तम मानू सब हेल्प हो विद द करंट अफेयर्स. ओके ओके, ऑप्शन बी इन झारसुगुड़ा. ओके, तो सब तो स्मार्ट ही अछ. आंसर इज ऑप्शन बी. एटारे कोन हेची ना हमरो देखो वेदांतर तीटा फैसिलिटी अछि. गोटे होची लांजीगढ़ रे अछि, गोटे होची झारसुगुड़ा रे अछि. लांजीगढ़ रे वी आर गेटिंग एल्युमिना, राइट? बॉक्साइट रो हमें एल्युमिना काढुचे. देखो लास्ट क्लास जदि तमे मोर प्रस्तुति रो करथिबो जोटा हमें मंगलवार करथिले, मु सेठी कहिथिली जे माइन पाखेरे किना हमें गोटे बसेइबा एल्युमिना फैक्ट्री. सेठू आमे कोन करबा बॉक्साइट रो एल्युमिना को कन्वर्ट करबा, 6 टन रु 2 टन को कन्वर्ट करबा. तापरे कोन करबा 2 टन टा को माने एल्युमिना टा एल्युमिनियम को कोठी कन्वर्ट होबो जो जगह रे भलो से इलेक्ट्रिसिटी मिली परबा हमको. तो से इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट रहला दैट इज एट झारसुगुड़ा, राइट? झारसुगुड़ा रे भी जो प्लांट टा अछि एमति न जे पावर प्लांट गोटे अछि सेठी ता पखरु हमें नहीं आछन. नो, दैट पावर जो हमरो वेदांतर जो प्लांट रहला इट हैज एटा कोन करछि एल्युमिनियम प्लांट. एटा एल्युमिनियम बनउछि, एल्युमिना रु एल्युमिनियम बनउछि. एंड एठी गोटे कोन अछि ना कैप्टिव पावर प्लांट. मते कि कहि परियो ए कैप्टिव पावर प्लांट रो मीनिंग कोन? कैप्टिव पावर प्लांट रो मीनिंग कोन कि कहि परियो? मु बाकी सब कहया भितरे एटार मीनिंग जणे चैट बॉक्स रे लिखि कि पठाओ. ठीक अछि? हां, ए जो आउ हां हमें फर्स्ट डिस्कस करले झारसुगुड़ा, देन लांजीगढ़ रे गोटे अछि. हां, एठी कोन हेतला ना, एठी किछि मास आगुरु ऑल वुमेन बीसीएस टीम बनितला. देखो ऑल वुमेन बीसीएस टीम, एठी ऑल वुमेन पावर ऑपरेशंस टीम. ठीक अछि, दीटा को अलगा अलगा जिंस. बीसीएस टीम कोन ना डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम. बेसिकली जो डिजिटल कमांड सेंटर रहला जो गोटे मूवीज माने देखथिबो जे से माने बसथिबो एमती सब रेड ग्रीन येलो बटन सब लागिथिबो, गेजेस वगैरह लागिथिबो, मीटर वगैरह लागिथिबो टू मॉनिटर ऑल द ऑपरेशंस फ्रॉम अ कंट्रोल रूम. तो सेही कंट्रोल रूम टा ऑल वुमेन टीम बनथला फर्स्ट इन लांजीगढ़. ठीक अछि? तापरे झारसुगुड़ा रे हमें देखले जे ऑल वुमेन पावर ऑपरेशंस टीम. हां, केही कैप्टिव पावर प्लांट रो मीनिंग कहि परनो. तो कैप्टिव पावर प्लांट रो मीनिंग होची जे गोटे पावर प्लांट बनला. पावर प्लांट माने कोन? सेठू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हबो. एंड ए जो पावर प्लांट ता बनिला इट इज ओनली एसोसिएटेड विथ वन कोन कहबा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और एनी काइंड ऑफ अदर प्लांट.
जेमती कि हमर ए जो एल्युमिनियम बनुची एठी झारसुगुड़ा रे this Vedanta plant has its own power plant जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होची that is only going into this power plant ग्रिड को सप्लाई होनी तो कौन है एटा को से कैप्टिव करी की रखी छी that is why it is called as captive power plant माने सेही ये रे मन रख परियो ठीक अछि रायगड़ा कोन पई भूल हो रायगड़ा रे हमर माइंस अछि किछि इंडस्ट्री नै अनुगुल रे अच्छी एल्युमिनियम इंडस्ट्री बट इट इज फ्रॉम नाल्को देन जिंदल से सब अच्छी नॉट वेदांता ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा with reference to Odisha's implementation of the aspirational blocks program during February 2026 consider the following statements. The program focused on improving governance indicators in relatively underdeveloped blocks. Health, education and agriculture were among the targeted sectors. The initiative excluded tribal dominated regions from performance monitoring mechanisms. So, choose the correct options. Chalo, right answer. $17 all. Okay, anyone else? Okay, so the correct answer here is option C, 1 and 2 only. Okay, excluded tribal dominated region. You think this is correct? Aspirational blocks program. Maybe तमे एटा विषय रे सुननो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विषय रे सुनिथिबो तार फोकस कोन ना जो सब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट रहि गला सेमानंकु सपोर्ट प्रोवाइड करबा सो दैट दे कैन इंप्रूव द सेम गोस फॉर दिस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एटा से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऊपर बेस करी की बनितला ओके जोटा रे की हमें फोकस करूचे इंप्रूविंग गवर्नेंस इंडिकेटर्स in relatively underdeveloped blocks. Now, most under, not all, but most underdeveloped areas are, or rather, most tribal areas are underdeveloped areas. So, tribal dominated region को हमें यदि exclude कर दवा, how will we developing those underdeveloped blocks? Right? Yes, excluded हबन. Statement बोलो से पढ़ो. So, option C is the correct answer. Okay. चलो next question को जीवा. Consider the following statements regarding National Deworming Day implementation in Odisha during February 2026. The campaign targeted school-aged children and adolescents. Health and Education departments coordinated for outreach activities. Answer को कौन हबो statement दीटा करो sorry state question नो answer कौन हबो which one is correct so D with DM going with option A. Okay, anyone else? मझिरे तम कौन माने each 5 मिनिट गोटे पुश दरकार जे हाँ एटार आंसर सब क्वेश्चन रे पार्टिसिपेट कर न कले तुमरो एग्जाम रे भलो होबनी किंतु गोटे each 5 मिनिट गोटे पुश दरकार की okay 18 okay the consensus is
ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट. यस बोथ आर करेक्ट. नाउ ए जो नेशनल डी वार्मिंग डे एटा होची वर्ष को दिथर हुए बाइएनियल और बाइएनुअल. ओके केबे केबे फेब्रुआरी 10 एंड अगस्त 10. ओके on these 2 days we observe the national deworming day. एटारे कौन हुए ना parasitic worms जो माने आम पेट भितर रहउछंती intestine रे सेमान सेही रिलेटेड awareness सेही रिलेटेड ट्रीटमेंट पई this national deworming day is conducted. ओके 1 ରୁ 19 ओल्ड को पई is children and adolescents. Yes, that is the meaning. Okay, चलो next question. Chief Minister Mohan Charan Maji announced that the Hindi feature film Godan will be made tax-free across Odisha alongside the creation of 2 research centers named Krishi Unnati Kendra, Go Anusandhan Kendra, Mission Millet Innovation Cells, Kalinga Matru Mitra. कौन हबो आंसर को A A. So the correct answer here is Go Anusandhan Kendra. Okay. So basically कौन ना ये जो गोदान मूवी दिस इज रिलेटेड विथ कैटल कंजर्वेशन. ठीक अछि तांकर जो पंचगव्य रहउची ता ऊपर फोकस कराई छी. कैटल मानकर कल्चरल सिग्निफिकेंस कोन रहउची, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कोन रहउची, से सब जिंस बेसिकली कैटल गोमाता आमे जो कहूचे सेही कांसेप्ट टाकू ही प्रमोट कराई छी ए मूवी रे. तो ता सहित this creation of 2 research centers named Go Anusandhan Kendra. माने कौन Go means cattle, Anusandhan means research, Kendra center. तो cattle research center एठी कौन होची ना indigenous breed उपरे रिसर्च कराउची केमिति सेमानंकु माने कौन कहबा तांगर प्रोडक्टिविटी बढ़े हबो, केमिति हेल्थ उपरे फोकस करि हबो, ऑल द माने पूरा होलिस्टिक कौन कहबा रिसर्च करा हबो फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स. ठीक अछि. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. कान्हूचरण लेंका who passed away in February 2026 was a veteran politician from Odisha who previously served as Governor of Bihar, Union Minister of State for Railways and Agriculture, Speaker of Odisha Legislative Assembly, Chief Justice of Odisha High Court. Try to answer. Okay, 21 is going. So the correct answer here is option B, Union Minister of State and State for Railways and Agriculture. Now it is the Minister of State, Union Minister of State.
जानथियो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राइट, से सब डेप्यूटी मिनिस्टर, से सब जिंस जानथियो पॉलिटी रे सर बहुत भल से बुझेथिबे, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। एबे कोन कान्हूचरण लेंका, ही वाज अ कोन कहबा इंपोर्टेंट फिगर जे कि जने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थिले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। तो इंदिरा एरा एंड राजीव एरा रो ये जने आईएनसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थिले जे कि बहुत सारा इंपोर्टेंट पोजीशंस होल्ड करले, अमंग व्हिच वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे एंड एग्रीकल्चर भी थिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। The flagship AI Impact Summit 2026, marking the first ever global AI summit of this scale, hosted in a global South nation, commenced at which venue? Yashobhumi Dwarka, Bharat Mandap New Delhi, Hitex Hyderabad, Geo World Convention Center Mumbai. What will be the answer? Yes, he was a Rajya Sabha MP. One. So the correct answer here is option B. New Delhi रे इतला AI Impact Summit. Now this AI Impact Summit basically गोटे AI summit both for the few years it has been going on. 2023 रे गोटे इतला, 2024 रे गोटे इतला, 25 रे गोटे इतला, 26 रे गोटे इतला. ओके, 2023 रे हमरो यूनाइटेड किंगडम रे इतला, 2024 रे आई थिंक साउथ कोरिया रे इतला, 2025 रे इट वाज कंडक्टेड इन पेरिस, तापर 2026 रे हमरो इंडिया रे हिची, राइट। तो इंडिया केस रे से जो एआई समिट रहला सेटा को एआई इंपैक्ट समिट बोली कहउछ। कोडारे एआई सेफ्टी समिट थिला, कोडारे एआई एक्शन समिट थिला, राइट। तो एमते डिफरेंट डिफरेंट नेम। इंडिया केस रे जो एआई समिट ता हितला सेटा होची एआई इंपैक्ट समिट एंड इट इज द फर्स्ट टाइम दैट की गोटे ग्लोबल साउथ नेशन, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ कोन, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ तमे एटा इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमी एस्पेक्ट रे सुनतो। ग्लोबल नॉर्थ कोन गोटे कांसेप्ट जे जतक नॉर्दर्न कंट्रीज अछंती दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, जतक सदर्न कंट्रीज अछंती से माने होचंती अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन। तो सही कांसेप्ट हिसाब रे ग्लोबल साउथ रे जो माने अछंती जेमति कि इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, मेक्सिको, अफ्रीकन कंट्रीज, ए सब जो आछंती दे आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। से जो ग्लोबल साउथ नेशंस रहले तांका भितरे इंडिया इज द फर्स्ट वन टू होस्ट सच अ बिग एआई इवेंट। नाउ इंडिया बीइंग इंडिया, हमरो फोकस नथला जे एआई भलो एआई खराब, हमहु से सब दरकार नै। हमरो एम होची एआई भलो करिवो, एआई समस्तिंगर भलो करिवो। ओके, तो सेही फोकस रे ए जो एआई रो इंपैक्ट कोन रहबो, हमरो फोकस ला सोशल इंपैक्ट ता केते भलो हबो, सोसाइटी ऊपर इंपैक्ट यार केते भलो पड़िवो सेटा ऊपर फोकस करिया। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, एआई यूज करके हमें कौन करवा ना इकोनॉमिक ग्रोथ करवा, राइट। से सब जिनस ऊपर फोकस थिला एआई इंपैक्ट समिट रो, राइट। नाउ इट हैड थ्री कोर पिलर्स जोटा कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन रे देखिबा। तो एबे सेटा मु न कहि के रह जाउची। It जो देछि, what were the three core thematic pillars or chakras? This is not actually chakras, this is sutras. Okay, हमरो 17 चक्र अछि, 3टा सूत्र अछि। Okay, designated for the India AI Impact Summit कोन innovation integration infrastructure, people planet progress, security sovereignty sustainability, automation access affordability. So what will be the answer here? think क्वेश्चन पढ़िया पूर्व आंसर। ओके, 16 बाकी केही
So this is the correct answer. Okay, now ये जो people planet progress कौन लोक मानकर फाइनेंशियल इंक्लूजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल एम्पावरमेंट से सब ऊपर फोकस करा प्लानेट केस रे कौन ना हमको क्लाइमेट रेजिलियंस बनैबार अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करियार अछि ग्लोबल वार्मिंग को कम करियार अछि पोल्यूशन को कम करियार अछि से सब फोकस प्रोग्रेस रे कौन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिवो बट समस्त को नहीं की इक्वालिटी को प्रमोट करिवो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करिवो से सब जिंस ऊपर फोकस रहला हां टीम कौन ए जो रादर मोटो कौन थिला ए जो एआई इंपैक्ट समिट रो सर्वजन दाय सर्वजन सुखाय तो समस्तिंगर भलो हबो समस्त खुश रे रहबो ओके दैट इज द थीम ऑफ और रादर द मोटो ऑफ दिस एआई इंपैक्ट समिट हेल्ड बाय इंडिया या पर कौन हितला ना ए जो एआई इंपैक्ट समिट हितला तादरे गोटे डिक्लेरेशन बाहरची जोटा की दिल्ली डिक्लेरेशन बोली कुआउची ओके so this is something you have to read ता सहित आ गोटे बाहर थिला कौन सेटा को इनिशिएटिव और आउटकम थिला तार ना होची मानव ओके was given by our prime minister मानव विजन तो तमरो काम होची ए दिटा के जिंस को तमे पढिबो ओके we have limited time only 22 टा क्वेश्चन हिच हम बकरे मात्र आधा घंटा टाइम बाकी अछि so we have to move ahead at a faster pace. Next, Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2026-27 in Parliament. Which of the following schemes was announced to modernize backward urban centers via competition? PM Rahat Scheme, 1 lakh crore Urban Challenge Fund, Startup India Fund, India Infrastructure Bond Matrix. कौन A has guessed B, study with DM. Okay. So the answer here is option B. गोटे 1 लाख crore रो अर्बन चैलेंज फंड क्रिएट होइछि जोटा की ऑब्वियसली अर्बन सेंटर को मॉडिफाई करिया को वाया कंपटीशन तो चैलेंज अर्बन एरिया एमितरे भी तमे टिके माने कोन कहबा लॉजिक लगे की भी करि परथान तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन India signed the landmark Pax Silica Declaration in February 2026 at the AI Impact Summit. Which country is India's bilateral partner in this declaration? Whoa. PM Rahat's scheme road accident. चलो आंसर को was USA. Okay. So yes,
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बाकी गोटे पिला कहीं आंसर करछि एते जण अछ तमनर कोन हाथ रे जंक लागि जाईछि ट्राई टू आंसर ओके so pack silica declaration it is an global initiative by the United States Americas USA's State Department okay USA रो होम मिनिस्ट्री लीड करूची ये जो पैक सिलिका डिक्लेरेशन को under this the aim is to build a resilient semiconductor AI and other electronic related supply chain critical minerals वगैरह जो रहिला तापर हमरो रेयर अर्थ मिनरल्स रहिला से सब जिंसर गोटे स्ट्रांग सप्लाई चेन बिल्ड करियार अछि जोटा कि रेजिलिएंट रहबो व्हाई बिकॉज दिस वाज ट्रिगर्ड बाय यूएस चाइना झगड़ा ठीक अछि तो इंडिया को इनिशियली माने मेंबर करनथले बट बिना इंडिया रे एमिति सब ग्लोबल जिंस चली पारिबनी राइट इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल इन द ग्लोबल सिनेरियो तो सेति पई बाध्य है कि लास्ट को इंडिया को भी से माने पुरेथले या भितर ओके which Indian public personality was officially appointed as the UN Global Road Safety Champion in February 2026 to promote global vehicular protection frameworks. Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, Avinav Bindra, Nitin Gadkari. Which will be the answer? I think तमनकु सत्य सार तो कहि कि गले बट अगेन लेट मी रिमाइंड यू आज क्वेश्चन सब एमती सिंगल लाइन क्वेश्चन रहबो बिकॉज सी हमें जदी हमें सिविल सर्विस पे ही प्रिपेयर करछु बट इफ इट वाज यूपीएससी प्रिपरेशन देन हमें पूरा इन डेप्थ जाएंगे प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड इवन 4-5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करतांते एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस वुड हैव बीन लाइक दैट बट ओपीएससी रे कोन रोची ओपीएससी रे बोथ रो मिक्सचर रोची स्टेटमेंट बेस्ड रो मिक्सचर रोची एंड वन लाइनर भी रोची तो आज रो फोकस होची वन लाइनर टाइप रो क्वेश्चन के करबो नेक्स्ट क्लास रे विल फोकस ऑन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ओके सो हियर द करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर याद रे एक्स्ट्रा किछि कहयार नै मन रखियो खाली घोषि दबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन under the existing reservation framework highlighted in central administrative reviews what is the mandated percentage of quota allocation for the economically weaker section in central government employment 15 7.5 27 10 एटा जदी भूल करियो देन आ कोन ही कहबी पाठ साठ छाड़ देकी घर को पळा okay so 10% is the correct answer मोरा 103rd constitutional amendment act under रे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को आर्टिकल को अमेंड करके आर्टिकल 15 एंड 16 ता भितर कोन हेतला आर्टिकल 15 रो क्लॉज 6 एंड 16 रो 6 ए दिटा को सेट हेतला ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा The Ministry of Electronics and Information Technology launched a localized voice-based AI framework on the Vasini platform named Voicera, Vani AI, Swaranet, Indic Voice. 27% OBC. So, ये जो 10% EWS टा आसला to give reservation to people outside the
SC, ST and SCBC reservations who are economically disadvantaged. तो सेमानंगु सपोर्ट करिया पे the 10% EWS reservation asla economically weaker section. Okay, so here the correct answer is voicera. एटा होची गोटे AI जोटा कि हमर कोन करची end to end voice based कोन कोनती open source AI. Okay, so सेटा भासिनी प्लेटफॉर्म रे इंट्रोड्यूस तापर नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा. The Ministry of Cooperatives hosted the National Conclave Manthan in February 2026. The primary focus of this conclave was digitalization of PSEs, setting up district level dairy export clusters, amending voting patterns in multi-state cooperative banks, expanding organic farming credits for tribal communities. Answer ko? So the correct answer is digitalization of primary agricultural credit societies. कौन ना grassroots level कौन कहवा short term credit institution. Okay, primary agricultural credit societies. Next question बुझिबा. DRDO successfully carried out the flight demonstration of a critical system intended to decelerate the crew module during the upcoming Gaganyaan mission. What is this technology called? Solid fuel ducted ramjet, frog parachute, air breathing scramjet, inflatable aerodynamic decelerator. SFDR, solid fuel ducted ramjet. Okay, let's see what the answer here is. The answer is frog parachute. Movie manakare देखिबो सेमाने किछ गोटे ड्रॉप करथुवे एमति कंटेनर गोटे थिबो तादरे म लागिथिबो एमति गोटे पैराशूट लागिथिबो इटा पैराशूट लागिथिबो तो सेटा कोन करछि तार डिसेंट टाकू स्लो करूछि एंड इट आल्सो हेल्प स्टेबलाइज द क्रू मॉड्यूल जोटा कि हमर गगनयान मिशन रे रहइबो. दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉग पैराशूट. ठीक अछि तो ए पैराशूट ता ही यूज हो. ओके, दैट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The NHAI, the National Highways Authorities of India, announced a unique ecological initiative to develop bee corridors along national highways. What is its main objective? To produce commercial highway honey brands, to protect natural pollinators and boost regional agricultural biodiversity, to prevent cattle from straying onto high-speed lanes, to test biological warning signals for cross-border transits. What will be the answer? Option B. Okay, that is the correct answer. Natural pollinators and obviously B, they are pollinators. फुलर फुल उड़ी जाएंगी ताकू पॉलिनेट करिवे. तो दे आर नेचुरल पॉलिनेटर्स. जदि हमें बेसिकली बी कॉरिडोर कोन हमें जो एनएच ऊपर जाउचे देखुचे कोन बहुत सारा गछ लागि कि रहउची बट से गछ गोरा का यूजुअली एमती डेकोरेटिव गछ जोटारे कि फ्लावर वगैरह फ्रूट वगैरह से सब हुए. तो एबे एनएचएआई प्लान कोन करची सेही जो नॉर्मल नॉन फ्लावरिंग प्लांट जगह रे फ्लावरिंग प्लांट लगेबे so that it will support bee population. Okay, and bee माने सेही प्लांट रो ये रे सपोर्ट रे रही कि सेठी निजर गोटे पॉपुलेशन जतबेले बढ़ेबे
they will also help with agricultural production or productivity increase. ठीक अछि? So this is option B. Next question को जिबा. Which state police department launched Operation Crackdown in February 2026 to systematically tackle the misuse of mule bank accounts in transnational cyber frauds? Karnataka, Telangana, Maharashtra, Delhi. Answer को. Okay. So the answer here is option B, Telangana police. Telangana police कौन करथला mule bank accounts. So basically mule bank accounts कोन ना हमर जो money laundering हैला or any other illegal activities, arms trafficking हो, drugs trafficking हो, तो से सब जो illegal activities रहला सेटा पे बहुत सारा criminal माने कौन करंती ना they will create a bank account which will act as the खचर. mule माने होची खचर, right? तो सी कौन करिवो वही की basically it acts as a कौन कहबा conduit गोटे पाइपलाइन भलिया काम करिवो जोटा कि से नै कि मनीटा ए बैंक अकाउंट रु से बैंक अकाउंट को ट्रांसफर होबो एंड दिस बैंक अकाउंट विल बी लाइक एनी अदर बैंक अकाउंट कि तादरे किसी डाउट आसीबोनी सेमती टाइप रो बैंक अकाउंट गोटे बनेबे. यूजुअली जो म्यूल बैंक अकाउंट थाए एडा तीन प्रकार रो थाए. गोटे थिवो तमे जानि कि बनौछो जे हां मु ड्रग ये करबी ब्रेकिंग बैड भलिया ड्रग बिजनेस करबी एंड वाल्टर व्हाइट हेबी तो से टाइप रो टारगेट रखी तमे निजर गोटे म्यूल बैंक अकाउंट बने. सेकंड केस रे कौन हबो ना तमे जानि न तमरो बैंक अकाउंट के यूज करूची. थर्ड होची जे तमे जानि न तम बैंक अकाउंट के यूज करची माने कोन सेटा आइडेंटिटी थेफ्ट हे गला. थर्ड केस रे कौन होची ना केही भी एग्जिस्ट करू नथिबे सेमति लोको ता नारे फेक बैंक अकाउंट गोटे बनिथिबो. ठीक अछि. तो these are three types. तो सेही म्यूल बैंक अकाउंट जो तळे पड़ी गला सेटा को बंद करिया को तेलंगाना पुलिस ऑपरेशन क्रैकडाउन लॉन्च करथि. देन phase 3 of the historic all India tiger estimation 2025-26 exercise prominently rolling across Periyar Tiger Reserve. In which state is this reserve located? Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh. So the correct answer here is option C, Kerala. Kerala रे हमरो अलगा अलगा सब कौन कौन अछि हमरो पंपादुम सोलर नेशनल पार्क, राइट, साइलेंट वैली, तापरे आउट अछि अन्नाईमुडी सोला नेशनल पार्क, राइट. एमती बहुत सारा प्रोटेक्टेड एरियाज अछि, राइट. तो गोटे टाइगर रिजर्व होची पेरियार टाइगर रिजर्व सिटी एबे चलची एस्टिमेशन. देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द सुजविका पोर्टल during the foundation day celebrations of which department? Department of Science and Scientific and Industrial Research, Department of Biotechnology, Department of Space, Department of Atomic Energy. Yes, Subhashri, very good. The answer is C. Dam. कौन dam? Dam department of short form नहीं. So here the correct answer will be Department of Biotechnology. Department of Biotechnology or 40th anniversary ପାଇଁ a Sujvika portal was introduced by the Union Minister of Science and Technology. ठीक अछि. चलो next question को जिबा.
A tiny previously unknown marine crustacean species named tiny squat lobster was discovered and catalogued by marine biologists off the coast of which Indian territory? Andaman Nicobar, Lakshadweep, Daman and Diu, Majuli Island. कौन हबो? तो क्रस्टेशियन माने कोन हमर जो प्रॉन रहिला, क्रैब रहिला, ए टाइप रो जो सब आमे एनिमल देखछे स्पेसिफिकली मरीन एनिमल्स जो मानकर कि भितरटा पूरा सॉफ्ट टिश्यू बाहरटा गोटे हार्ड शेल भलिया थिबो सेटा को हमें क्रस्टेशियन कहउछे ठीक अछि ओके ओके ऑप्शन सी ऑप्शन बी दिस इज द करेक्ट आंसर लक्षद्वीप ओके नेक्स्ट which central manufacturing unit was formally granted the prestigious mini ratna category status mini ratna category 1 status by the government of India Yantra India Limited, Munitions India Limited, Gliders India Limited, Troop Comforts Limited. Now, India रे हमरो PSU मानन को different categories रे divide करा हुए specifically broadly तीनटा total रे चारटा कौन ना महारत्न then we have Navaratna then we have Mini Ratna दूसरे क्या में category 1 and category 2 देखुचे so these are based on the profits they are making how much profit they are making ता ऊपर बेस करी केते ऑटोनॉमी मिलिवो कोन मिलिवो सेटा होची डिपेंड करे सबुठो अधिक ऑटोनॉमी महारत्न को ता तळे नवरत्न को ता तळे मिनी रत्न मानन को ठीक अछि ऑप्शन ए यंत्र इंडिया लिमिटेड वेरी गुड दैट इज द करेक्ट आंसर चलो आगु को जिबा The Central Consumer Protection Authority, that is CCPA, issued strict national guidelines in February targeting which deceptive digital practice? Crypto mining, hidden extensions, dark patterns in e-commerce interfaces, generative AI deepfake voice cloning, SIM swap authentication bypass. So, CCPA Central Consumer Protection Authority गोटे statutory body Consumer Protection Act under रे एटा बनितला right and यार mandate कोन नारु ही जणा पड़ची protection of the consumers right तो एटा कोन ना consumer protection पे digital practice रे सेटा कोडा ऊपर फोकस करियो crypto mining is not the कोन कहबा dimension which comes under its area right dark patterns in e-commerce interfaces so e-commerce interfaces they come under this so answer will be option B चलो next question को जिबा which state government introduced Kerala nativity card bill in its legislative assembly in February 2026 obviously Kerala nativity card bill obviously it will be Kerala so एठी आंसर तमने कहया किछि ये दरकार नै home tuition railways okay option B this is Kerala okay now the identity card bill ro माने होची sorry nativity card ro bill card ro meaning कोन ना हमें जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनौने सेटार कोन लिमिटेड वैलिडिटी रहउची तो सेहित पय केरला गवर्नमेंट कोन कला ना एमती बारंबार रेसिडेंस सर्टिफिकेट जे मु केरला रो लोको बोली प्रूव करिया पय मते बारंबार सर्टिफिकेट बनिया दरकार पड़िबनी मते कोन गोटे कार्ड मिलियो जोटा की परमानेंट कार्ड रहला चलला सी मु मला पर्यंत राइट नेक्स्ट क्वेश्चन in February 2026 the global organic trade exposition biofac 2026 witnessed grand state level exhibition debut of which northeastern state so the answer here is Meghalaya okay so biofac कोन
ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रो गोटे वेरी लार्ज स्केल ग्लोबल फेयर ओके देन द advanced strategic coordination program designed to train mid-level officers in hybrid theaters strategies which commenced in New Delhi in February 2026 is named as Tri-Services Future Warfare Course Operation Rakshak Vajra Prahar Analytics Integrated Command Doctrine 26. So try to answer. It's okay. Wait, एक question गुराक again and again practice करो till prelims every 2-3 days रे each month रा repeat करो मन रही जो. Okay. Next question. Oh sorry, एटा answer मु कहली नहीं. Answer is Tri Services Future Warfare Course. Okay, this is the answer. चलो next question को जुआ. Next question कौन? The food regulator FSI issued an enforcement advisory mandating a clear front of pack declaration of chicory content from July 1. Chicory roots are primarily processed as a blend in which consumer product? तो जो माने सेटा पिउथो सेटा जानिथिबो तो सेथरे चिकोरी मिसेबो. हां चिकोरी गोटे पेरिनियल प्लांट माने कोन जोटा कि 2 वर्ष रु अधिक पर्यंत बंची की रुए तार लाइफ टाइम टा 2 वर्ष रु अधिक सेटा को हम गोटे पेरिनियल प्लांट बोली कहउछे राइट. तो यार फ्लावर टा यूज हुए कोथरे नॉट जस्ट फ्लावर रूट स्टेम्स सब किसी यूज हुए इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स एंड ऑल बट फ्लावर टा स्पेसिफिकली यूज हुए इन कॉफी पाउडर प्लांट कौन करिया को ना कॉफी रो कलर टा को आउरी डार्क करिया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. A major international defense exposition and maritime coordination village was formally inaugurated by Indian Navy. What is the name of this village? Varuna village, Milan village, Malabar Bay, Paschim Leher terminal. Now this village is created in Visakhapatnam, Andhra Pradesh ro. And यार नाटा गोटे मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज सहित मैच करे जोटा कि इंडिया कंडक्ट करे. तो द आंसर हियर इज ऑप्शन बी मिलान विलेज और मिलन विलेज. ओके मिलन एक्सरसाइज गोटे बाइएनियल 2 वर्ष रे 2 वर्ष रे थरे हुए सेटा गोटे मल्टी नेशनल naval exercise conducted by India specifically with the focus on Southeast Asia. Okay. The Ministry of Environment gave its final conditional environmental clearance for a mega transshipment port and infrastructure layout at which strategically vital location? Great Nicobar project, Lakshadweep Minicoy port, project no eta port hoba. Kanyakumari maritime node, then Paradip outer harbor. Milan exercise, yes. Very good, very good. Chalo. Comment एमती actively participate करो. You will, even if you don't get the answer correct, you will know what you can do more. Okay. Yes. So this mega transshipment port is being built at the Great Nicobar. Okay. So इधर एक चीज हमसे discuss करिया नहीं. Great Nicobar रा importance जानती हो. Strategically located, right? Then Namo Gaurav Park initiative, which entered its final development phase in February 2026, the state-of-the-art technological and historical theme park being built in Vadodara, Nagpur, Varanasi, Bengaluru. Which will be the answer? Namo Gaurav Park.
A. Okay, very good. The answer here is option A, Vadodara in Gujarat. हमरा एठी कौन होची ना बहुत सारा hologram and 3D projection यूज कराए कि हमरा कौन कौन सेटा को इंडस्ट्रियलाइजेशन विषय रे हमरो डिस्प्ले करछि इंडिया रे इंडस्ट्रियलाइजेशन टा केमिति डेवलप हैला से विषय रे डिस्कस करथिला ओके माने ए जो ई जगह रे हमकु होलोग्राम प्रोजेक्शन रे देखा होछि India and UK launched a dedicated strategic platform in London to accelerate clean energy transition. What is it called? UK India Offshore Wind Task Force, India British Solar Bridge, Green Hydrogen Alliance, Net Zero Maritime Pact. Very good, Shubhasree. अब कौन कौच तमे आंसर भूल करछो बोली ठीक तो करछो एमती एमती अटेम्प्ट करि चलो तापरे एग्जाम रे सब ठीक ही हो पुरालिसी आ अरे ए कोई करना चलो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ता नाटा होची इंडिया यूके ऑफशोर विंड ट्रांसपोर्ट सेतरे कोन होची ना हमरो विंड पावर जनरेशन ऊपर फोकस करा होची ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन The Chakra Center of Excellence, formalized in 2026, February 2026, by leading national banking consortiums, is specifically mandated to finance stressed agricultural cooperatives, sunrise sector, real estate infrastructure trusts, traditional MSME weaving clusters. So Chakra, very straightforward. Doraemon. ठीक अच्छे आसी जाओ डोर खोला अच्छे आसीबो जदी आसी जाओ तमर तो से जो डोरेमन जो पॉकेट रे रखी थो से डोर टा तो यूज करके आसी जाओ स्टूडियो एडी के हेल्प करिवो बाकी हु इज दिस डोरेमन तो ना कोन क्वेश्चन आर वेरी एक्टिव नाउ यस you are also very active home tuition railways what is your name so the answer here is sunrise sectors sunrise sector माने कोन जो सेक्टर को राका एबे नुवा नुवा स्टार्ट करछन जेमति कि एग्जांपल एट दिया छि डीप टेक क्वांटम टेक्नोलॉजी स्पेस स्टार्टअप्स तो से मानन ऊपर फोकस करके ए चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टा हिची ओके नाउ strategic Druzhba oil pipeline made international headlines in February 26 following sudden drone attack disruptions. This pipeline primarily delivers crude oil from which country to Central Europe? Ukraine, Russia, Kazakhstan, Azerbaijan. What will be the answer here? Doraemon Babu, what's your name? Babu ki madam jabi to. And home tuition railways. You also. ସବୁ अजब गजब ना कहीं रख गोटे अच्छी परिडा पिक्सेल गोटे किए आसे गेमर बॉय तो ऑप्शन बी रशिया इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड चलो रशिया रो जो द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन तार मीनिंग हो द्रुजबा माने कोन फ्रेंडशिप ओके सो सेटा रे रशिया रु यूरोप को मेजॉरिटी ऑफ यूरोप्स ऑयल सप्लाई आसे एंड तापर सेठी रिफाइन हुए की यूज हुए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन The United Kingdom and Mauritius held critical diplomatic talks regarding the sovereignty transaction framework of which contested territory in the Indian Ocean. So, Chagos Island, Seychelles, Reunion Island, Socotra node. Which will be the answer? तुम्हारा रियल ना डोरेमोन रियल नेम भल लागुनी अरे चेंज करियो रियल नेम तो तुम निज ना भल लागुनी तमे जाके लीगली सर्टिफिकेट दे परियो there is one guy whose video I watched. He was saying he wanted to keep his name something as some like funny name. Okay, so answer is Chagos Island. Very good. Oh, okay, Shubham. चलो
So the Chagos Island is the correct answer. Chagos Island कौन है? यूके रा गोटे ओवरसीज टेरिटरी जोटा कि एक्चुअल रो मॉरिशियस रा ही पार्ट बट यूके ताको दोनतला बिकॉज़ ऑब्वियसली इंडियन ओशन रे तार गोटे टेरिटरी पळेले तार जो सिक्योरिटी कंसर्न स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस अछि चागोस आइलैंड्स रो सेटा पई यूके दबाकू रेडी नथला. ओके. Which European nation officially announced a large-scale grant project worth up to 20 million euro for India under its international climate initiative to protect high-risk ecosystems? France, Germany, UK, Sweden. What will be the answer? Sir, तांको नेम काହାର नेम सत्य डोरेमन मोर गोटे सांग अच्छी सत्यजित बोली. Option A, France. A, anyone else? The correct answer here will be option B. It is Germany. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा याद रे आउ किछ समके एक्सप्लेन करियार तो नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को. In a major geopolitical shift within South Asia counter-terrorism landscape, which country formally declared open war against Afghan Taliban in February 2026? India, Pakistan, Iran, Tajikistan. ए कंट्री गोटे मजाक कला जे कोन ना मो सहित मो कंट्री ऊपर टेररिस्ट अटैक होची तो मु भी तार रिटेलिएशन देबी. आई विल डिक्लेयर अ वॉर ऑन टेररिज्म एमती कह कि तालिबान अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देला. whereas it is the biggest exporter of what? Terrorism. So answer is option B, Pakistan. अरे ये क्वाडू ऑप्शन ए क्वाडू इंडिया कौन लिखुच तुम माने मुंड खराब ही जी. पाकिस्तान भाई. ऑप्शन बी. ऑप्शन ए रे इंडिया इंडिया ओपन वॉर डिक्लेयर कला तालिबान अगेंस्ट केबे. आंसर इज ऑप्शन बी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट एवर साइंटिफिक पॉपुलेशन एंड habitat assessment formally identified Kaziranga National Park and Tiger Reserve as a critical stronghold for which elusive endangered mammal? तो एटा भी सेमती किसी बेसिक किसी डिस्कस करिया नै. मते खाली को काजीरंगा नेशनल पार्क को स्टेट रे अछि? अरे इंटरनेशनल national news और state news already सरलानी near 45 questions we did on that. Okay, national और state news रो last एतो question अछि हमरो international news last 15 questions. काजीरंगा असम. आंसर कोन हो? आंसर इज द फिशिंग कैट. ठीक अछि. तो एटा गोटे होची कोन ना बहुत ही ग्रेट स्विमर ऑब्वियसली. ना कोन फिशिंग कैट. तो एई बिलेटा मुसा धरेनी. This term does not run after Jerry. This term runs after SpongeBob. ठीक अछि. नीमो. चलो नेक्स्ट जीवा. Next question. India chose to abstain from a high stakes UN General Assembly vote in February 2026. What was the central theme of this resolution? Sanctions on space weapon research, the Russia-Ukraine ceasefire resolution, digital taxation on multinational tech companies, Red Sea maritime policing mandates. सर भूल टाइप है क्लास तो ऑप्शन देखा गला नहीं. ओके ओके इट्स ओके. चलो here the answer will be the Russia Ukraine ceasefire resolution. काहेकि ना as we know India Pakistan भितर तो from the independence period हमर इशू गोटे हेची जम्मू कश्मीर इशू जो थरे कि गोटे भूल हे गला हमर
कंट्री द्वारा कौन ना वी अप्रोच्ड अ थर्ड पार्टी जोटा कि यूएन थिला which we should not have done. It was a bilateral issue which should have been resolved bilaterally. ठीक अछि तो सेही जिंस पई इंडिया रा एबे स्टांस सब केस रे कोन रहउची एवरीथिंग शुड बी सॉल्व्ड bilaterally. ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which global luxury hotel chain and hospitality enterprise retained the title of India's Stronghold Brand 2026 for the fourth consecutive year in brand finance reports? The Oberoi Group, Taj Hotels, ITC Hotels, Leela Palaces. तो कौन लग्जरी होटल चेन इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड तो होटल इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट कोटा ही हेतियो तमे जानि परथुओ ओके होप योर फीलिंग इज करेक्ट मु चाहूँ तो सब क्वेश्चन आम जहाँ डिस्कस कर जहाँ भी क्वेश्चन आसु से ही आसु आमर ये जतक मैराथन हम से ही सब क्वेश्चन आसु तुम मैंने 100 रु 80टा क्वेश्चन ठीक करके आस बेसी 100 रु 100 करदेले पुणी से कहबे ना कि एक्साइज वाला पैसा देके क्वेश्चन बनै दउछ यस सो द करेक्ट आंसर इज ताज ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आउ बस 6टा क्वेश्चन रहबो या पर जल्दी जल्दी Google officially unveiled its next generation AI image generation and editing model in February 2026. What is the name of this model? Google रा image generation and editing AI ता नाटा कौन कहयार अछि तुम वाह ताज ठीक ठीक मैं पूरा सेफली खान आउ ताज चा पी की सितार बजेगी वाह ताज कहबो तो Imagine Pro 3, Nano Banana 2, Gemini Pixel 5, Synthat X. कौन होगा? So Doraemon, both are saying Nano Banana 2. Very good. That is the correct answer. Now, next question Gujiba. Which country hosted the 6th Khelo India? This is not country, this is state. Okay. Which state hosted the 6th India Winter Games in February 2026? Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Ladakh. Very straightforward. खेलो इंडिया गेम्स कौन ना हमर इंडिया भितर एथलेटिक्स को प्रमोट करिया को खेलो इंडिया गेम्स चलची राइट स्टेट डिफरेंट स्टेट रो पार्टिसिपेशन रहउची तादरे बहुत सारा जस्ट किडिंग ओके अरे भाई व्हाई सच काइंड ऑफ थिंग्स आंसर दवा ऊपर फोकस करो कि पुआ हो झियो हो शत्रु कौन जाउची so the answer here is option B Jammu and Kashmir okay let's go to the next answer next question in the field of medical science research breakthrough findings published in February 2026 mapped out a critical link between chronic influenza infections and permanent optic nerve atrophy structural myocardial or heart damage chronic renal filtration collapse early onset osteoarthritis तो ऑप्टिक नर्व डैमेज माने एटा होची आई प्रॉब्लम एठी देछि हार्ट डिजीज रीनल फेलियर माने किडनी प्रॉब्लम एंड एटा बोन रिलेटेड प्रॉब्लम जॉइंट्स रिलेटेड राइट तो क्रोनिक इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हेले काहा ऊपर इफेक्ट पकेबो फर्स्ट फेज ले लद्दाख सेकंड यस वेरी गुड option B 55B so this is the correct answer yes influenza हेले our कोन कहबा कोन सेटा lungs are affected and ता सहित लिंक्ड हे कि थाय हमर हार्ट जेतु हमर cardiac system associate हे कि थाय that leads to problems in the cardiac system okay the principle of just deserts which was extensively cited by the Supreme Court in a landmark judgment on criminal sentencing guidelines in the in February 2026 is a core pillar of which theory of punishment deterrence theory reformative theory retributive theory preventive theory so give the answer
Yes, Doraemon, you are correct. This is retributive theory. The principle of just desserts. माने कौन जेतिकी तमे भूल करछ सेतिकी तुमको पनिशमेंट मिलवा दरकार ताठू अधिक नुह ओके जदि तमे बहुत ही सिवियर काम करछ और यू हैव डन समथिंग very heinous crime करछ then you will be given very high amount of punishment जदि छोटो मोटो petty crime करछ then छोटो मोटो punishment दिया okay so the next question which country's parliamentary speaker visited New Delhi and was decorated with the prestigious Speaker of Knesset Medal to mark robust bilateral legislative ties? Germany, Israel, US, Australia. What will be the answer? Yes, Shubham. The answer was option C. Very good. What else? Here. So, Knesset, Knesset is the unicameral legislature. कोठार जोटा की आंसर हो the answer will be Israel. Okay. So very good. Option B. Very good. Very good. चलो आगु चलिया. Next question. आउ या पर दीटा क्वेश्चन ही रहबो. Who won the ICC Under-19 Cricket World Cup 2026 title after a thrilling final match played in 2026? India, Australia, Pakistan, England. कौन हो? इंडिया. वेरी गुड. तो याद रहा कौन ही डिस्कस करी समस्त तो सब कुछ जानी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आपरे पवित्र सार आसीबे क्लास में आगु सो जल्दी जल्दी सरिया. The legal enforcement gap report published by World Bank highlighted that despite robust global statutory additions, the actual enforcement of equal opportunity gender laws worldwide stands at less than 40%, 50%, 65%, 75%. तो कौन होची ना जो लीगल एनफोर्समेंट गैप रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश को कौन कोची जे ग्लोबली हमर लॉ सब बनी जाईची जेंडर इक्वालिटी पई बट तार एनफोर्समेंट बहुत खराब रहउची व्हिच इज द करेक्ट आंसर माने कितने परसेंट टू कम इंप्लीमेंट होची ए पूजा इज सेइंग 65 इंडिया इंग्लैंड बस बस ए तो 100 रन हरेला चलो 65% आसुनी ओके द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी 50%. So that is the correct answer. एठी आउ किछि एक्स्ट्रा जिंस नै बस रिपोर्ट रे या लिखा है. ओके चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे नॉट ऑफ द डे ऑफ माय डे. ओके या पर तमरो क्लास अछि पवित्र सांकर which Indian historical dynasty celebrated for constructing architectural marvels and intricate Jain basadis was featured in medieval heritage conservation projects across Karnataka? Chola dynasty, Hoysala dynasty, Rashtrakuta, Chalukya. Yes. एई भलिया क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन टा जो थिला डेटा पूरा रहितबो ता विषय तुमको जदी जणा नै एग्जाम रे तुम सेटा को स्किप करिवो एठी अटेम्प्ट करो गेस करिगी एग्जाम रे स्किप करिवो. So here the answer is Rashtrakuta dynasty. देखो all of these are very well known dynasties जो मानकर की आर्किटेक्चर बेसिकली स्पेसिफिकली टेंपल आर्किटेक्चर रे बहुत ही अधिक ना अछि राइट but this Jain basadis was a intricate feature of the Rashtrakuta dynasty temple architecture. Okay, so with this we are done with the February month current affairs and next Pavitra sir asiki tomaro class nebe. So thank you everyone.
ओके गुड आफ्टरनून समस्त को वेलकम करुच्ची कैक्स क्लास को तो केमती कौन प्रिपरेशन चली पढ़ापढ़ी सब राष्ट्रकूट डायनास्टी फाउंडर दांती दुर्ग हाँ भाई ये मना कला हाँ एलोरा केव्स भी करथिले द मिक्स ऑफ ऑल द हिंदू मुस्लिम नहीं नहीं हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन तीन टांकर केव गुरा भी स्ट्रक्चर अच्छे ओके चलो ठीक अच्छे तो स्टार्ट करिवा लेट्स गेट स्टार्टेड ठीक अच्छे ओके ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन करो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऊपर क्वेश्चन आंसर कम नंबर दे के लिखिबे ओके फर्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द सिंगल लाइन क्वेश्चन अच्छे तमरा ता सहित भी तमरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बचे इन व्हिच इन द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ओके जोटा कि सेकंड टाइम पे रिलीज हेतला सेकंड टाइम और सेकंड टर्म पे ओके सेकंड फिस्कल हेल्थ इंडेक्स किए रिलीज करितला ओके तो मन रखिबो कि किए ये करितला नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मार्च 11 रे रैंक्ड 18 तो भितर आ भितर सबटु फर्स्ट किए थिला ओडिसा थिला मन रखिबो ओडिसा ओडिसा टॉप करितला ओके ओएसएससी सीजीएल ले भी तमरे क्वेश्चन थिला ओएसएससी सीजीएल ले थिला मन रखिबो इट इज सेकंड इंडेक्स माने सेकंड टाइम पे ओके सेकंड एडिशन इट इज द सेकंड एडिशन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऊपर ओके हम ओडिसा रो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बहुत भलो अछि ओके अच्छा नीति आयोग बढ़िया ओडिसा रे भी गोटे गठन करा हिची ताको कहते सिटी ओके सिटी आयोग ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करबा गुरा क्वेश्चन गुडा चलो क्वेश्चन आंसर को हो 2 नंबर ओडिसा गोवा सेकंड बढ़िया खाली मन रख गोटे टॉप किए करथला ओपीएससी तो पचारिबनी जनरली पचारिबनी कि ओपीएससी हाँ 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 बहुत थरा सिटी सिटी करेक्ट अछि नेक्स्ट consider the following statement regarding observation or observance of panchayat raj divas related to initiative in March 26 okay आगुर को होतला March 5 was declared as panchayat raj day और panchayat raj divas कोठी ना ओडिसा रे panchayat raj divas ओडिसा रे किंतु किंतु बीजेपी गवर्नमेंट decided to declare April 24th April as celebrated as the Panchayat Raj Divas because 24th April 1993 re 73rd constitution amendment came into force that is why it is elected Panchayat Raj Days exactly Odisha emphasize digital governance mechanism and gram panchayat administration 243 A रे okay it is a initiative by the Odisha government then capacity building कथा भी कहतिला okay capacity building करी कि तमरो कोन लिटरेसी बढ़ा जीवो capacity building training दिया जीवो ट्रेनिंग तो एथरे कोन दीटांग करेक्ट ला पचारि छि कोन ना क्वेश्चन पचारि छि करेक्ट कोटा तो डेफिनेटली ए विल बी द करेक्ट आंसर बहुत बड़ा है कमे दो भाई हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्मार्ट विलेज कथा पचारि आई थिंक हाँ स्मार्ट विलेज ओके इजी क्वेश्चन एटा सिंगल लाइन क्वेश्चन स्मार्ट विलेज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट मन रखिबो स्मार्ट विलेज कोडी है केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे वाज सिलेक्टेड इन मार्च 2026 एज द ओडिशा फर्स्ट स्मार्ट विलेज कुसुनपुर आई थिंक कुसुनपुर कोडी है ए विल बी द करेक्ट आंसर कुसुनपुर विलेज अच्छा तमरो टैक्स हला कोन क्राइटेरिया टिके मन रखिबो क्राइटेरिया मन रखिबो ओके क्राइटेरिया मन रखिबो आ ए जो
कहार इनिशिएटिव स्मार्ट विलेज CSIR रो ओके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मन रखियो CSIR रो कोन इट इज ए इनिशिएटिव ओके केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रो चलो नेक्स्ट पीएम पोषण नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे with reference to Odisha implementation of PM Poshan initiative during to March 2026 consider the following statement अच्छा मते को PM पोषण केबे आसीतला PM पोषण केबे आसीतला केबे लॉन्च हेतला सेप्टेम्बर 29 2021 OPSC रे पूर्व वर्ष स्कीम रो मैचिंग इयर्स पचारितला ईयर मैचिंग पचार तो मे भी क्वेश्चन आसी पारे पीएम पोषण एबे भी कंटिन्यू होची दैट इज व्हाई इट इज इंपोर्टेंस पीएम पोषण सेप्टेम्बर 29 2021 रे इनिशिएटेड हेतला ओके तो एबे पचारि छी कोन जे आ भीतर स्टेटमेंट रो कोउटा करेक्ट अछि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन ही नहीं 1 2 3 ऑप्शन ही नहीं अच्छा सेट अछि डी रे अछि कौन आंसर दीजिए मिलेट बेस्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वर प्रमोटेड इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट करेक्ट अछि ए सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कथरा तमे कंफ्यूजन नै पारे बट एक स्टेटमेंट डायरेक्टली पीएम पोषण रे तमर अछि पीएम पोषण एम्स नॉट ओनली इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बट आल्सो एनहांस स्कूल कोन एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ओके चिक्की दिया होची चिक्की देखियो स्कूल ले सब एबे चिक्की गुडा दिया होची ओके चिक्की गोटे गोटे चॉकलेट टाइप रो बादाम चिक्की मिलेट चिक्की दिया जाउची आ एथर कोन पय कराई छ न्यूट्रिशनल बेनिफिट पय न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट अब एट द सेम टाइम तमर एनरोलमेंट मिड डे मील स्कीम काहे की ना तमर एनरोलमेंट बढ़िया पय तो सेकंड करेक्ट छ आ एटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इंप्लीमेंट करूची तो करेक्ट अब कोन करेक्ट पचारि छी तो डेफिनेटली करेक्ट अब डी समस्त करेक्ट छ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर who ये बहुत इजी क्वेश्चन which prominent personality from Odisha has been officially appointed as the brand ambassador for census 2027 to raise the public awareness through creative campaigns हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंट HRD मिनिस्टर अब नहीं अच्छा सुदर्शन पटनायक ओके सेंसस केबे हेतला फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस 1872 नॉन सिंक्रोनस मायो टाइम रे हेतला देन सिंक्रोनस 1881 रिपन टाइम बेले हेतला रिपन टाइम बेले मन रखिबो and this is the 16th number census and 8th after independence पर 8 number and this is the second caste census digital caste census first time के बे 1931 okay these are the तम कहि परिबो कि तमे गुडा कहि परिबो बेसिक डाटा तमे जानि छ पचार दे परिबो एटा केते नंबर 16 नंबर सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस केते नंबर 8 नंबर सेंसस तो डेफिनेटली सुदर्शन पटनायक वाज द ब्रांड एंबेसडर ऑफ द दीटा ग्राउंड रे दीटा ईयर करा जिवो गोटे फर्स्ट फेज रे गोटे सेकंड फेज अप्रैल आडू को गोटे करा जिवो दीटा हाउस लिस्टिंग एंड सेल्फ एनुमरेशन एगुडा तमे सब गुडा पढी थिबो हाउस लिस्टिंग करा जाउची सीएन नंबर लेखा हो जेबे तापर तमरो सेल्फ एनुमरेशन करा जिवो 16th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस 8 हां दीटा फेज रे कंडक्टेड हो चलो नेक्स्ट लक्षपति दीदी स्कीम को लक्षपति दीदी स्कीम लक्षपति दीदी स्कीम को हाँ हाउस लिस्टिंग करा जाऊ सीएन नंबर लिखा हो with reference to Odisha implementation of Lakshapati Didi initiative March consider the following statement the program focused on enhancing the income generation of opportunity for women self help group आथर कोन एटा तो पूरा जेनरिक स्टेटमेंट जण आराम से करि परिबो second skill development and entrepreneurship promotion form an important component of this initiative it is also correct मन रखिबो लक्षपति दीदी स्कीम रे कहबो ना they want to create
लक्षपति ओके थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड इनकम जनरेशन आउटा का थ्रू रु ना सेल्फ हेल्प ग्रुप रु करा सेल्फ हेल्प ग्रुप तो दीटांग करेक्ट अच्छे दीटांग करेक्ट करा जाउची होउची कोन सेटा अलग कथा किंतु रियलिटी रे आउची ओके लक्षपति अच्छा को अंडर जाउची मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट so both will be the correct answer so number A will be the correct answer next next 7 number करो on March 11 2026 Odisha celebrated anniversary of Odia being recognized as classical language. In which year did the Union government officially granted to this status? এটা बहुत easy question 2014 ने ओके ओडिया got the classical ओरिया रु केबे ओडिया आइतला ओरिया टू ओडिया 96th constitution amendment 2011 केते नंबर बिल होची 113 नंबर दया करी मन रख राइट नाउ केतेटा क्लासिकल लैंग्वेज अछि देयर आर 11 क्लासिकल लैंग्वेज 6 क्लासिकल लैंग्वेज ओडिया 2000 exactly right now we are having 11 क्लासिकल लैंग्वेज 11टा अछि 11टा तो मन रखिबो तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम एक्सेट्रा बट लास्ट 5टा तो मन रखिबो जोटा कि 2024 मसिया रे ऐड हेतला दया करी कि मन रखिबो कोन पाली प्रकृति मराठी आसामीज एंड बेंगली एटा होची कोन लास्ट 5 जोटा 2000 आई थिंक अक्टोबर मास रे ऐड हेतला 2024 रे एबे ए 5टा ऐड हेछि अच्छा एटा हला तमर नॉर्मल क्वेश्चन आर क्राइटेरिया मन रखियो क्राइटेरिया किए डिसाइड करे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिसाइड करे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तार चारिटा क्राइटेरिया अछि के कोइ परिबो चारिटा क्राइटेरिया अछि मन अछि पाली प्रकृति मराठी बेंगली आसामीज ठीक अछि आर चारिटा क्राइटेरिया बेनिफिट्स कोन पचारि परिबो ओपीएस किछि भरोसा नै ओके क्राइटेरिया कोन 1500 रु 2000 पुराना लैंग्वेज हेतिबा दरकार लार्ज एंटीक्यू थिबा दरकार रिसर्च फैसिलिटी थिबा दरकार प्रोज पोएट्री ओके तो एगुडा टिके मन रखियो देखाई दउची वेट गोटे मिनट देखो अक्टोबर 3 2024 मसिया रे राइट नाउ वी आर हैविंग 11 अच्छा व्हाई क्लासिकल मैटर दरकार नै व्हाट मेक्स क्लासिकल लैंग्वेज हां एटा टिके मन रखियो ओके ए चारिटा पॉइंट मन रखियो हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग केते 1500 रु 2000 ईयर भितरे ए बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर अ टेक्स्ट दैट कंसीडर हेरिटेज बाय जनरेशन बाय ऑफ स्पीकर्स मन रखियो क्वेश्चन पचारि पारे कंडीशन नॉलेज ऑफ टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट एबे कहले आपन को पोएट्री एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस and classical language and its literature may be distinct from its current form or show discontinuity of the original
ओके तो देईटा चारिटा पॉइंट को दया करके मन रखिबो दिस कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी और ओपीएससी प्रीलिम्स आल्सो दिस कैन बी आस्क्ड चारिटा कंडीशन कोन हला हाई एंटिक्विटी थिबा दरकार हाई एंटिक्विटी 1500 रु 2000 ईयर भितर ए बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट कंसीडर हेरिटेज कथा कहूची नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन पोएट्री एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ओके जेम्स प्रिंसेप भले लोक आसी मे भी पुनथर देई परंती अच्छा नेक्स्ट कहला द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर मे बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम करंट फॉर्म और सो डिसकंटिन्यूटी तो दीज आर द कोन कंडीशंस टू कोन क्लासिकल लैंग्वेज तुम दया कर तुम इच्छा हम पढ़ा को सब लैंग्वेज डिटेल्स कोदरे पीआईबी रे देछि ओके पीआईबी पढ़ियो पीआई इज द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चलो ए क्वेश्चन है गला 2014 चलो ऑपरेशन डन नेक्स्ट जल्दी जल्दी एबे चलो आउ किछ नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देछि which corporate steel giant successfully doubled its crude steel capacity from 6 million ton per annum to impressive 12 million ton per annum at अनुगुल देछि माने तो संगे संगे ये करि परिबो अनुगुल ले देछि अनुगुल देखो एटा राउरकेला रे अछि हबनी जाजपुर रे अछि हबनी जेएसडब्ल्यू एंड जिंदल स्टील तो आंसर कोन बैठी सी जिंदल स्टील ओके चलो एटा ये इजिली करि परिबो नेक्स्ट 9 नंबर द इंडियन बिशप फेस्ट 2026 was organized in March to advocate for the safety and tracking of regional gaur population पाई भी recently थिला मार्च रे भी न्यूज़ रे थिला एटा which wildlife sanctuary is hosted it is in Debrigad Bargad and Sambalpur Similpal Mayurbhanj Kuldiawa Baleshwar Hadgad होची केउंझर आंसर एटी देब्रिगढ़ अब एटा न्यूज़ रे पूरा थिला ओके देब्रिगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देब्रिगढ़ जोटा कि संबलपुर एंड बरगढ़ मझरे अछि देब्रिगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलो मन रखिबो ओके एटा करंट न्यूज़ रे भी थिला बहुत नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे ऊपर क्वेश्चन वर्ल्ड वाटर डे ऊपर क्वेश्चन सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन बिशप फेस्टिवल एग्जैक्टली with reference to Odisha celebrated World Water Day in March. World Water Day केबे हुए मार्च 22 थीम कौन वाटर एंड जेंडर ओके वाटर एंड जेंडर थीम थिला वाटर एंड जेंडर स्टेट एम्फासाइज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एटा भाई सिंपल स्टेटमेंट जने आराम से कोई परिबो ओके द स्टेट एम्फासाइज इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट एंड ग्राउंड वाटर भाई वर्ल्ड वाटर डे होउची माने तो ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट ऊपर कथार्थ आसीबो तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट द स्टेट एम्फासाइज इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट एटा पूरा जेनरिक हेजबो community participation of water resources managed promoted ओके जते बेले तुम वाटर रिसोर्सेस को कोन करूचो ना कंजर्व करूचो तो सेते बेले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहइबो सेकंड भी करेक्ट ओडिशा अनाउंस डिसकंटिन्यूअस ऑफ माइक्रो इरिगेशन बाय माइक्रो इरिगेशन द्वारा ही तमर कोन होची जे वाटर रिसोर्स को तुम कंजर्व करि परचो कम खर्च करि परचो तो डिसकंटिन्यू केन हेबो तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट तो पचारि जे करेक्ट तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन थरा भी हेई परिबो B will be the correct answer. चलो next 11 number question 11 number आमो बैंक ओके आमो बैंक आपण गाँ रे भी आपण हेतु आमो बैंक मो बैंक रो आमो बैंक कर सलेन हो चलची सिस्टम दे जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आमो बैंक आउटरीच expansion discussed in Odisha March. Okay, कौन देइछे आमो बैंक
It is an initiative aimed to strengthen the banking accessibility in the rural areas. आपन को rural area रे है प्रति year तो first statement correct हबो. Second, customer service points and digital banking outreach form important components of the program. अरे भाई customer service provide करी छी दिया है तो सेति पई काहे कि ना because of financial inclusion पई, because maybe the rural people they are not able to reach the banking facilities that are available in the city areas. That is why am bank जोटा मो बैंक कहउतले. Okay, तो दीटा का correct statement अछि. The answer will be 11A. 11A will be the correct answer. चलो next question. सही फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऊपर क्वेश्चन ना कोनटा सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डेवलपमेंट. अच्छा चलो चलो 12 नंबर. Consider the following statement regarding the socio-economic indices and environmental development in Odisha recorded in 2026. देखिए in the fiscal health index 2026 released by Niti Aayog, Odisha secured the top performance position among all the states, highlighting excellent debt sustainability and fiscal prudence. Correct अछि एबे तो एबे पढिले जे fiscal health index रे Odisha first अछि, so definitely first statement correct. Second dala, Odisha Forest Department latest census revealed that the crocodile population in the state has crossed 2,000 marks, with the Satkosia and Tikarpada region serving the critical habitat. A statement may be तुमको confusion करि पारे जेपर्यंत तुम कोन ना crocodile census को पढिनो, crocodile census को पढिनो. ओके तो एई भला दीटाको तमरो कोन जे दीटा टॉपिक रु कंडीशन वाला क्वेश्चन आसीबा दरकार. गोटे फिजिकल हेल्थ को ऊपर क्वेश्चन पचारु छी आ गोटे स्टेटमेंट रे तमरो क्रोकोडाइल सेंसस. तो ए भला मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आसीबो नाही, बट तुमको कोन करिया पड़िबो दया करी कि आपण को क्रोकोडाइल सेंसस फॉरेस्ट रिपोर्ट आकु टिके पढ़ी की जिवे. सेकंड स्टेटमेंट डाटा अनुसार करेक्ट अछि. ओके दीटा को पढ़ी की जिवे तो मे भी क्वेश्चन आपण पाई पारंती. तो डेफिनेटली आंसर एटी कोन हबो सी. आंसर एटी हबो सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी. 13 नंबर. Who was honored with the prestigious Utkal Ratna Award? Answer कोन हबो एबे दिया आइतला. Okay, Utkal Ratna Award by the Utkal Sahitya Samaj 2026 for immense public service. काउ दिया आइतला ना विश्वभूषण हरिचंदन. Okay, former governor of Andhra and Chhattisgarh. Okay, Odisha. B will be the correct. हाँ B भाई विश्वभूषण हरिचंदन को ही दिया जाता है. माझी बाबू को दिया है सेटा इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट. In March 2026, the Odisha government issued an absolute ban on the manufacture, distribution and sale of gutka and pan masala containing tobacco or nicotine under which of the regulatory act. Okay, मझे बैन करथिले देन कहिले कि नाइ पान मसला रे कोन निकोटिन नाही तो पुणी खुलम खुला मिलिला. पुणी खुलम खुला ताल कोउथरे दिया आइतला. ओडिशा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो हबो नै. Cigarette prevention of food adulteration तो हबो नाही. Then cigarette and other tobacco product कोटपा एटा हेई पारे और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट तो डेफिनेटली फूड सेफ्टी ही हबो. फूड सेफ्टी. ओके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कोटपा हबोनी. ओके कोटपा हबोनी सेति पय क्वेश्चन पचराई छी. ओके बी विल बी द करेक्ट आंसर. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट अनुसार. नेक्स्ट. हाँ चलो नेक्स्ट 15 नंबर.
हाँ बैन कले पुणी कहले खाओ जा तुम खाओ किसी असुविधा नहीं पुरी डिस्ट्रिक्ट is the schedule to host the state inaugural Fit India Carnival on its coast. This lifestyle and health mission is organized under which national banner? Which national banner? अरे भाई फिट इंडिया तो फिट इंडिया मिशन ही थो खेलो इंडिया तो नुह आयुष्मान भारत तो नुह नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड नुह ओके तो फिट इंडिया मिशन नहीं थो बी विल बी द करेक्ट आंसर एटा गेस कुडा मारियो सबु क्वेश्चन हबनी भाई एग्जाम दबाऊ जेतल जीव सबु क्वेश्चन आपन आसीबनी 15 को 10 टा के जति तमर 12 टा कि 15 टा पढुची करंट अफेयर यू कैन नॉट डू एवरीथिंग प्रीलिम्स एग्जाम से यू आर नॉट सपोज टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस हम खोजिबार अछि को क्वेश्चन आंसर दे हम खसी परिबी चलो नेक्स्ट 16 नंबर मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना consider the following statement the scheme promotes agri entrepreneurship and allied agricultural entrepreneurship the correct अच्छे दिन सा एग्रीकल्चर पर ही ऐसी मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना सेकंड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सब्सिडी सपोर्ट एसोसिएटेड विथ द स्कीम करेक्ट अच्छे थर्ड रे देछि कोन ओनली लार्ज कॉर्पोरेट फार्मिंग काई छोटो छोटो फार्मिंग को फार्मर गुडा भी एलिजिबल नोंति कि ओनली लार्ज एटा हो गोटे एक्सट्रीम स्टेटमेंट ओनली लार्ज कॉर्पोरेट फार्मिंग खाली ओनली कॉर्पोरेट फार्मिंग जो माने लार्ज रे थिबे तो तीन थिले हबो नै तीन तो सबुथरे अछि एठी 1 2 एथरे भी तीन एथरे तीन अछि तो एक नुआ तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया होछि तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ओनली लार्ज कॉर्पोरेट लेखुछि माने आउ का को दिया जीवनी कि जो माने छोटो छोटो फार्मर अछंदी ओके मार्जिनल फार्मर अछंदी ताकू दिया जीवनी कि दैट्स ओनली वन जेतेबेल तुम कहि देबो कि जे लार्ज कॉर्पोरेट फार्मिंग तो इट इज ए काइंड ऑफ एक्सट्रीम बोल्ड स्टेटमेंट है होछि तो स्टेटमेंट गुडा जनरली रॉन्ग थाए चलो नेक्स्ट 17 नंबर जी consider the following statement regarding national safety week observed in odisha during march national safety week kebe hetla industrial safety workplace awareness campaign were organized 10th march to 14 march I think 4th march ru 10th march जाके 4th march ru 10th march जाके इतला 6E policy अस्तिला education enforcement engineering emergency environment and evaluation 6E यूपी रा थिला 4E ओडिशा आउ दीटा ऐड कर देला ओके यूपी मॉडल फॉलो करछ ओके एजुकेशन एनफोर्समेंट इंजीनियरिंग इमरजेंसी एनवायरनमेंट इवैल्यूएशन यूपी रा थिला कोन एजुकेशन एनफोर्समेंट इंजीनियरिंग इमरजेंसी देन एनवायरनमेंट इवैल्यूएशन करि देले काहे कि हमको पीयूसीसी थिला ना पीयूसीसी तो सेति पई पीयूसीसी करिवार थिला the first statement wrong sectors such as mining steel heavy industry and manufacturing participate in safety audits mock drills and awareness second correct अछि तो पचारि छि करेक्ट कोटा तो बी होबा करेक्ट आंसर बी हां 2 ओनली बढ़िया बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हाँ 18 नंबर को इजी क्वेश्चन data the state government announced the extensive plan to construct Kalinga Maritime Museum कोउडी अछि Kalinga Maritime Museum कम आंसर Kalinga Maritime Museum to celebrate ancient trans-oceanic trade link where कोउडी पुरी गोपालपुर पारादीप and चांदीपुर आंसर एटी हबो कोन पारादीप रे okay paradip re the state government announced an extensive plan to construct Kalinga Maritime Museum कोउडी ना कोउडी paradip re okay ओटा database ओटा current affair थिला next
Biju Patnaik Jayanti. With reference to Odisha Biju Patnaik Jayanti observance in March 2026, consider the following statement. कौन देइछि? The occasion highlight Biju Patnaik contribution to Odisha industrial and political development. Event promote youth leadership and public service were organized. The observance is constitutionally recognized as India's National Governance Day. कौन आंसर? कलिंग मैरिटाइम म्यूजियम हाँ एटर आंसर कौन 19 नंबर 19 नंबर देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट उठे द ऑब्जर्वेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल को आर्टिकल भाई प्रोवाइड करिছে को आर्टिकल प्रोवाइड करिছে नहीं एटा करेक्ट तो आंसर एटी को हबो सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड करी नहीं तो एटी को हबो करेक्ट पचारिছে तो डेफिनेटली सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे वर्ल्ड ट्यूबर नेशनल गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी हाँ सी ठीक अच्छी बट नेशनल गुड गवर्नेंस डे ये भी तुम कहि पालो ता परे भी तमरा कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली काई रिकॉग्नाइज करी वो आर्टिकल्स तो प्रोवाइड करेनी कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट रिकॉग्नाइज चलो 20 नंबर with reference to Odisha World Tuberculosis Day campaign in March 2026 consider the following statement चला 20 नंबर active case detection and awareness campaign were intensified so definitely correct about nutritional and community support for TB patient receive policy emphasis eta भी correct about Odisha declared tuberculosis completely eradicated है नहीं पर्यंत 2025 पर्यंत थिला but we are delayed ए पर्यंत जाके है ही नहीं तो आंसर एटी को पचारिছে करेक्ट पचारिছে तो डेफिनेटली बी विल बी द करेक्ट आंसर 20 नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर 1 2 ए पर्यंत है ही नहीं कंप्लीटली डिक्लेयर्ड कंप्लीटली है ही नहीं नेक्स्ट एक्सरसाइज दीप शक्ति केबे आइतला एबे जस्ट आइछि The Indian Armed Forces executed exercise Deep Shakti in March 2026, a high-intensity joint tri-service drill to protect sovereignty of maritime assets. Where it is conducted? Code conducted aitla exercise Deep Shakti. Exercise Deep Shakti. Deep Shakti. BDD भाई केमिति है ना हाँ it is Andaman Nicobar Deep Shakti Deep is island Sourav Deep ये Deep that is so definitely कोडी अछि Andaman and Nicobar टिके गैस लगेले भी कर पे मुंबई हबनी दीप शक्ति भाई दीप आइलैंड अछि भी चलो नेक्स्ट ए डाटा वाला क्वेश्चन करो ए क्वेश्चन मन रखियो एवढा क्वेश्चन आसे छाड़ दबो डायरेक्ट क्या छाड़ दबो जे तो मन अछि तो भलो कथा अदरवाइज छाड़ दबो ए जी यूनियन कैबिनेट अप्रूव जल जीवन मिशन 2.0 एक्सटेंडिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन टू डिसेंबर 2028 व्हाट इज द न्यूली ओके जल जीवन मिशन जेजेम 2.0 ओके एक्चुअली केते दिया आइतला एटा तमर बजट सेशन में डायरेक्ट 8.69 लाख करोड़ 8.69 लाख करोड़ नहीं 6.20 नो 6.20 नो 8.69 लाख करोड़ ओके ए डाटा गुडा टी मन रखिबो ओके चलो नेक्स्ट under the newly structured rules for the Jal Jeevan Mission 2.0, a uniform national digital layout will track the entire water supply. Okay,
वाटर सप्लाई को ट्रैक करिया पई गोटे पोर्टल गठन करा दितला से पोर्टल ना कोन पोर्टल ना कोन ए जल जीवन मिशन तम एटा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट रे तमरा दिन से ओडा पडिया कथा एक्चुअली कौन बा सुजल भारत डिजिटल नेटवर्क सुजल भारत डिजिटल नेटवर्क सुजलम हाँ सुजल एका दिन सर चलो ए विल बी द करेक्ट आंसर इधर 24 नंबर करा ट्वेंटी फोर करा कम आंसर 24 नहीं जी द पार्लियामेंट पास द हाई प्रोफाइल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी कोड मार्च रे व्हाट इज द सेंट्रल टारगेट कौन आईबीसी कौन पे आसला टू लोअर द कॉर्पोरेट टैक्स भाई से कथा किछि तो कोई नहीं लोअर कॉर्पोरेट टैक्स ने टू एनिबलेट द प्रोसीजरल डिले एंड रिजॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्बिग्यूटी इन द इंसॉल्वेंसी पाथ करेक्ट अछि टू प्राइवेट ऑल डेब्ट्स नहीं टू कन्वर्ट द आउटस्टैंडिंग लोन डायरेक्टली इनटू द पब्लिक इक्विटी नहीं आंसर ऑप्शन बी okay insolvency and bankruptcy code originated in IBC 2017 okay पढ़िबो इकोनॉमिक्स रे पढ़िबो insolvency and bankruptcy code IBC it is a reforms NPA पाई भी आसीथिला next in March 2026 the Supreme Court of India actively applied passive euthanasia guidelines to authorize the withdrawal of can specific of patient okay हरीश राणा केस तम देखिबो हरीश राणा 2026 कॉमन कॉज केस कॉमन कॉज 2018 दया करके पढ़िबो हरीश राणा केस एंड कॉमन कॉज ओके दैट इज permanent vegetative state permanent vegetative state there is a difference between active euthanasia and passive euthanasia एक्टिव रे कोन तमे लेथल इंजेक्शन कोन से दे कि जण को डेथ कराइबो बट पैसिव रे कोन ना तार जो सपोर्ट अछि सपोर्ट गुडा अछि तो ताकू कोन करिवो हटे दबो तो नेचुरली तार डेथ हो लास्ट नेचुरली डेथ हो दैट इज कॉल्ड पैसिव यूथनेसिया पैसिव यूथनेसिया इज अलाउड एक्टिव यूथनेसिया इज नॉट अलाउड तो सीएनएच कोन कोन कैंस कोन कोती ना कंटीन्यूअस ऑटोमेटेड न्यूरोलॉजिकल हैंडलिंग एटा नुवा क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन ये जो कैंस मेकानिज्म रे अछि तमाने कोन तमे कैंस रे कोन करूछ तमे खाइबा को ये करूछ कोन न्यूट्रिशनल एंड हाइड्रेशन ताकू देई की वंचित कर रखिछ बट ता छडा जे तमे सेहीटा सपोर्ट उठे दबो ताल तर नेचुरली डेथ हे जो तो आंसर एटी कोन बा डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके दीटा केस टे पढी की जीवो हरीश राणा केस आउ तमर कोन कॉमन कॉज केस आउ बहुत सारा केस अछि इंपोर्टेंट न खाली दीटा पढी जाओ next a catastrophic snow avalanches hit the strategically sensitive Jojila Pass in March 2026 Jojila Pass is situated पढ़िथिबो KLZ PD काराकोरम ओके काराकोरम लद्दाख जस्कर पीर पंजाल आंध फंध पढ़िथिबो काश्मीर रो हाँ इनडायरेक्ट वे सेटा को कोन कहजिवो पैसिव यूथनेसिया इज अलाउड एक्टिव यूथनेसिया इज नॉट अलाउड हाँ आंसर कोन
जोजिला पास कोठी अछि भाई जोजिला पास इन द जस्कर रेंज ओके जोजिला पास इज इन द जस्कर रेंज ओके पढिथिबो केएलजेड पीडी पढिथिबो काराकोरम लद्दाख जस्कर पीर पंजाल एंड अच्छा काश्मीर वैली का भीतर अछि काश्मीर वैली जस्कर एंड पीर पंजाल ओके काश्मीर वैली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पास गुडा टिके मन रखिबो क्वेश्चन आसीबो तमरा नेक्स्ट 27 द इंडियन एयर फोर्स finalized a plan to bolster the combat of capabilities of its MiG-29 fighter fleet by retrofitting them with the advanced ASRM missile. Okay, advanced short range air to air short range air to air missile. 27 number answer कौन हबो what type of weapon system is ASRM advanced short range air to air missile कौन आंसर 27 भाई एडवांस शॉर्ट रेंज कहूँ शॉर्ट रेंज अरे SRAAM एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल शॉर्ट रेंज माने सरफेस टू सरफेस तो हबार चांस नहीं बियॉन्ड विजुअल रेंज हे परिबो नहीं विद इन विजुअल रेंज शॉर्ट रेंज कथा कहछि तो डेफिनेटली विजुअल रेंज भीतर ही हबो अरे शॉर्ट रेंज कहूँ तो बियॉन्ड विजुअल रेंज केमती हबो एयर टू सरफेस हबोनी एयर टू एयर मिसाइल बट विद इन विजुअल रेंज तो आंसर एटी कोन हबो सी हबो अरे सी हबो शॉर्ट रेंज कहूँ ना अरे फुल फॉर्म कौन शॉर्ट रेंज तो शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज केमती पळेबो तो आंसर सी हबो करेक्ट बुझियला अरे बुझियला ना नहीं सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट 28 नंबर कर the newly rolled out Gruhasugam online digital terminal has been launched by which apex organization to streamline housing finance workflows housing finance कथा कहला housing finance माने डेफिनेटली आरबीआई हबार चांस नहीं स्टेट बैंक हबार नहीं नेशनल हाउसिंग बोर्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक आंसर एटी कौन हबो डी 28 डी एटी कौन हबो डी बी हबनी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हबार चांस नहीं नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचपी हबो नेक्स्ट आंसर 29 करा the Ministry of Defence signed a multi-crore capital procurement contract to acquire the advanced Tungsung air defense system. The specific platform is deployed. काहे के कोउटी हमें ये करिबो multi-crore procurement contract from the Tungsung air defense system. अच्छा ठीक है हाँ 29 ओके ए बळे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आसीबो ने क्वेश्चन एयर डिफेंस सिस्टम कोटो ट्रांस कॉन्टिनेंटल भाई आम दरकार नहीं क्या तो मारिबार नहीं कॉन्टिनेंट ऊपर तो फोपाड़ीबार नहीं 5 दिन वाला दरकार नहीं आमर कहीं पैसा खर्च करवा हाई अल्टीट्यूड स्टेल्थ बम्बर हे पारे डीप सी एंड एटा ही परिबोनी अल्टीट्यूड स्टेल्थ बम्बर ऑलरेडी आम पाखे अच्छी दरकार नहीं किनिबा तो लो अल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल एयर प्रोटेक्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर 29 बी हाई अल्टीट्यूड स्टेल्थ आमर पाखे ऑलरेडी अच्छी स्टेल्थ जामर राडार ऑलरेडी अच्छी स्टेल्थ सी हबनी बी हम स्टेल्थ आम पाखे ऑलरेडी अच्छी इंडिजिनस कैपेबल आम ओके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आम पाखे भी अच्छी तो पैसा कहीं आम एत पैसा दे खर्च कर किनिबा
So low altitude short range tactical air defense protection. B will be the correct answer. Chalo, next question. Next question. Amrabat Tiger Reserve was in news due to tribal relocation and eco restoration operation. In which hill range this reserve is located? Okay, Koudi, Western Ghat, Amrabat. So definitely Western Ghat chances nahi. Hobo nahi. Amrabat. Habari. Western Ghat habani. Arabali. Nallamala Hills. Okay, Nallamala Hills. Nallamala Hills କୋଉଠି ଅଛି? It is in Eastern Ghat. Eastern Ghat କହିପାରିବ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ. It is in Telangana. It is in Telangana. Nallamala Hills, Telangana. Next. Next 31. Tamil Nadu first ever certified dark sky park aimed at keeping night sky free of artificial light pollution for the astronomical observation was built. Okay, a direct question guda. Dark sky park कोठी कहिछि कोठी अन्नामलाई हबो नै तमिलनाडु रे देछि नीलगिरी इट इज द कॉन्फ्लुएंस हबार चांस नहीं जवादा हिल्स भी हबनी कोली हिल्स अन्नामलाई भी हबनी इट इज कोली हिल्स ओके डार्क स्काई पार्क कोडी ना कोली हिल्स रे तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्यपति बेटिया योजना और तुम कहि परिबो बिटिया योजना ओके बीजेपी गवर्नमेंट आसिला परे फर्स्ट टाइम पे करितला व्हिच यूनियन टेरिटरी स्टेट गवर्नमेंट मेड न्यूज बाय साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूसिंग लक्ष्यपति बिटिया योजना और तुम कहि परिबो सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड एंड मेरी पूंजी मेरा अधिकार इन मार्च 2026 ओके ए बिटिया योजना रो तुम जानि देतो न्यूज रे बहुत ला एटा ओके जेता बेले तमरो दिल्ली रे बीजेपी गवर्नमेंट आसिला तो रेखा गुप्ता मैडम कौन करते अनाउंस करते इट इज दिल्ली गवर्नमेंट इजी क्वेश्चन नेक्स्ट 33 the Osmita League which saw widespread regional institutional matches in March 2026 is a key sub-component of which flagship sports development framework. Question पढ़िबो नै टाइप एटा बहुत ही जाउछ ए टाइप रो क्वेश्चन में भी न आस पारे दस्मिता लीग ओके इट इज खेलो इंडिया मिशन रो बट ए टाइप रो न आसी पारे ओके एबला स्कोप ए पड़ले स्किप मार दबो एते जदी ये गुरा भी स्किप मार दबो नेक्स्ट ए टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे 34 नंबर द इंडियन वाइल्ड लाइफ ट्रैकर रेज्ड कंसर्न ओवर द लोकलाइज्ड हैबिटेट shifts of Rudy Sudlow. What is the current IUCN red list conservation status of this migratory bird? जोटा करंट रे न्यूज रे अछि तो तामे क्वेश्चन रे पचारि पारे जा तार IUCN स्टेटस ऊपर क्वेश्चन आसी पारे 34 नंबर ओके हमको पढितबो पूर्वतर ओपीएससी ऑलरेडी पचारि सारी छि जे को लिस्ट रेड डाटा बुक ऊपर तमर ऑलरेडी क्वेश्चन पचारि सारी छि रेड डाटा बुक ऊपर तो सीक्वेंस कोन एनडीएल एनवीसीडबलई आउ तर लिखि दउ छे एनडीएल एनवीईसीडबलई ओके near threatened data deficient least concern not evaluated near threatened
vulnerable, endangered, critically endangered, extinct wild, then पूरा complete extinct. मन रखियो ए ऊपर क्वेश्चन पचारि थिला तो आर ए ऊपर स्टेटस ऊपर ऑलरेडी ओपीएससी क्वेश्चन पचारि सारी ओके तो पचारि सल्डोग्राफ एटी कोन बल लिस्ट कंसर्न एलडी एलडी कोडी लिस्ट कंसर्न तार क्राइटेरिया भी मन रखियो क्राइटेरिया दया करिक मन रखियो क्वेश्चन पचारि थिला स्टैटिक पार्ट रो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हनुमान को स्टेट प्रोजेक्ट हनुमान ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पाई प्रोजेक्ट हनुमान देजी की which state government launched project hanuman in march 2026 to deploy ai alert and smart fencing to reduce human animal conflict okay project hanuman andhra pradesh ही करितला ए डाटा गुडा गुटे मन रखियो ओके आंध्र प्रदेश करथला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 जल्दी जल्दी सार दबा 36 हाँ 36 करो the union cabinet officially approved the designation of Madurai airport as an international airport. This expansion strategy is primarily designated to unlock an air infrastructure for transcontinental cargo कथा नहीं ओके नुआ नुआ जो उड़ा होची transcontinental पाई तो नुआ ओके तापर को tier 2 and non metro regional expansion to boost cultural and religious tourism हेई पारेटा देखिबा नेक्स्ट देखिबा dedicated defense aviation maintenance नहीं helicopter transit route नहीं तो आंसर एटी कोन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके ये जो छोटो छोटो एयरपोर्ट गुडा करा जाउची कोन पाई ना रीजनल कल्चरल बूस्ट पाई ओके टायर 2 एंड नॉन मेट्रो रीजन को कनेक्ट करिया लगी दिन गुडा छोटो छोटो कोन करा होची जे तमरो कोन जे एयरपोर्ट गुडा नुवा नुवा गठन करा होची ओडिसा रे जेमति की उत्कलिया झारसुगुडा ये गुडा सब जो करा होची त से गुडा कोन पाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देछि कोन The Reserve Bank of India published its forward-looking financial document titled Payment Vision 2028. What is the central focal point of this blueprint? कौन जे पेमेंट विजन कौन पाई रखा है 2028 कौन है थी पेमेंट विजन कंप्लीटली पासिंग सॉरी फेजिंग आउट फिजिकल पेपर करेंसी 2026 भीतर टोटल पैसा को उठा देबो कि हां खाली फोन पे ये यूपीआई रे चलीबो कि नहीं सेकंड नो एनहांसिंग क्रॉस बॉर्डर यूपीआई लिंकेज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी करेक्ट अछि प्राइवेटाइजेशन और रूरल कोऑपरेटिव कथा नो एलिमिनेटिंग प्रोसेस फी कथा नो तो आंसर एटी कोन बी एनहांसिंग कौन पाई पेमेंट विजन 2028 रे कौन छी ना एनहांसिंग क्रॉस बॉर्डर यूपीआई लिंकेज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज और सीवीडीसी एंड साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करिया पाई पेमेंट विजन 2020 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 भव्य इंडस्ट्रियल पार्क ऊपर क्वेश्चन करो in March 2026 the Ministry of New Renewable Energy rolled out the Bhavya Industrial Park guidelines. What does the scheme promote? कौन promote करूची भव्य Ministry of New Renewable Energy माने कोल कथा तो नहीं रेल मेंटेनेंस नहीं डीप सोर होई परिबनी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर जो डेडिकेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन सोलर सेल्स एंड विंड एनर्जी तो डेफिनेटली बी हेतिबो
38B ही थी ओके न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन सोलर सेल्स एंड विंड एनर्जी चलो बी ही थी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा किए अपॉइंटेड है इंडिया एम्बासडर टू चाइना ओपीएससी डेप्यूटी एनएसए कथा क्वेश्चन पचारिछि पूर्व वर्ष डेप्यूटी एनएसए को ऊपर क्वेश्चन पचारला अनिल दयाल शर्मा ऊपर क्वेश्चन था ओके एनएसए पचारले एनएसए तो समस्त जानिछनी ओके द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया माने मोदी साहब समस्त जानिछनी तो से डेप्यूटी एनएसए कथा क्वेश्चन पचारदला डेप्यूटी एनएसए तो से बड़ा मे भी केबे क्वेश्चन पचार दे पारे ओके आंसर कौन हम इंडिया न्यू एम्बासडर टू चाइना कतरा हबनी जावेद में तरनजीत सिंह सांडू नहीं विक्रम के दोराई स्वामी रिसेंटली तो डेफिनेटली मे भी क्वेश्चन आसी पारे ओके मोस्ट प्रोबेबली एई टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे तब एम्बासडर गुडा मे भी पचार न पारे किनु नुवा नुवा अपॉइंटेड गुडा इंपोर्टेंट अपॉइंटेड गुडा पचारि पारे नेक्स्ट 40 the annual tribes art fest was inaugurated to provide direct market linkage to indigenous tribes artisan which city hosted festival ओके ट्राइब्स आर्ट फेस्ट को सिटी फेस्टिवल करितला को सिटी फेस्टिवल करितला ट्राइब्स आर्ट फेस्ट के करतला न्यू दिल्ली ए हबनी बी हबो ओके ट्राइब्स आर्ट फेस्ट कार ना न्यू दिल्ली रो चलो बड़ा बड़ा क्वेश्चन The Ministry of Environment notified a strict 4-stream segregation guidelines at source for municipal urban center. Which of the following correctly identifies 4 mandated streams? 4 मु सफाई वाला ओके तुम शुणिथिबो ओदा सुखिला अलगा करी अरे सकाळु सकाळु बीएमसी रे तो बाजुचे ना ओदा सुखिला अलगा करी ओके प्लास्टिक पेपर मेटल ग्लास कथा तो किछि कहनी बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल कथा कोई नहीं डोमेस्टिक कमर्शियल आ कथा कोई नहीं वेट ड्राई सैनिटरी एंड स्पेशल केयर वेस्ट मेडिकल ले भी जीव देखियो वेट रो अलगा ड्राई रो अलगा ओके तापर सैनिटरी एंड स्पेशल केयर तो आंसर एटी कोन हबो बी कोन करिछि डब्ल्यू डी एस एस ता माने को वेट ड्राई सैनिटरी एंड स्पेशल केयर वेस्ट को डिवाइड करिके अलग रे दबा ओदा सुखिला अलग करी देई दबा आसी चलो Next, 42. Dr. B.R. Ambedkar Yatra scheme provided the state-funded educational transit tour historical Dalit heritage was launched. Here launch करिछ. Okay, ये scheme के launch करिछ. Most probably ये वाला scheme आसी पारे, न आसी भी पारे, किछ फरक नहीं. पढ़ी पारे न पढ़े को OPS ऊपर किछ नहीं. OPS किछि ही पचर परियो. जी डॉक्टर अंबेडकर यात्रा ओके मन रखियो पुडुचेरी ही करथिला तो मोस्ट प्रोबेबली स्किप कर दो एवला जदी क्वेश्चन तमे डायरेक्टली न जानिचो ताहाले गेस मारियाटे टिके भूल हे जो ए टाइप रो पडले स्किप करिवाटा ही बेटर हो स्किप करिया ही बेटर नेक्स्ट हां स्टार्ट र कहारो स्टार्ट एक्चुअली इसरो रो इनिशिएटिव स्टार्ट 2026 स्टार्ट start हो space science technology space science technology awareness okay the key national initiative which enter into implementation in phase manner to specialized training network engineers को कहा को इसरो
कौन ना पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्पेस साइंस अवेयरनेस एंड बेसिक रिसर्च ओरिएंटेशन हाई पावर है परिबो नहीं कमर्शियल पाई नहीं इंडियन आर्मी सैटेलाइट नुह तो जो स्टूडेंट माने पीजी स्टूडेंट और यूजी स्टूडेंट जनरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट तुम कहि परिबो कि तांकर कौन ना स्पेस साइंस रे अवेयरनेस जनरेट और ट्रेनिंग दवा पई स्टार्ट 2026 इसरो जनरेट करते और तुम लॉन्च करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 Indian prominent think tank as and green organizational convened the Bharat Electric Summit. The primary agenda of this national summit. Bharat Electricity Summit eitla. कौन थिला प्राइमरी एजेंडा कौन आमे तो पंचमित्र रे भी कहिछे पंचमित्र रे भी कहिछे पंचमित्र रे भी कहिछे COP26 ग्लासगो रे भी कहिछे ग्लासगो रे भी कहिछे ओके COP30 हेलानी नेक्स्ट COP31 आई थिंक टर्की रे हबो आउन ऑस्ट्रेलिया तो कौन करिवो नेगोशिएशन COP26 रे भी कहिथिला हमें पंचमित्र रे ग्रिड इंटीग्रिटी ऑफ 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी बी COP26 रे कहिथिले आ एथरे भी कहिथिले 2070 भितरे हम कोन ना जीरो कार्बन अचीव करिवा नेट जीरो कार्बन 2070 ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन The Kosi River witnessed sudden structural bank erosion concern in March 2026. बड़ यात्रा लिखी कि क्वेश्चन हूँ कोसी रिवर हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर ट्रिब्यूटरी ओके गंगा सिस्टम घाघर गंडक कोसी महानंदा तो आंसर एटी कौन हम गंगा रिवर सिस्टम गंगा कोसी ओके गोमती घाघर गंडक कोसी एंड महानंदा ओके गंगा सिस्टम एपटू जाइए तुम यमुना एंड सोन रिवर जानी गंगा सिस्टम पढ़ी चलो चलो नेक्स्ट 46 the United States military officially executed a highly precision targeted airstrip deployment titled Operation Epic Fury किए करितला भाई यूएसए का अगेंस्ट रे करतिला ना ईरान अगेंस्ट रे 46 ओके ईरान अगेंस्ट रे मन रखिबो सब ऑपरेशन गुडा गुटे दया करी मन रखिबो ए बी वाला करी पचार दे पारे ए बी वाला करी क्वेश्चन पचार दे पारे ओके देन मिसाइल गुडा भी मन रखियो ब्लू स्पारो मिसाइल गुडा भी मन रखियो के कोथरे का को मारितला ओके मिसाइल मन रखिबो बिहार सर एक्जेक्टली हां मन रखिबो ऑपरेशन गुडा गुटे मन रखिबो ऑपरेशन गुडा को मन रखिबो ऑपरेशन एबे रिसेंटली ऑपरेशन गुडा होउची इंडिया भी कोन को ऑपरेशन करिची ओके तो इंपोर्टेंट गुडा को मन रखिबो एपिक फुरी यूएसए कहा ऊपर करितला ईरान ऊपर एबे भी चलिछ चलो नेक्स्ट 47 the Litani River was international headlines and amid military updates on the enforcement of proposed security zone. Okay, तो क्वेश्चन से पचार जे लिटानी रिवर कोठी अछि लिटानी रिवर एक्चुअली लिटानी रिवर तमे देखिबो इट इज इन लेबानन ऑप्शन अछि कि रेड सी मेडिटेरियन सी ब्लैक सी एंड कास्पियन सी रेड सी तो तळे हबार चांस नाही ब्लैक सी ऊपर हबार चांस नाही कास्पियन सी माने इट इज मेडिटेरियन सी ओके मेडिटेरियन सी तो आंसर एटी को हबो कोठी ड्रेन हुए ना मेडिटेरियन सी रे मेडिटेरियन सी
हाँ ब्लू स्पारो मिसाइल रे जहां डेथ हेतिला ओके अयतुल्लांकर डेथ हेतिला ईरान तो 47 कौन हम 47 मेडिटेरियन सी 47 मेडिटेरियन सी नेक्स्ट 48 the world first ever dedicated high speed freight only sinker कौन Shinkansen cargo train service was introduced automated heavy logistic ए वाला क्वेश्चन पचारिबनी जनरली पचारिबनी ओके Shinkansen भाई ना रो ही जणा पड़ी जाउछे जापानी हेतिबो ना रो ही जणा पड़ी जाउछे चलो ये क्वेश्चन को स्किप मारो नेक्स्ट आउ एटा एटा एक्चुअली माने क्यूएस रैंकिंग ऊपर क्वेश्चन क्यूएस रैंकिंग ऊपर क्वेश्चन अच्छे बट ठीक से कॉपी ये ही नहीं जे टाइपिंग है पारे नहीं ठीक से ओके तो क्यूएस रैंकिंग ऊपर क्वेश्चन अच्छे छाड़ क्यूएस रैंकिंग ऊपर क्वेश्चन एबे करो 50 नंबर International Conservation raised alarm at Global Assembly of the Convention of Conservation of Migratory Species of Wild Animals. CMS ऊपर क्वेश्चन CMS ऊपर क्वेश्चन CMS ऊपर किए करिथिला मन रखिबो तुमको 1992 तुम पढ़िथिबो 1972 1974 Rome Club Small is Beautiful, then 1987 Brundtland Report Sustainable Development, then 1992 Rio Earth Summit रे तीनटा आसिला United Nation Framework Convention on Climate Change, then Convention on Biological Diversity, then तमरा एथर भी तमरा एजेंडा 21 ये दिन सब गुडा सब आसिला then UNCED United Nation Convention on Elimination of Desertification ओके तो कोउतरे इतला CMS वाइल्ड लाइफ नो इंटरनेशनल IUCN नो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एग्जैक्टली चलो 50 UNEP C next 51 which corporate enterprise own the highly competitive women premier league हां के जितला 2000 एटा को 2000 सेकंड टाइम पे के जितला RCB ओके RCB women प्रीति मंदाना चलो नेक्स्ट अवार्ड ऊपर तो प्रेस्टिजियस BCCI नमन अवार्ड BCCI नमन अवार्ड का को दिया हेतला जसप्रीत बुमराह ओके नमन अवार्ड का को दिया हेतला ना जसप्रीत बुमराह next which global tech enterprise enter into a strategic pact with the International Olympic Committee to deploy real-time AI analyst for the athlete training and anti-doping monitoring कौन बा 53 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सहित किए टाइप करिछि हाँ दिल्ली कैपिटल रनर्स अप नंदिनी शर्मा इमर्जिंग प्लेयर ओके तार मन रखियो टिके ओपीएससी एमिति फ्रेम करिवने ओपीएससी यदि आईपीएल ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करिवो फर्स्ट टाइम केबे हेतिला माने स्टेटमेंट रे फ्रेम करे दवा जे फर्स्ट टाइम केबे हेतिला किए केते थर जीति से टाइप रे फ्रेम करिवो जेमति एशिया कप ऊपर क्वेश्चन पचारितला ओके फर्स्ट को स्टेडियम रे खेल होइतला पचारतला भाई कोन दरकार मन रखिया पचारछन आंसर दिबो गूगल हां चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
The Indian para badminton legend Pramod Bhagat delivered an inspiring performance in March 2026 by clinching 2 gold medal at which एबे तो खेल होइतला स्पेनिश बैडमिंटन इंटरनेशनल एबे तो होतला स्पेनिश रे स्पेनिश ओके बी विल बी द करेक्ट आंसर स्पेनिश ओके ए दिन से उड़ा इजी क्वेश्चन चलो ए क्वेश्चन करो साइंस टेक in astrophysics research published in 2026 scientists successfully mapped magnetar flare oscillation using data from the Indian astrosat. What is the magnetar? Magnetar कहा को कहा जाए? Magnetar कौन? ओडिशा गवर्नमेंट फोकस ऑन घुसापट हम रखिया पड़िबो magnetar कौन? It is a kind of type of neutron कोड अछि magnetar flare crossed नुआ a type of neutron star with extremely powerful magnet correct है सही पर है a dormant supermassive black hole तो भी नुआ comet नुआ तो आंसर है टिका b b will be the correct answer. Magnetar flare oscillation कौन है? A type of neutron star with extremely powerful magnetic field. चलो next question, last 5 question जल्दी. चलो next 56 जल्दी. The World Health Organization launched a global tracking network in 2026. Pathogen watch कौन पाई कराइतला? Antimicrobial resistance पाई. Antimicrobial resistance पाई. ओके antimicrobial resistance पाई तमरो पैथोजेन वाच कराइतला मन रखिबो antimicrobial resistance एटा करंट न्यूज रे बहुत थिला बहुत. ओके बी विल बी द करेक्ट आंसर antimicrobial resistance and superbug outbreak. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऊपर क्वेश्चन अछि COP21 2015 पेरिस हेडक्वार्टर गुरुग्राम. ओके ते पचारे जे ऑफिशियली बिकम द न्यूएस्ट की आइतला माल्टा आइतला यूएसए माल्टा लाटेस्ट वाज इज द माल्टा 57 माल्टा लाटेस्ट ए दिन गुड़ा तुम जानी थी ओके किए सपोज ब्रिक्स रे किए नुआ आडेला आईएस रे किए नुआ आडेला आईबीए रे किए नुआ आडेला दिन गुड़ा तुम सब जानी थी माल्टा वाज द लाटेस्ट जॉइन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. उरुगे भाई के देला लाटेस्ट माल्टा थिला ना माल्टा थिला उरुगे के देला. The global economic reports released in March 2026 revealed that which nation has surpassed everyone to become the largest exporter of liquefied LNG gas. Largest exporter. Here largest exporter LNG gas. Here United States. USA. हाँ किए जीतीला ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप. ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किए सुइक्वी मन रखिबो सुइक चारिटा चैंपियनशिप मन रखिबो चारिटा चैंपियनशिप रे दया करी के मन रखिबो किए गितला. ओके चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. In March 2026, the United Nations Security Council passed a historic resolution demanding an immediate ceasefire. Okay, खाली demand करूची UNSC. आउ किछि करि परनी. In the major conflict zone during the holy month, which conflict zone targeted? UNSC रे composition टी मन रखिबो. UNSC रे composition टी मन रखिबो. Okay, 5टा permanent P5 nation मन रखिबो 10
नॉन परमानेंट मेंबर मन रखिबो एबे रिसेंटली किए इलेक्टेड होइछनी मन रखिबो ओके यूएनएससी रो काम कोन भी मन रखिबो तो ताकू टिके देखिबो P5 रो वीटो पावर भी टिके भल से पड़िबो ओके तो आंसर कोन पटी कोन पई होली मंथ माने रशिया यूक्रेन पई तो किछि नाही सुडान नो इवन इट इज गाजा स्ट्रिप होली मंथ कथा ना तो गाजा स्ट्रिप आसीबो ओके 60 आई थिंक दिस एंड्स योर मार्च मास रे हम कंप्लीट कर देले मार्च मास सरला देन तमर एप्रिल मंथ जस्ट वेट करो किछ समय भीतर स्टार्ट हो 2-5 मिनिट भीतर स्टार्ट हो मैडम तमर क्लास नेबे ओके अनन्या मैडम 5 मिनिट भीतर क्लास नेबे ओके वेट करथांत एप्रिल मंथ रे डिस्कशन ओके वेट करंतु 5 मिनिट पर स्टार्ट हो चलो थैंक यू ऑल द बेस्ट Okay, good afternoon, guys. Good afternoon, all. I hope January, February, March 3 मासर क्लास तुमने बहुत एंजॉय करिथिबो. We will discuss about the April month current affairs. I hope all of you. Am I audible? Am I audible, guys? Am I audible? Am I audible? Screen दिसुची तमनको समस्तको जो मैंने भी लाइव रे अच्छो प्लीज तुम टे मत चैट रे कंफर्म करो कि मो वॉइस तुम को क्लियरली शुभुची कि नहीं एंड मोर स्क्रीन तुम को दिसुची कि नहीं जो मैंने भी लाइव रे अच्छो ठीक है कंफर्म करो मते आई होप आई एम ऑडिबल चलो सो आई पिला माने जो मैंने क्लास करूथलो बोधे सब खाइए को पड़ेलो ना कौन लंच पाई लंच करो साइड बाय साइड एप्रिल मास भी कवर कर दियो सो दैट पूरा कंप्लीट हो जिवो मे मासर करंट अफेयर्स पुणी तो आसीनी मे मासर करंट अफेयर्स आसीबो भी ना एग्जाम रे टिल एप्रिल तक ही आसीबो सो दिस इज द इनफॉरमेशन गोटे तुम कहि दउची कि दिस इज द पार्ट 1 ओके शुभश्री गुड आफ्टरनून आई होप लंच कर सारी थी है ना वॉइस क्लियर ओके ओके फाइन 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 चलो जो मैंने भी लंच करन से माने क्लास साइड बाय साइड लंच कर एंड क्लास को कंटिन्यू करो दो मतलब जेहेतु एटा मैराथन ना आम एंड करें सो यू हैव टू कंटिन्यू ओके जो मैंने भी लंच करने लंच करके रिटर्न करेंगे विल स्टार्ट इट राइट ओके शुभश्री hope you have done your lunch okay chalo so first question on your screen hi Manish hello after so long time very happy to see you and Subhashri unfortunately I माने जेतु क्लास बिफोर टाइम सरीला दुईटार सरीबा कथा जेतु
पवित्र सर क्लास बिफोर टाइम सरला लॉन्च करिनी मु कंप्लीट करके लॉन्च करबी नो इशू किछ असुविधा नै चलो ओके फाइन ओके ओके फाइन फाइन सारी देबा सारी देकी जीवा लॉन्च करबा चलो ओके फर्स्ट क्वेश्चन तम स्क्रीन रे फर्स्ट क्वेश्चन तमन को स्क्रीन रे क्वेश्चन पढ़ो समस्ते जमिति लास्ट 3टा क्लास तो माने 3 मास रो तमे कलोनी ओडिसा करंट अफेयर्स किछि एंड नेशनल करंट अफेयर्स रो किछि मिक्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड वेरी चूजी क्वेश्चन जो गुडा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो वेरी इंपोर्टेंट एंड दिस द पार्ट 1 पार्ट 2 विल बी लिटिल बिट हायर साइड जो एबेर जो पार्ट 1 करंट अफेयर्स जो तम माने भी देखुछ बा जो क्वेश्चन करूछ टिके इजियर साइड रो करंट अफेयर्स है ना सिंगल लाइन्स एंड ऑल बाकी तुमको नेक्स्ट जो तुम नेक्स्ट जो पार्ट 2 टा हमें आनिबा सेते बेले तुम टिके हायर साइड रो क्वेश्चन हमें आनिबा टिके ये रो आउ जहा छाड़ी जाइछे से सब क्वेश्चन सेते हमें कवर करबा ओके विजय नमस्कार भलो अछो चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुम मन को स्क्रीन रे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रभाती परिडा सॉरी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रभाती परिडा ऑफिशियली इनॉग्रेटेड द फेस्टिव निमापड़ा पथ उत्सव 2026 in April in which district of Odisha is this cultural street carnival hosted एबे रिसेंटली डेप्यूटी सीएम मैम निमापड़ा पथ उत्सव होस्ट करछथि दैट टू बी फर्स्ट टाइम है ना निमापड़ा पथ उत्सव आगुर केबे हेइ नथिला एटा फर्स्ट टाइम हिची अच्छा आई एम very much happy to see all my old students like Manish, Vijay, Subhashri, Doraemon बहुत दिन परे बट लास्ट मैराथन ने तमन तो नथिला रे लास्ट मैराथन ने तो तम माने नथिला ओके एनीवे चलो आसीछ आज बहुत खुशी मु भलो अछि डोरेमन आई होप तम भी भलो थिबो पूरी पूरी समस्त पूरी यस यस स्वागतिका पूरी इट्स पूरी निमापड़ा पथ उत्सव प्रथम थर पर होउची एंड पूरी रे ही कंडक्ट करा जाइछे पूरी डिस्ट्रिक्ट रे जाउछे जेतु माने कल्चरल स्ट्रीट कार्निवल तमन जानिछो पथ उत्सव इज वेरी फेमस इन भुवनेश्वर रे 3-4 वीक पथ उत्सव हुए एंड निमापड़ा रे फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट करा जाइछे दैट कम्स अंडर पूरी ओके फाइन वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो मन को स्क्रीन रे consider the following statements regarding Odisha हाँ दिस होचे ना हाँ ओडिशा गुणत्व संकल्प लॉन्च इन अप्रैल है ना एटा ओडिशा गुणत्व संकल्प एबे लॉन्च हेचे ताकू ने की स्टेटमेंट को पचारछे ताकू ने की गोटे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो तमेने सेटा को आंसर करो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन कहूची इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI and the objective the primary mandate is to embed quality frameworks across public infrastructure healthcare education and MSME sector को स्टेटमेंट करेक्ट अछि मते को पटापट आंसर दियो बोथ की माने मते तमे पचारछो ना आंसर दोछो डी समस्त डी इट इज करेक्ट बोथ 1 and 2 देखो एबे जॉइंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो क्वालिटी काउंसिल इंडिया सहित जॉइंट इनिशिएटिव निया जायछि मेन काम कोन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया रो कि क्वालिटी फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस हैला क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को इंश्योर करबा होछि QCI रो काम हैला एंड ता अंडर कोन कोन जाउछि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आसीबो हेल्थ केयर आसीबो एजुकेशन आसीबो MSME सेक्टर आसीबो ए जो चारिटा सेक्टर रे क्वालिटी केमिति क्वालिटी मेंटेन करा जाउछि गवर्नेंस रो सेटा ही ओडिशा गुणत्व संकल्प रो एम हैला एंड सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया QCI रो गोटे जॉइंट इनिशिएटिव ओके आई होप ऑल क्लियर क्वालिटी
काउंसिल ऑफ इंडिया QCI हैला मन रहइबो समस्तकर QCI मेन दिन हला टू इंप्रूव द गवर्नेंस हैला इंप्रूव द गवर्नेंस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वेरी गुड ऑल ऑफ यू वेरी गुड समस्त ठीक देला आंसर समस्त ठीक अच्छे चलो थर्ड क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स इन ओडिशा industrial development in Odisha consider the following statements. India's first commercial scale coal to ammonium nitrate complex was approved to be set up at Lakhanpur. The project is located within the Sundargarh district of Odisha. प्रथम इंडिया रो प्रथम कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स जोटा कि एबे लखनपुर रे सेटअप हेची एंड सेकंड स्टेटमेंट कहूँ जो प्रोजेक्टा कौटी ना सेटा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रही कह कौन हम आंसर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स रिलेटेड ओडिशा इकोनॉमी रिलेटेड गोटे क्वेश्चन एंड वेरी इंपोर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन ओपीएससी प्रीलिम्स कह मते आउट भी आउ गोटे इंपोर्टेंट कि एटा इंडिया फर्स्ट ऑफ काइंड थिंग्स है ना इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स ओके कह कौन हम आंसर यार D both 1 and 2 स्वागतिका डोरेमन भी बोथ लखनपुर टा कोठी अछि C 2 only the project is located within the Sundargarh district Subhashri unfortunately you all are incorrect because the first statement is correct India's first commercial scale coal to ammonium nitrate complex was approved to be set up at Lakhanpur, but Lakhanpur is in Jharsuguda district. है ना Sundargarh district रे नुहा. So second statement is incorrect. Then hence answer is only one. That is A. A है ना कहीं भी A answer देलो नहीं, but A हो जी answer. ठीक है जी. Okay, जीबा next question. चलो ओके नो इशू चलो है ना लखनपुर मन रखिए झारसुगुड़ा इंपोर्टेंट झारसुगुड़ा एटा प्लांट फर्स्ट टाइम पे एस्टाब्लिश हो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन झारसुगुड़ा यस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन in April Honorable President Draupadi Murmu visited Raulkela to inaugurate several key infrastructure upgrades, which Apex Educational Campus hosted the president for these institutional updates. Hela, ebe recently president kara visit heitla Odisha ko and she went to Raulkela. So and there both kichi several key infrastructure upgrade भी hela se गुडा को president inaugurate कले hela तो कोठी को कैंपस रे होस्ट हेतिले गरम रे आंसर भूली होची बाबा गरम रे एग्जाम भी दबो सेठी एठी भूलेले चलिबो सेठी भूलेले चलिबोनी हला जून 7 रे एतिकी भी गरम होतबो गुळी गुळी भी होतबो सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड राइट very good Doraemon it is NIT Raulkela was hosted the program है ना where President Draupadi Murmu inaugurated several key infrastructure projects in Odisha. Okay, it is NIT Raulkela. Very good. NIT Raulkela it is, है ना? BPUT Government Autonomous College no, Raulkela Institute of Management Studies no, it is NIT Raulkela. Okay, चलो next question. Yes, Vijay, NIT it is. Next question says, consider the following statements regarding digital census. तो मैंने सब जानी थी वो एबे रिसेंटली सेंसस होबा को जाउची एंड चलीची इट इज ऑन प्रोसेस एबे तो जनगणना डोर टू डोर हेलानी बट ता पूर्व फर्स्ट जतले ओडिसा रे स्टार्ट हैला डिजिटल सेंसस स्टार्ट हैला डिजिटल सेंसस ऑपरेशन इन ओडिसा इज अपडेटेड इन अप्रैल कौन फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची डिजिटल सेंसस को नेकी क्वेश्चन ओडिसा हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू द अर्ली फेज ऑफ स्टेट chosen for the rollout of digital self enumeration and Dr. Shailendra Narayan Olli is anchoring these execution steps as the director census operation for Odisha
कौन हम को ओडिशा has been integrated into the early phase of the states chosen for the rollout of digital self enumeration, right or wrong? And second statement कहूँ डॉक्टर शैलेंद्र नारायण अल्ली होचंती सेंसस ऑपरेशन फॉर ओडिशा रो डायरेक्टर, ठीक कि नहीं कह, ठीक कि नहीं कह? कौन कौन आंसर कौन देखो तुम मैंने भी जानिच कि ओडिशा रे फर्स्ट अर्ली फेज ऑफ रोल आउट होइछि डिजिटल सेल्फ आसुनी अच्छा अच्छा हो ठीक अछि नॉइस 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 सी वन ओनली यस यस स्वागतिका ना हाँ स्वागतिका यू आर राइट yes you not it is maybe it is right first statement is correct odisha has been integrated into the early phase of states chosen for the rollout of digital self enumeration तमन देखिथिबो बहुत लोग सेतेबेले स्टेटस दउतले कि हमें डिजिटली हमें निजु को सेंसस रे निजे सेल्फ एनुमरेशन करी पारिबा हैला एंड about the director of census operation of india for odisha it is not dr shailendra narayan ali it is nikhil पवन कल्याण जी आईएस अच्छा आमर सी होचंती यार डायरेक्टर ओके अच्छा डोरेमन ओके ठीक अच्छे नो इशू इट इज निखिल पवन कल्याण ओके आई होप समस्त को बुझा पड़ी बिकज तुमने जानिछ सेंसस ऑपरेशन पाई डिजिटल सेल्फ एनुमरेशन टा ओडिशा एतरे अर्ली फेज रे काम करिछि तापरे एबे डोर टू डोर काउंटिंग चली है ना and it is making it one of the initial states selected for the digital census process ना एटा भी जानि था कि डिजिटल सेंसस फर्स्ट ओडिसा रे गोटे इनिशियल अलगा स्टेट माने करि नथिले जेबे ओडिसा स्टार्ट करथिला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements regarding the cultural and heritage sites of odisha highlighted in april ओडिशा रो कल्चरल और हेरिटेज साइट्स को लेके गोटे क्वेश्चन द कल्चरल स्ट्रीट कार्निवल निमापड़ा पथ उत्सव वाज होस्टेड इन द खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रघुराजपुर विलेज ग्लोबली एक्लेम्ड फॉर इट्स पट्टचित्र हेरिटेज इज लोकेटेड विद इन द पुरी डिस्ट्रिक्ट को लेके क्वेश्चन पचारे सिमिलर क्वेश्चन गोटे आमे कर देलेनी सो विल नॉट टेक मच टाइम इन दिस क्वेश्चन आई होप तेरे समस्त ठीक आंसर देबे यस स्वागतिका वेरी गुड इट इज 2 बिकॉज रिसेंटली आम पढ़े निमापड़ा पथ उत्सव नॉट इन खोर्धा डिस्ट्रिक्ट इट इज इन पुरी डिस्ट्रिक्ट है एंड रघुराजपुर विलेज जोटा ग्लोबली एक्लेम होती पट्टचित्र एंड इट इज नाउ ए टूरिस्ट विलेज तो यहाँ कौटी ना पुरी डिस्ट्रिक्ट इट इज करेक्ट सो डी आंसर इज डी वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस यस वेरी गुड सत्यजित वेरी गुड समस्त ठीक अच्छे बाबा सत्यजित केते आंसर दब डी 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 चलो ठीक अच्छे मुझे कहली पा ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम ट्रैकिंग इन ओडिशा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इकोसिस्टम ट्रैकिंग जो होची ताकू नै कि क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची चिलिका लेक होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट एवर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन द चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए डिप्लॉयड सोलर पावर्ड इको cruisers to minimize chemical and sound pollution in the ecosystem को स्टेटमेंट करेक्ट अछि को स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि मते को चिलिका को नहीं कि गोटे क्वेश्चन चिलिका इज ए वेरी इंपोर्टेंट थीम है ना इन ओपीएससी अगेन एंड अगेन OPSC is asking questions on Chilica. So मते कहो कि इकोसिस्टम ट्रैकिंग एबे जो हेची तो चिलिका लेक होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग फर्स्ट designated as India's first ever wetland of international importance under the Ramsar Convention. First ever माने Ramsar Convention रो इंडिया रो फर्स्ट wetland चिलिका ए कहूची से फर्स्ट स्टेटमेंट
Subhasri B, neither 1 nor 2. Satyajitra D, both statements are correct. Swagatika is first statement is correct. अच्छा चिलिका CDA deployed solar power eco cruiser तो एबे हेइछि परा इलेक्ट्रिक बोट हेइनि इको क्रूजर जो एबे हेइनि सेटा इको इलेक्ट्रिक बोट सेटा बा सोलार पावर्ड क्रूजर एबे रिसेंटली रिलीज हिछि. It is correct, it is also correct, both the statements are correct. चिलिका तुम जानिछ इंडिया रो फर्स्ट एवर वेटलैंड हला केबे हितिला ना अक्टोबर 1 अक्टोबर 1981 रे चिलिका लेक वाज वेटलैंड. हाँ कौन 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 हाँ हाँ भीतर कौन के भी वेटलैंड किंतु yes 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 हाँ नहीं एटा फर्स्ट एवर इंडिया रो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस जोटा रामसर कन्वेंशन हेतिला फर्स्ट हेतिला चिलिका एंड क्योलादेव दीटा को एका संगे नथिला. क्योलादेव जोटा राजस्थान रो दीटा को एका संगे वेटलैंड फर्स्ट जे कि रामसर कन्वेंशन रे एंट्री हेतिला 1981 रे बोथ आर इन सेम डेट. नो नो इशू सुबश्री भूल हो कौन है मुझे अच्छी तुम कहया किसी असुविधा नहीं भूल हो भूल तो जान एवं जान एग्जाम पढ़ले एग्जाम रे भूल कर ना. yes yes स्वागतिका यू आर राइट बट इट इज फास्ट एवर है ना एग्जाम रे भूल करिवार नाही एठी जेते भूल कले भी चलिबो किछि असुविधा नाही. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तमन को स्क्रीन रे व्हिच पब्लिक सेक्टर माइनिंग जायंट heavily operational in Odisha's copper and iron ore belt. Copper और iron ore belt received the National Ecological Excellence Award April में मिली. National Ecological Excellence Award कहाँ को मिली for its green belt restoration in Jaspur cluster. जाजपुर क्लस्टर रे तार ग्रीन बेल्ट रिस्टोरेशन पे कहाँ को मिली नेशनल इकोलॉजिकल एक्सीलेंस अवार्ड कहा को मिली कुआर ओएमसी एनएमडीसी सेल और नाल्को नेशनल इकोलॉजिकल ओएमसी को एंड एनएमडीसी सेल और नाल्को ये चार्टा भर कहा को मिली नेशनल इकोलॉजिकल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 रे मिली. सी भी केवल जाजपुर क्लस्टर जो अच्छे ओडिशार कपर और आयरन ओर बेल्ट सेठी ग्रीन बेल्ट रिस्टोरेशन काम से करी ग्रीन बेल्ट रिस्टोरेशन ए समस्त ओएमसी वेरी गुड इट इज ओएमसी करेक्ट आंसर इज ओएमसी है. ओएमसी कौन करी ना ड्रोन असिस्टेड सीड बॉम्बिंग करी जो ग्रीन बेल्ट केमिति करी कौन करी गोटे काम कर ड्रोन असिस्टेड सीड बॉम्बिंग कराई एंड मियावाकी सिस्टम मियावाकी डेंस फॉरेस्ट मियावाकी डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करी. मियावाकी डेंस फॉरेस्ट तुम जानिच इट इज ए जापानीज टेक्निक जापानीज टेक्नोलॉजी हाँ कि जो कौन करा जाए ना प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर रे प्रत्येक स्क्वायर मीटर रे एवरी स्क्वायर मीटर रे 2 to 4 प्लांट लगा जाए 2 ରୁ 4टा प्लांटेशन करा जाए. ड्रोन असिस्टेड सीड बॉम्बिंग कौन कि गोटे गोटे सीड बॉल सब एमती कर दिए जाए सब मंजी को देकी एमती गोटे गोटे बॉल कर एंड ड्रोन ताको कैरी करके चारियाडे बॉम्बिंग करे तो सीड पड़ला हतर वर्षा होला पर पानी पड़ी से प्लांट होला है. दैट इज सीड बॉम्बिंग एंड दैट इज द मियावाकी टेक्नोलॉजी है. बोथ आर इंपोर्टेंट एंड ओएमसी से जेतु करूची एटा नेशनल इकोलॉजिकल एक्सीलेंस अवार्ड से पाई. हाँ ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन रे The state-run Chilika Development Authority (CDA) deployed a fleet of specialized solar power eco cruisers in April.
What ecological designation was given to Chilika Lake as India's first ever site under the international convention? Chilika status कौन पचाची biosphere reserve ना Ramsar site ना World Heritage site ना national park? Easy question हमें तबे करिले तो तर किछ हाँ Ramsar site, so it is very easy question. Okay, B चलो next question. Easy question आपको नहीं किसी बेसी डिस्कस करिबानी. Next question को सीधा जिबा. A state of the art millet experience center was inaugurated in April by the Department of Agriculture to promote nutritional security. है ना? Which district is recognized as the leading champion of the Odisha millet mission? Odisha millet mission ର leading district कोटा? एबे गोटे स्टेट ऑफ आर्ट मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर खोला हिची. कोठी खोला हिची आ सेटा माने आरो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट किए डिस्ट्रिक्ट सॉरी नॉट स्टेट. Spiker, yes, Koraput, it is Koraput रे खोला है जी. समस्त करो बी तो यस. सो तो माने में जानी छो ओडिशा मिलेट मिशन रो सब जो जदी कि माने मिलेट मिशन को कंट्रीब्यूट जदी कि अधिक करूची बा को डिस्ट्रिक्ट जदी अधिक मिलेट प्रोड्यूस करूची दैट इज कोरापुट. ओके चलो ठीक है करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. The Handlooms and Textiles Department of Odisha granted a special design modernization layout to the Maniyabandha handloom cluster. Maniyabandha is famous for weaving which GI tag textile pattern? Maniyabandha ta को pattern रे? कोटपाट पैटर्न कि संबलपुरी बांध इकत पैटर्न कि खंडुआ पाट पैटर्न कि बोमकाई सिल्क रो पैटर्न? कि कोई परियो जो माणियाबंध हैंडलूम्स क्लस्टर अच्छी बा माणियाबंध जो शाड़ी सेटा को पैटर्न आउ या भितर माने सब तो जीआई टैग पाई जीआई टैग टेक्स्ट को जीआई टैग टेक्सटाइल पैटर्न रे माणियाबंधटा जाउची. कोटपाट संबलपुरी खंडुआ बोमकाई. बहुत इजी क्वेश्चन तो माने पटापट गुड़ा का आंसर दबा कथा. बी 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 संबलपुरी बांध हे डोरेमन कौन लिखला खंडुआ एकात. अरे माणिया बंध हूँ खंडुआ पैटर्न रे. खंडुआ पाट किए आमर जगन्नाथ कटक डिस्ट्रिक्ट जय जगन संबलपुरी बांध नाई नाई माणिया बंध पाट कहते खंडुआ पाट पैटर्न ने सेटा है जगन्नाथ पिंधती खंडुआ पाट माणिया बंधटा से पैटर्न रे खंडुआ पाटर पैटर्न है. चलो इट इज सी जो मैंने भी सी कौच आंसर खंडुआ पाट. वेरी गुड. ओके चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. 12th number question. Consider the following statement regarding the घरियाल conservation measures discussed. जो घरियाल कंजर्वेशन मेजर निया जाइछि ताकू नेकी क्वेश्चन पचारछि. स्टेटमेंट देछि. फर्स्ट स्टेटमेंट कहूछि द सातकोशिया गार्ड सेंचुरी along the महानदी सिस्टम सर्व एज ए प्रीमियर नेचुरल ब्रीडिंग एंड रियरिंग एनवायरनमेंट फॉर घरियाल्स इन ओडिशा. हला सातकोशिया गार्ड सेंटर जोटा सेटा ब्रीडिंग सेंटर फॉर घरियाल्स. घरियाल्स आर structurally characterized as specialized fish eating crocodiles with a elongated snout. कोटा आदर करेक्ट को ए दुटा स्टेटमेंट भीतर कोटा ठीक अछि को. सातकोशिया गार्ड्स रे घरियाल ब्रीडिंग सेंटर अछि आ घरियालटा केमती देखिया को बा केमती सेटा ना गोटे फिश ईटिंग क्रोकोडाइल एंड तार गोटे एलोंगेटेड स्नॉट अछि. 1 and 2 yes correct. ओके ऑल ऑफ यू करेक्ट. इट इज करेक्ट. सातकोशिया जो गंड अछि हमर सेठी सेंचुरी अछि सेठी नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर होछि फॉर घरियाल्स बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल प्रो एनवायरमेंट सिचुएशन. And gharials are fish-eating crocodiles with a elongated snout. Yes, it is critically endangered species. Very good. Chalo, next question.
The Department of Higher Education in Odisha launched an open access e-library platform. Open access e-library platform जोटा कि एप्रिल ହେଇଛି for undergraduate civil service aspirants. What is the name of this portal? It is very important. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ क्वेश्चन ଟା ଆସିବ ହେଲା अंडर ग्रेजुएट जो मैंने ଏବେ कॉलेज पढुଛନ୍ତି सिविल सर्विस प्रिपेयर କରୁଛନ୍ତି ग्रेजुएट ହେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गोटे ई लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म लॉन्च करछि कोल प्लेटफॉर्म सेटा विद्या ओडिशा मो पाठगार ज्ञान पर्व मेधा विकास को जोटा कि एबे हेछि तमरो ई लाइब्रेरी फॉर अंडर ग्रेजुएट सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स डी मेधा विकास स्वागतिका डी डोरेमोन रो सी ज्ञान प्रभा बाकी बाकी पिला माने भी आंसर दियो इट इज ज्ञान प्रभा ऑप्शन सी है ना एटा मन रखियो जो ई लाइब्रेरी लॉन्च करछि गवर्नमेंट लॉन्च करछि जेतो इट इज इंपोर्टेंट ओके नो इशू गवर्नमेंट जेतो लॉन्च करछि पुनी सिविल सर्विस एस्पिरेंट मन पय तेनु दिस इज इंपोर्टेंट इट मे आस्क्ड इन क्वेश्चन इन एग्जाम है ना ज्ञान प्रभा है ना राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एप्रिल ए कोन हिची ना गोटे एक्सटेंसिव पैलियोलिथिक स्टोन टूल डिपॉजिट्स वर डिस्कवर्ड during an archaeological excavation by Utkal University at which historical site बहुत बहुत important question जते बेले कोठी गोटे archaeological excavation होता है एंड केतरु किछ फाइंडिंग्स मिली थाए किछ डिस्कवर हेई थाए that is very important शिशुपालगढ़ ललितगिर कुलियाना रत्नगिर किछ स्टोन टूल पैलियोलिथिक स्टोन टूल डिपॉजिट सेठी मिली छी ना को हिस्टोरिकल साइट रो एबे ए सब जिनस मिलछि शिशुपालगढ़ ललितगिर कुलियाना रत्नगिरी सुनिथिबो न्यूज रे तो थिला सुनिथिबो समस्त आई होप ए शिशुपालगढ़ नो इट इज कुलियाना है जोटा कि तमरा मयूरभंज रे अछि ओके कुलियाना जोटा कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे अछि आ सेठी कोन मिली छी स्टोन एज चॉपर मिली छी एंड हैंड एक्स रिलिक्स मिली छी हैंड एक्स जोटा हाथ जो हाणते जोटा तार रिलिक्स मिली छी हला ए जो जिनस टूल सब मिली एंड इट इज फ्रॉम कुलियाना मयूरभंज हाँ बस वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to spatial data and academic infrastructure changes in April consider the following statement a specialized budgetary framework was approved to scale up the Biju Patnaik satellite center located at Chandipur Baleshwar IIT Bhubaneswar signed a strategic pact with the state agriculture department to deploy remote sensing technology to track coastal soil salinity कौन हम आंसर ये को गोटे बजेटरी स्पेशल बजेटरी फ्रेमवर्क करा जाइछि एंड अप्रूव हेछि टू स्केल अप द बिजू पटनायक सैटेलाइट सेंटर जोटा चांदीपुर बालेश्वर अछि ना चेंज हितला बिजू पटनायक सैटेलाइट सेंटर आ गोटे पूछी कि आईआईटी भुवनेश्वर साइन करछि गोटे स्ट्रेटेजिक पैक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सहित रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड टू ट्रैक कोस्टल सॉइल सैलिनिटी को ट्रैक करिया पे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज करियो तो कोटा करेक्ट बोथ ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट वेरी गुड सॉरी बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट हैला
एटा गोटे हेची बिजू पटनायक सैटेलाइट सेंटर पई बजेटरी फ्रेमवर्क हेची एंड आईआईटी भुवनेश्वर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोस्टल सॉइल सैलिनिटी पई रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च करछथि ओके बोथ आर करेक्ट वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन तुम स्क्रीन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल्स ए जोटा हेची वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा भी गोटे कौन हम आंसर को फर्स्ट स्टेटमेंट कहूँ द न्याय रेखा secure blockchain architecture was launched to manage revenue court proceedings and protect land records from manipulation कोटा न्याय रेखा कहूँ and the Swami Vivekananda National Institution of Rehabilitation Training and Research SBINTAR is located at Burla Sambalpur ए दुटा स्टेटमेंट भीतर कोटा ठीक और कोटा भूल मते को लैंड रिकॉर्ड मैनिपुलेशन को प्रोटेक्ट करबा पई और रेवेन्यू कोर्ट रो प्रोसीडिंग्स को मैनेज करबा पई गोटे ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर तैयारी करा जाय जे दैट इज न्याय रेखा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन पचारि पारे एंड एसबिनतार जोटा अछि स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग रिसर्च जोटा कि बुर्ला संबलपुर रे अछि कोन हबो को why it is buffering today I don't know why it is buffering कौन हम को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आको तुम मिस कर परिबोनी को कटक yes it is in wrong statement not in बुर्ला संबलपुर it is in कटक उलटपुर ना आई होप ठुकिए स्टूडेंट थिबे कि अलुमिनी थिबे एसबिन तार ओलटपुर रेटा पये एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हला लैंड रिकॉर्ड मैनिपुलेशन को प्रोटेक्ट करिया पे रेवेन्यू कोर्ट प्रोसीडिंग्स को मैनेज करिया पे गोटे ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर तैयारी करा जाय पोर्टल दैट इज न्याय रेखा है ना इट इज वेरी करेक्ट एंड वेरी इंपोर्टेंट आल्सो इट मे आस्क्ड इन ओपीएससी प्रीलिम्स ओके चलो Next question. With reference to the transportation and historical milestones of Odisha, consider the following statement. है transportation and historical milestone. First statement कौन कहूँ ना National Waterway 5 जो अच्छे NW5 integrate the delta system of Brahmani, Kharsua, Matai rivers to connect industrial zones like Talcher with eastern ports. Second statement कहूँ the corporate headquarters of East Coast Railway zone is located at Visakhapatnam. कोटा इधर correct और incorrect मते को NW5 कोडी को कहा को कनेक्ट करूची नेशनल वाटरवेज 5 कहा को कनेक्ट करूची को रिवर सिस्टम को कनेक्ट करूची नेशनल वाटरवे 5 एटा समस्त जानि जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर ईस्ट कोस्ट रेलवे तो विशाखापट्टनम नुह यार हेडक्वार्टर कोठी भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे रो हेडक्वार्टर तो भुवनेश्वर हा कि नहीं विशाखापट्टनम नुह तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड नेशनल वाटरवेज 5 को रिवर रे ब्राह्मणी खरसुआ मताई तीन टांग रिवर जोटा कि तालचेर को कनेक्ट करछ पोर्ट सहित हला दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर इज वन ओनली यस वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में तुम मनकर कौन हम कह with reference to the Konark Sun Temple को लेके क्वेश्चन हाँ consider the following statement. First statement कहूँ it is designated as a UNESCO World Heritage Site. It was built by King Narasimha Deva I of the Eastern Ganga dynasty in the 13th century. Third statement कहूँ the Jagamohan Assembly Hall of the temple is fully intact and is the only remaining structure. Which of the following statements are correct? ए क्वेश्चन तो कहार भूल हवा कथा नुह देखिबा कि आंसर दउची कोन नै कहार आंसर ठीक होची देखिबा स्वागतिकार ए सत्यरो डी 1 2 3 सत्य डी थरे कहले म जानली डी ठीक अछि ओके 1 and 2 स्पाइकर
बाकी डोरेमन कौन खाइया को पळेलो ना खरा बेले खाई देकी सोई पइलो 1 and 2 yes very good जो माने भी 1 and 2 कहूछो you all are correct because it is a one UNESCO World Heritage Site it is right and Eastern Ganga Dynasty 13th century एटा built हेतिला by King Narasimha Dev लांगुला नरसिंह देव जो जो हम जानि छथि है ना and Jagabhan Assembly Hall जोटा अछि it is the intact person but this is not the only remaining structure there are other things are in Konark temple खाली कोन गलो जगमोहन को देखो अलगा दिन से भी तो अछि it is not the only remaining structure हैला it is not the only remaining structure very good very good very good it is 1 and 2 चलो next question टिके स्पीड अप करो तो माने जल्दी जल्दी आंसर दियो तो सो दैट हम टिके स्पीड अप करबा डिस्कशन टाको नेक्स्ट क्वेश्चन दिसु तो मन को स्क्रीन रे कोन पाई मजरे मजरे टिके बफरिंग हो जे मु जानि पमनी नाट्य मंदिर हाँ नाट्य मंदिर अच्छे बहुत किसी जिनस भी अच्छे सिंह बाघ द्वारा केते कौन जिनस अच्छे ब्रिक रो जो स्ट्रक्चर से भी बहुत किसी जिनस अच्छे ओके चलो 19 नंबर क्वेश्चन यस चलो ठीक है द ओडिशा साहित्य एकेडमी अनाउंस इलाइट फेलोशिप अवार्ड फॉर वेटरन्स इन अप्रैल हु वाज द फर्स्ट फॉर्मल रिसिपिएंट ऑफ सेंट्रल साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर ओडिशा लिटरेचर बैक इन 1955 1955 रे फास्ट ओडिशा रो सेंट्रल साहित्य एकेडमी अवार्ड किए पाइथिले सेंट्रल साहित्य एकेडमी अवार्ड किए पाइथिले वेरी गुड जो माने गोपीनाथ महांती कहउछो यस करेक्ट कोन को लेखा पाई तांकर पाइथिले को नोवेल पाई गोपीनाथ महांतींकर गोटे फेमस नोवेल गोटे फेमस नोबेल पाई से पाइथिले साहित्य एकेडमी अवार्ड कि कहि परिबो अमृतर संतान हला तांकर गोटे फेमस राइटिंग अछि अमृतर संतान यस वेरी गुड स्पाइकर जे कि जोति पाई से गोपीनाथ महांती फर्स्ट कल्चरल साहित्य एकेडमी अवार्ड पाइथिले 1955 रे परजा नहीं इट इज अमृतर संतान यस वेरी गुड जो माने भी कहउछो शुभम यस 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 अमृतर संतान भूल लिखी कि मु स्पेलिंग अमृत एटा हबो कि अमृतर संतान हो चलो प्रोनाउंसिएशन तो ठीक अछि ओके आगो बढ़िबा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन The Revenue and Disaster Management Department declared that all revenue court proceedings will adopt a secure blockchain ledger. What is this digital case ecosystem called? कोटा हबो को नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन एबे रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट गोटे रेवेन्यू कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स को गोटे ब्लॉकचेन लेजर अडॉप्ट करिया को कहि छथि कोटा से डिजिटल केस इकोसिस्टम ता कोन कोन को जाउची जो ब्लॉकचेन लेजर ता को कोन को जाउची ई भूमि कोर्ट धरणी लेख न्याय रेखा सूर्यकेतन सी न्याय रेखा यस करेक्ट एबे हमें जस्ट कले न्याय रेखा विषय में जानिले ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस्ड द रोल आउट ऑफ फेज 1 ऑफ द सेंसस 2027 एबे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस कले व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू ऑफिशियल मैस्कट्स अनवील्ड फॉर दिस डिजिटल सेंसस ऑपरेशन दिटर मैस्कट अनवील करछथि कोन कोन से मैस्कट करना दिटा मैस्कट यस 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 ओके वेरी गुड हाँ दुटा मैस्कट रिलीज होइछि फॉर फेज 1 सेंसस कौन से मैस्कट करना
प्रगति एंड विकास, गति एंड शक्ति, डिजिटल एंड भारत, संकल्प एंड सिद्धि। प्रगति एंड विकास, वेरी गुड। प्रगति एंड विकास, प्रगति एंड विकास कौन? प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट है जोटा कि करा जायछि टू रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेल्फ एन्यूमरेटिंग डाटा कलेक्शन सिस्टम। ओके, वेरी गुड, प्रगति एंड विकास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। India's very first certified water neutral railway depot, saving over 1.6 lakh liter of fresh water daily through phytoremediation, was commissioned in April. What is the name of this depot? India's prathama water neutral railway depot. So very important question. जी की 1.6 lakh liter fresh water daily save करूची through phytoremediation system. Okay, then what is the name of this depot? कोठी होची सेटा? साकुरबस्ती कोचिंग डिपो दिल्ली, कंकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद, वाडी बंदर डिपो मुंबई, यशवंतपुर डिपो बेंगलोर। कोठीटा हेची प्रथम वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो इंडिया रो फर्स्ट कोठी? रंजित बी, कंकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद। वेरी गुड, इट इज करेक्ट, इट इज कंकरिया कोचिंग डिपो जोटा कि इंडिया रो प्रथम वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो, वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो हेची हैला जे कि दिन को 1.6 लाख वाटर फ्रेश वाटर को सेव करूची। ओके, फाइटोरेमेडिएशन प्रोसेसटा कोन? गोटे एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्लीन अप टेक्निक हैला जोतरे कि माइक्रोब्स सॉइल माने ग्रीन प्लांट्स रो माइक्रोब सॉइल माइक्रोब्स की यूज कराय कि इम्प्युरिटीज बा कंटामिनेटेड जहाँ अछि ताको कौन क्लीन करा जाए, रिमूव करा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, समस्त बढ़िया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड ए हिस्टोरिक एडिशन टू इंडियाज वेटलैंड नेटवर्क, डिक्लेयरिंग शेखाझिल बर्ड सेंचुरी एज द नेशंस 99th रामसर साइट। इन व्हिच स्टेट इट इज लोकेटेड? शेखाझिल बर्ड सेंचुरी जोटा कि तुम जानिଛ इंडिया रो 99th रामसर साइट, तो एटा को डिस्ट्रिक्ट रे अछि? बिहार, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश। को डिस्ट्रिक्ट रे अछि? शेखाझिल बर्ड सेंचुरी एबे जोटा रिसेंटली, यस वेरी गुड, इट इज इन यूपी। अच्छा 99th 99 एटा हला रामसर साइट, 98 कोटा? नाइंटी एथ रामसर साइट कोटा थिला? नाइंटी एथ रामसर साइट कोटा कि कह परियो? नाइंटी एट कोटा पाटना बर्ड सेंचुरी कोड सेटा? पाटना बर्ड सेंचुरी कोठी स्पाइकर? वेरी गुड, जहाँ तार मन अच्छी। पाटना बर्ड सेंचुरीटा कोठी? पाटना बर्ड सेंचुरी कोठी? यूपी, वेरी गुड। 97th टा कोठी? सॉरी 97th टा कोठी? हाँ 97th टा कोठी? यूपी, ठीक अच्छे। 97th कोठी? 97th रामसर साइट आमर इंडिया मन रखी था लास्ट एटलिस्ट 5टा। छारीदांड जोटा कि तमर कोठी? कच्छ, गुजरात एंड तुम गोटे सैलाइन वेटलैंड छारीदांड हूँ सैलाइन वेटलैंड। 96th टा कोठी अछि? कोपरा रिजर्वर जानिଛ? कोपरा रिजर्वर कोड सेटा? बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ है ना 95th कोठी सिलिसर लेक्स सिलिसर लेक्स कोठीटा राजस्थान हाँ नहीं तो ये है तुम 99 तो एटलिस्ट ये पांचटा मन रखी था लास्ट 5 मे भी सिंक्रोनाइज हिसाब से पचारि दे पारे कि कौन बट लास्ट पांचटा तुम्हें मन रखा पड़ो है करेक्ट समस्त ठीक अच्छे जी आग को नेक्स्ट क्वेश्चन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन the Union Ministry of Home Affairs approved a historic administrative restructuring creating 5 new districts within which union territory एबे को यूटी रे होम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नुआ 5टा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करछथि को यूटी रे हिची सेटा जम्मू एंड काश्मीर पुडुचेरी लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार कोठी हिची को यूटी रे 5टा नुआ डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हिची को टिके जल्दी जल्दी आंसर दियो को यूटी रे 5टा नुआ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट माने तैयारी हिची एबे लद्दाख वेरी गुड इट इज लद्दाख जोटा कि तमरो नुब्रा डिस्ट्रिक्ट तमरो साम बोली गोटे डिस्ट्रिक्ट हाँ कि तापर तमरो गोटे जस्कर है ना आ गोटे तमरो द्रास आ गोटे तमरो हला छांगठांग है ए नुआ 5टा डिस्ट्रिक्ट लद्दाख रे क्रिएट कराई छेबे ओके यस वेरी गुड ऑल ऑफ यू समस्त ठीक आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा 25 The Ministry of Electronics and Information Technology MIT notified the online gaming rules 2026 एबे गोटे नुआ आछि online gaming rules आस्तिला ना जब अप्रैल what is the central mandatory feature of this guidelines central mandatory feature टा आधार कोन banning all international gaming developers from Indian domains mandatory verification by independent self regulatory bodies SRBs to ban wagering on outcomes imposing a uniform 50% flat tax on all gaming downloads replacing real money transactions entirely with central crypto tokens कोटा इधर करेक्ट ऑनलाइन गेमिंग रूल्स जो इतला मेन सेंट्रल मैंडेटरी फ्यूचर तार कोटा मेन सेंट्रल फ्यूचर मैंडेटरी फ्यूचर तार कोटा एबे ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 आसी कोन सेटा तार मैंडेटरी फीचर्स ता कोन होबो एबीसीडी भितरु आंसर फटाफट दियो ठीक है ये ए पे दूच डी बी it is B mandatory verification by independent self regulatory bodies to ban wagering on accounts हला accounts जो wagering होचे ताको ban करियो गोटे independent body mandatory verification करिवो गोटे independent body द्वारा हबो हला बी ओके जो मैंने बी दौचे वेरी गुड ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी रिव्यू इन एप्रिल एबे रिसेंटली आरबीआई रो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी रिव्यू बसतिला सेतेले रेपो रेट सेंट्रल बैंक ऑप्टेड टू मेंटेन द पॉलिसी रेपो रेट एट व्हाट परसेंटेज एबे रेपो रेट केते पचारछि बेसिकली रेपो रेट केते 4.5% 5% 5.25% 5.5% प्रथम कथा होला मते कहो कि रेपो रेट केते एंड मते इटा कहो लास्ट जो मीटिंग हेतिला बा लास्ट जो रिव्यू हेतिला तार जो रेपो रेट थिला इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और स्टेडी कोडा ठीक ठीक अछि सुबह नो इशू किछि असुविधा नै किछि लेखो यस किछि असुविधा नै मो क्लास रे एवरीथिंग इज ओके everything is accepted चलो
वेरी गुड इट इज सी 5.25%. वेरी गुड समस्त ठीक अच्छे मत खाली यहाँ कह हाँ हाँ जो मैंने भी 5% 5.25 कौच करेक्ट समस्ते मत खाली यार आंसर दियो लास्ट रिव्यू मीटिंग रू इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और स्टडी क्वेश्चन तुमको मे भी डायरेक्ट रेपो रेट न पचारि पारे बट ट्रेंडिंग पचारि दब रेपो रेट इज इन इंक्रीजिंग जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर और इट इज इन स्टडी जहाँ भी किए कहि परिबो बढ़ी ना कमी ना स्टडी अच्छी इट इज स्टडी लास्ट टाइम भी से ही थिला लास्ट टाइम भी से 5.25% ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड इन्वेस्टर प्रोटेक्टिव एंड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम एबे गोटे करछि कोन ता ना कोन सेबी एबे लॉन्च करछि नेशन वाइड इन्वेस्टर प्रोटेक्टिव एंड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम ता ना कोन मिशन जागरूक धनलक्ष्य निवेश मित्र सुरक्षा संचय कौन अब आंसर नो 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 इट इज डिक्रीजिंग नो कस्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन सेबीर कौन हम कह सेबीर आंसरटा दियो गोटे कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड इन्वेस्टर प्रोटेक्टिव फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च कराई तार ना कौन यस इट इज मिशन जागरूक है ये मिशन जोड़ाक करी आरबीआई मिशन सेबीर मिशन एग्जाम रे पचारे निवेश मित्र नुह मिशन जागरूक मेन काम कौन ना टायर 2 टायर 3 सिटीज को टार्गेट करेंगे टू एजुकेट अबाउट द रिटेल इन्वेस्टर है ना म्यूचुअल फंड रिस्क भितर इन्वेस्टिंग विषय ट्रेडिंग रो वोलेटिलिटी विषय साइबर फ्रॉड विषय अवेयरनेस है एजुकेट करने जनरली टायर 2 और टायर 3 सिटीज लोक मानक प्रोग्रामटा लॉन्च कराई जार ना हूँ मिशन जागरूक आउ ये लॉन्च कर सेबी ओल्टे भी पचारि पार मिशन जागरूक जोटा कि लॉन्च होता किए कर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन The Union Cabinet approved a massive 24,815 crore railway multi-tracking project matrix under which constitutional provision or cabinet committee is this cleared? एबे जोड़ा रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है कहा अंडर एटा क्लियर है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एस्टिमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मेन कथा हला कैबिनेट जो अप्रूव करे रेलवे प्रोजेक्ट सेटा को कमिटी अफेयर ताको कोन अप्रूव करे को कमिटी ताको अप्रूव करे इट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ए वेरी गुड जो मैंने भी ये देछ बहुत भल आंसर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जे कि रेलवे प्रोजेक्ट गुडा फंडिंग टाको अप्रूव करे नेक्स्ट क्वेश्चन The Meghalaya State Cabinet approved the official language ordinance 2026 है एप्रिल एटा मेघालय स्टेट कैबिनेट अप्रूव कर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑर्डिनेंस 2026 which two indigenous languages were granted full official status alongside English under this law ऑफिशियल माने मेघालय जो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस है तीनटा लैंग्वेज को दिया जाइए सेठी ऑफिशियली स्टेटस गोटे तो है इंग्लिश है ता सहित आ को दुटा लैंग्वेज को दिया अप्रूव खासी एंड जॉइंतिया गारो एंड हाजो खासी एंड गारो मिजो एंड चकमा सी खासी एंड गारो वेरी गुड प्रधान इट इज खासी एंड गारो हाँ वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हु अज्यूम द चार्ज ऑफ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी एबे रिसेंटली माने अज्यूम कले माने अपॉइंट होइछंती Who assumed the charge as new Vice Chief of the Indian Army in April? Lieutenant General Upendra Dwivedi, Lieutenant General Dheeraj Seth, Lieutenant General N.S. Raja Subramani, Lieutenant General M.V. Suchindra Kumar. एबे किए Vice Chief of Indian Army रे किए हेले? Vice Chief of Indian Army किए एबे अपॉइंट होइछंती? Dheeraj Seth, yes, very good. Lieutenant General
धीरज सेठ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Indian engineering scientist at the IISc Indian Institute of Science developed a breakthrough frog skin inspired medical device. What type of device it is? एबे IISc गोटे frog skin को inspire हेकिना गोटे device launch करछथि. को device सेटा? Biodegradable surgical thread, neuromorphic sensor for tactile artificial limbs, hydrogel dressing for rapid burn recovery, high speed non invasive blood sugar tracker. फ्रॉग रो स्किन रु इंस्पायर हेची सेटा गोटे मेडिकल डिवाइस आ भीतर कोटा फ्रॉग स्किन इंस्पायर्ड मेडिकल डिवाइस. बी न्यूरोमॉर्फिक सेंसर फॉर टैक्टाइल आर्टिफिशियल लिम्ब है ना आर्टिफिशियल लिम्ब पाए एटा करा हेची. वेरी गुड. जो माने बी आंसर देछो करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सी नो बी इंडियन इंजीनियरिंग साइंटिस्ट द आई कोड गला ओके 30 और 31 रिपीट हो जाई आई थिंक ना कौन ओके एटा दुईटा थर हो जाई 32 क्वेश्चन कोड पड़ला ओके मिस प्रिंटिंग हो जाई जेठी. एनीवे ठीक अच्छे 33 को चलो 32 क्वेश्चन में लास्ट को कह तुम चलो 32 रिलेटेड आउ गोटे क्वेश्चन भी अच्छे मुझे कहीदेवी. चलो द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRI launched a massive grassroots talent search project in April targeting 7.5 lakh youth. This marks the entry of sports target programs into which educational network? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोटे मैसिव ग्रासरूट टैलेंट सर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करछथि हैला. तो सेटा कौन? नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स हॉस्टल्स. नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेटा करिछ. हां कोन होबो? ग्रासरूट रो टैलेंट नबा पई एटा गोटे करा हिची. 7.5 लाख यूथ को टारगेट कराएगी. के सी राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल नो इट इज केंद्रीय विद्यालय संगठन. केंद्रीय विद्यालय संगठन जोटे NRI पार्टनर अच्छी केवी सहित केंद्रीय विद्यालय सहित करके से माने गोटे इंडोर टारगेट सेटअप करछन्ते जोतरे ओलंपिक लेवल शूटिंग टैलेंट को ग्रासरूट रु से माने खोजिबे और ताको ग्रूम करेबे है ना. NRI and KV रो पार्टनरशिप. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स announced that which nation emerged as India top trading partner for the recently concluded financial year. 2026 रे सबुटू हाईएस्ट इंडिया रो ट्रेडिंग पार्टनर को कंट्री? US, UAE, चाइना, सऊदी. ट्रेडिंग पार्टनर किए? इंडिया रो सबुठू हाईएस्ट टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 मतलब 2025-26 एरो किए सबुठू टॉप ट्रेडिंग पार्टनर? नो 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 2025-26 पे डिक्लेयर हिची चाइना. यूएस जनरली हमर टॉप हां किंतु नहीं चाइना इट इज चाइना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Senior judicial advocate Menoka Guruswamy made political headlines in April after getting elected. ଏବେ कहार इलेक्शन ହେଇଛି ଆଉ मेनका गुरुस्वामी को हिसाब रे इलेक्टेड ହେଇଛନ୍ତି? चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमिशन ऑफ इंडिया, इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्यूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, जज एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. मेनका गुरुस्वामी ଏବେ कोठी अपॉइंटमेंट नेले बा कोठी से जॉइन ହେଇଛନ୍ତି? मेनका गुरुस्वामी वेरी फेमस पचारि पारे एग्जाम रे.
बी यस इट इज करेक्ट इंडिया प्रथम क्वियर एमपी मेनका गुरुस्वामी जे कि ओथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री published its global military expenditure report April global military expenditure report करछि where does India rank globally on this list global military expenditure report रे इंडिया रो रैंक केते जोटा कि सिप्री करूछि इंडिया रो रैंक केते थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इंडिया रो रैंक केते ग्लोबल मिलिटरी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट सबुठु अधिक माने मिलिटरी रे की एक्सपेंडिचर करछ सेतरे इंडिया रो रैंक केते इंडिया रो रैंक फिफ्थ करेक्ट हला टॉप रे की अछि टॉप रे अछि यूएस सेकंड रे की अछि सेकंड रे अछि तमरा चाइना यूएस रे केते 954 बिलियन डॉलर चाइना रो सेमती 336 बिलियन डॉलर सेकंड थर्ड रे अछि तमरा किए ना रशिया रशिया रो मिलिटरी एक्सपेंडिचर केते 190 बिलियन हला फोर्थ रे की अछि तमरा ना जर्मनी जर्मनी रो एक्सपेंडिचर केते 114 बिलियन हला आउ फिफ्थ रे अछि तमरा किए ना इंडिया जार रैंक एक्सपेंडिचर केते 92.1 बिलियन ओके यस इट इज इंडिया रो रैंक होची फिफ्थ टॉप हैला यूएस आउ इंडिया ऊपर को यूएस चाइना रशिया जर्मनी अच्छा ओके क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Supreme Court of India issued a strict pan-India guidelines to optimize national transit safety. What did these guidelines mandate? National transit safety April कौन सेटा? Banning the physical toll plaza entirely, installing AI-driven arogya vans and automated trauma clinics along all national highways, restricting heavy vehicles to night-only transit, capping maximum highway speed limit at 80 km. National transit safety रे सुप्रीम कोर्ट गोटे पैन इंडिया इशू गाइडलाइंस इशू करछंती कोन गाइडलाइंस रे मेन ये कोन कोन हो आंसर B. Yes, installing AI-driven arogya vans and automated trauma clinics along all national highways रे AI-driven arogya van install करा जिवो and trauma clinic automated trauma clinic install करिया को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करछंती हैला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA approved 14,105 crore Kalai 2 hydropower project in which state it is the strategic green energy project located जो Kalai 2 hydropower project पे लॉन्च करा हला सेटा को मतलब स्टेट रे Kalai 2 hydropower project टा कोठी को स्टेट रे आ एटा को रिवर रे भी मते को को स्टेट रे को रिवर रे हमर Kalai 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च करा हिचे बे सीसीसी अप्रूव करचे सी अरुणाचल प्रदेश यस इट इज करेक्ट इट इज अरुणाचल प्रदेश एंड द रिवर इज लोहित रिवर रे लॉन्च करा जायछि अरुणाचल प्रदेश रे Kalai 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Which iconic administrative campaign was relaunched in April across several state educational wings under the title School Chale Hum? को administrative माने which iconic administrative campaign was relaunched? को state रे relaunch हेइ जेतरे School Chale Hum को state रे बे हेइछि बिहार एमपी राजस्थान ओडिशा School Chale Hum कोठी बे लॉन्च हेइछि जो कैंपेन टा कोठी लॉन्च हेछि स्कूल चले हम
MP Madhya Pradesh to ensure 100% enrollment or to reduce dropout rate. Okay, very good. Next question. The Financial Intelligence Unit India, FIU India, signed an MOU with which national cybersecurity wing in April to curb sophisticated financial frauds? Sophisticated financial जो फ्रॉड गुड़ा होचे ताकू करिया पे फ्यू कहा सहित पार्ट को माने पार्टनरशिप करिजे बुझि परछ त नै सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड तो फ्रॉड किंतु सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड सर्टेन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर सेटा and National Critical Information Infrastructure Protection Center, IB Cyber Cell. Could have answer. FIU India कहा सहित पार्टनरशिप करिछि सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल फ्रॉड को कर्व करिया पाई. Yes, it is I4C, Indian Cyber Crime Coordination Center. I4C सहित पार्टनरशिप करिछि to curb sophisticated financial frauds. Okay. Next question. The Ministry of Defence signed a 975 crore capital procurement contract to acquire advanced troll system, which combat vehicle will be retrofitted with this hardware. Troll system टा कहा सहित सेट को हार्डवेयर एटा लॉन्च करा जिवो को vehicle सहित. Troll system एबे इंडियन मिनिस्ट्री डिफेंस रे प्रोक्यूर कराई छि. एटा कोन एक्चुअली ट्रोल सिस्टम टा कोन प्लस ए भितर कहा से को वेहिकल फिट करा जिवो. T90 भीष्म मेन बैटल टैंक्स, सुखोई Su-30 MK फाइटर एयरक्राफ्ट, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को वेहिकल एटा फिट करा जिवो ट्रोल सिस्टम टा. आ ट्रोल सिस्टम टा कोन INS Vikrant. No. It is in T90 Bhishma main battle tank because troll system कौन हो? एटा गोटे demining vehicle. Demining system. Demining vehicle जोटा कि तमरो लागिबो कोथरे T90 Bhishma main battle tank रे. Okay. चलो. एंटी टैंक माइन फील्ड्स को क्लियर करिया पे एटा करा हो जो माइनिंग डीमाइनिंग दिनसटा एक्चुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर यूनियन कैबिनेट न्यूली क्लियर्ड nutrient based subsidy NBS rates for Kharif 2026 which essential crop nutrient received the highest allocation hike. एबे जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दिया हला को कहा को सबटु अधिक को सब्सिडी कहा माने को क्रॉप न्यूट्रिएंट को अधिक हाइक मिल जे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सल्फर को न्यूट्रिशन को न्यू एटा को मिल जे खंड जो न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर खरीफ को न्यूट्रिएंट्स को अधिक एलोकेशन दिया जाय छै. हाँ लैंड माइन डिटेक्ट करियो वेरी गुड. हाँ इट इज फास्फोरस. फास्फोरस को सबटु अधिक हाइक मिल छै हला न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर खरीफ रे सबटु अधिक प्राइस मिल छै फास्फोरस को. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The government expanded the scope of project monitoring information system PMIS in April 2026. What new groups was integrated into this tracking portal? Government एबे project monitoring information system को expand करूची. तादरे कौन award कराई छी? Retired military veterans seeking re-employment, final year technical students seeking verified PSU interns, organic farming cooperative seeking export clearance, startup applying for space tech launch windows. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इनफॉरमेशन सिस्टम गवर्नमेंट एबल ताको बढ़ई छि तार स्कोप. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इनफॉरमेशन सिस्टम को ग्रुप सेतरे ऐड हिछ इंटीग्रेट हिछ जो एटा गोटे ट्रैकिंग पोर्टल टे. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इनफॉरमेशन सिस्टम की एदरे रहिबे कहा को ऐड कराई छि. यस इट इज बी फाइनल ईयर टेक्निकल स्टूडेंट सीकिंग वेरीफाइड पीएसयू इंटर्नशिप. जो माने पीएसयू रे इंटर्नशिप चाहउछन टेक्निकल स्टूडेंट्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स से माने एतरे ऐड कराई छि हैना प्रोजेक्ट इनफॉरमेशन सानो मिलो. चलो गुड समस्त बहुत ठीक आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अश्विनी बिंदे मेड एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज एबे काना आफ्टर गेटिंग फॉर्मली अपॉइंट अश्विनी बिंदे भी कोठी अपॉइंटमेंट पाई छथि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द फर्स्ट वुमेन कमिश्नर ऑफ
Brihan Mumbai BMC, Mumbai Municipal Corporation, Managing Director of Delhi Metro Rail Corporation, Chief Secretary of Maharashtra. अश्विनी बिंदे एबे कोठी पोस्टिंग पाइछथि अश्विनी भिडे बिंदे ने अश्विनी भिडे एबे कोठी पाइछथि पोस्टिंग अपॉइंटमेंट पाइछथि अश्विनी भिडे बी बीएमसी रो फर्स्ट वुमेन कमिश्नर है जहाँ को कह जाए तुम मेट्रो वुमेन ऑफ मुंबई सी बीएमसी रो फर्स्ट वुमेन कमिश्नर हिसाब से अपॉइंटमेंट होती ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Which historical personality birth centenary was commemorated with national cultural exhibit highlighting the slogan in service of the skies? कहार बर्थ सेंचुरी को कमेमोरेट करा जाउची ए स्लोगन द्वारा कि इन सर्विस ऑफ द स्काईज मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह विंग कमांडर राकेश शर्मा फील्ड मार्शल साम मानिक शाह जनरल केएम करियप्पा कहार बर्थ सेंटेनरी को इन सर्विस ऑफ द स्काईज हिसाब से कमेमोरेट करा जाउची बी नो 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 इट इज ए मार्शल कमांड जो मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह का बर्थ सेंटेनरी को इन सर्विस ऑफ द स्काईज हिसाब से पालन करा स्लोगन अडॉप्ट करा ओके ए आंसर इज ए नॉट बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नासा अचीव्ड ए हिस्टोरिक स्पेस फ्लाइट माइलस्टोन बाय एप्रिल लॉन्च होइजे रिसेंटली by launching which highly anticipated manned lunar flyby mission एबे lunar mission launch करछि कि नै नासा कोड launch करछि Artemis 1 Artemis 2 Apollo next Orion prime नासा एबे कोन launch करछि नासा एबे कोन launch करछि नासा एबे कोन launch करछि Artemis 2 very good Artemis 2 okay चलो next question को जिबा in geopolitical updates from Middle East which two nations entered into a high stakes 2-week temporary ceasefire agreement in April 2026 to allow humanitarian relief paths एबे कहार जो टेम्पोरारी सीजफायर एप्रिल ले हितला एक्चुअली टिके पुराना हे गला न्यूज बट जो है क्वेश्चन दिया है तो हम करदे इट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान जो मैंने जानी ईरान रो वार चली वार पाई ये सब दिन हाँ वार पाई ये सब सीजफायर डिक्लेयर कराइला बट वार उपर तुमको बहुत किसी जिन पढ़ा पड़ो एग्जाम रे वार उपर डेफिनेटली क्वेश्चन आसो ईरान एंड ऑल ता उपर क्वेश्चन आसो मत खाली कह ईरान रो बॉर्डरिंग कंट्रीज किए ईरान रो बॉर्डरिंग कंट्रीज को मन रखिबो हला इराक टर्की जोटा कि तमर वेस्ट बाउंड्री कले आर्मेनिया अजरबैजान जोटा तमर नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री कले तुर्कमेनिस्तान तमर नॉर्थ ईस्ट पट को एंड एपट को रहिले कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हला नो अंडर कि आदर गोटे क्वेश्चन पचरा जाई पारिबो ओके नहीं एप्रिल ले थिला एप्रिल ले तो फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ईरान 2 वीक्स टेम्पररी सीजफायर हला फर्स्ट जो डिक्लेयर थिला तारी ऊपर क्वेश्चन थिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
Which European nation announced a major policy shift in April by introducing completely visa-free airport transit protocols for Indian passport holders? Indians मानक पाई को country completely visa-free airport transit करची? Germany, France, UK, Italy. Visa free, very important question. किए visa free कर देची Indians मानक पाई? Visa free transport अने airport transit. जे नहीं से जाई परिबो का को कंट्री करची? इट इज फ्रांस हला वीजा फ्री एयरपोर्ट ट्रांजिट करा हिची इंडियंस मानक पई फ्रांस वीजा फ्री कर देची ओके इटाली नो फ्रांस फ्रांस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन In April, which country witnessed the end of Viktor Orban's 60 years rule after the opposition secured a sweeping parliamentary victory? को country एबे गोटे end of 16 year rule एबे recently change होईची माने जो विक्टर ऑर्बन रो 16 माने very famous actually गोटे sweeping parliamentary victory होईची देखिन सेटा गोटे न्यूज रे बहुत फेमस थिला इंस्टाग्राम रे ट्रेंडिंग होतला इलेक्शन ने पूरा वन साइडेड रिजल्ट आसिला से केमती कैंपेनिंग करूथिले गोटे ऑटोक्रेटिक सिस्टम सेठी चलथिला विक्टर ऑर्बान्स रो 15-16 वर्ष हेलानी को कंट्री रिसेंटली सेटा शॉपिंग पार्लियामेंट जे तो बहुत ट्रेंडिंग रे थिला ट्रेंडिंग क्वेश्चन के जाने पचारिबनी कॉकरोच पार्टी विषय न पचारि दोरी बाबा एबे भी बहुत ट्रेंडिंग रे अछि से को कंट्री की कह परिबो इट इज हंगरी It is Hungary. Bulgaria no, Hungary. Chalo, next question. Which organization successfully conducted the maiden launch trial of the NSM SR missile? एबे को माने organization NSM SR missile launch करची? ISRO, HAL, DRDO, भारत डायनामिक लिमिटेड. NSM SR missile की launch करची? Of course, missile means it is DRDO. हाँ कि नहीं? हंगर के लिखिছি प्रधान हंगर हंगर अच्छा ठीक है ओके एनएसएम एजर मिसाइल होची कोन डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी मिसे की लॉन्च करछन कंडक्ट करछन मेडल लॉन्च हला सी वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ द आरोहण प्रोग्राम विषय पचाची आरोहण प्रोग्राम कोटा It is a scholarship program to fund the higher education of meritorious tribal students in central universities. It is designed to promote indigenous sports and cultural festivals of the Andaman Nicobar Islands on a national platform. It serves as an instrument of national integration by exposing tribal youth from isolated regions to mainland India's heritage and development. It aims to provide vocational training and employment opportunities to tribal youth in metropolitan cities. कोटा हम आरोहण प्रोग्राम कहा पाई हिचे वेरी इंपोर्टेंट प्रोग्राम क्वेश्चन पचरे आसीबार बहुत चांसेस अछि ए नुह तिलोतमा चले जे खुशी लागो मो पुराना पिला माने समस्त आज क्लास रे अछो तिलोतमा को भी बहुत दिन परे आज भेटली कर एबे जोड़ा को आसीबो सब मैराथन क्लास ना एवरी 3 to 4 डेज रे गोटे मैराथन क्लास आसीबो सो मैराथन क्लास रे तमने क्लास करो ना बहुत किछु हेल्पफुल तम प्रीलिम्स पाए मैराथन करके भी जदी खाली पळे जीवो तमर प्रीलिम्स हे जीवो no it is not A it is C it serves an instrument national integration by exposing tribal youth from isolated regions to mainland India's heritage and development हला tribal youth जो माने isolated place रे अछन से मानको mainland India रे include करे पाए yes very good it is called Arohan program very good all of you next question consider the following statement about mission mitra विषय क्वेश्चन कौन हम यार आंसर को स्टेटमेंट पढ़ो टिके तार मिशन मित्र ऊपर क्वेश्चन एटा देछि कोन कि इट इज ए जॉइंट स्पेस मिशन बिटवीन इसरो एंड नासा टू स्टडी द लूनर सरफेस. The mission focuses on mapping the physiological effects of
hypoxia and the physiological resilience of teams in isolated environments. It is being conducted in the high altitude regions of Ladakh to simulate the stressors of space flight. ହେଲା ऑपरेशन मिशन मित्रा कौन दौच देखा तुम आंसर 1 and 2 1 and 2 yes only 2 1 and 2 1 and 2 मिशन मित्रा कहार 1 and 2 केमते it is not a joint mission of ISRO and NASA. It is the mission of ISRO. It is launched by ISRO. ISRO ही launch करछि. It is not a joint mission of with NASA. है ना बाकी the mission focus करछि कोड्स रे एटा सेकंड स्टेटमेंट ठीक अछि. Mission focus in mapping of the physiological effects of hypoxia and the physiological resilience of team in isolated environments जोटा कि कोठे होछि in regions of Ladakh. है 2 and 3 statements are correct. First statement is not correct. It is ISRO not with NASA. Okay. ठीक है. Next question. Which major maritime choke point became central to global energy concerns during 26 Middle East conflict जो हला एबे कोटा maritime choke point हे गला very easy question समझते कहया कथा global energy crisis को choke point पय हेची ठीक अच्छे बुझीगली सब ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वेरी गुड इट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर्शियन गल्फ ऑफ एडेन को कनेक्ट कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सो इट इज इन चेक पॉइंट बॉस्फोरस स्ट्रेट कोठी बॉस्फोरस स्ट्रेट टा कोठी ब्लैक सी को कनेक्ट कर with sea of Marmara टर्की रे जो अच्छे टर्की ऊपर तले sea of Marmara बाबल मंडप कोठी अछि कोटा कोटा कनेक्ट करछि रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन रेड सी करछि येमेन पाखरे येमेन गोटे पटे एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका गोटे पटे डिजिबुती एटिया है ना स्ट्रेट ऑफ मलाक्का सेमते तमर कोठी को कनेक्ट करछि अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी हला ताको इट इज जॉइंटली ऑपरेटेड बाय इंडोनेशिया मालेशिया एंड सिंगापुर है ना स्ट्रेट ऑफ मलाक्का चोक पॉइंट गोटे मेजर चोक पॉइंट 900 किलोमीटर अराउंड 900 किलोमीटर गोटे स्ट्रेट अंडमान सी ऑफ साउथ चाइना को कनेक्ट कर ओके पैसिफिक ओशन सो स्ट्रेट इंपोर्टेंट स्ट्रेट्स एनी हाउ रिवाइज करके जीवो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए रेयर प्लैनेटरी पैरेड विजिबल फ्रॉम इंडिया इंक्लूडेड मर्क्यूरी मार्स सैटर्न एंड व्हिच अदर प्लैनेट प्लैनेटरी पैरेड गोटे हेतला सेतरे आउ को प्लैनेट आ सहित मिसिची विथ मर्क्यूरी मार्स सैटर्न प्लैनेटरी पैरेड गोटे इंडिया रो विजिबल थिला को प्लैनेट्स एते थिले मर्क्यूरी थिला मार्स थिला सैटर्न थिला और ता सहित आउ को प्लैनेट थिला चारटा प्लैनेट्स एते थिले प्लैनेटरी पैरेड रे की को परियो प्लैनेटरी पैरेड रे आउ को प्लैनेट थिला इट इज नेपच्यून एटा मन रखियो प्लैनेटरी पैरेड रे नेपच्यून थिला डी नो नेपच्यून सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन rhodamine B recently seen in the news is most commonly associated with which of the following rhodamine B kaha se associated a new variety of high yielding rice a rare mineral found in the deep sea a botanical extract used for treating malaria an industrial dye illegally used in street food rhodamine D टा कोतरे यूज होछि बा कोतरे सेटा कहा सहित एसोसिएटेड rhodamine B कहा सहित एसोसिएटेड ए जो चारटा ऑप्शन कहले गोटे हाई यील्डिंग राइस रेयर डीप सी रो गोटे रेयर मिनरल गोटे बोटानिकल एक्सट्रैक्ट जोटा कि मलेरिया ट्रीटिंग पे यूज होछि किंबा स्ट्रिक्ट फूड रे यूज होतबा गोटे इंडस्ट्रियल डाई rhodamine D या भीतर कोटा
वेरी गुड स्पाइकर इट इज डी इट इज एन इंडस्ट्रियल डाई जोटा कि स्ट्रिक्ट फूड रे इलीगली यूज होची जोटा बैन ही जेबे है ना रोडामेन डी सेति पॉइंट न्यूज़ रे अछि मतलब अप्रैल मंथ रे थिला सेटा न्यूज़ रे ठीक अछि इंडस्ट्रियल डाई करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन The Women and Men in India 2025 report released by April was published by which ministry or which organization? Co organization ये report टा release करे Women and Men in India 2025. Women and Men India 2025 co organization launch करे. Which organization? Yes, all are correct. It is Industrial Dye. Women and Men are in India 2025 report. Who released this report? Which ministry or which organization? Is it Niti Aayog or Ministry of Women and Child Development or Opsc or National Commission for Women? Opsc. Very good. It is released by Ministry of Statistics and Program Implementation Opsc जे कि Women and Men in India 2025 report release कर चला. It is important मन रखिबो. Very good. समस्त ठीक अछि सी. चलो next question. Which summit scheduled to be hosted by India in 2026 after more than a decade was highlighted in April current affairs रे माने एटा highlighted थिला को summit India host करूची बहुत वर्ष परे BIMSTEC summit India Africa Forum Summit 4 SCO Defense Summit Asian India Economic Forum Summit को summit एबे India host करिया को जाउची probably 31st May रे आ गोटे हिंट दे दिली तुमको 31st May रे Which summit? को समिट इंडिया होस्ट करिया को जाउचे को जल्दी को बी यस इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जोटा कि इंडिया एबे ए वर्ष होस्ट करिवो 31st मे रे होबा को जाउचे IFS very good all of you next which AI based investigation platform related to narcotic analysis related कोटा AI based investigation system सुरक्षा AI नारित AI दृष्टि AI अन्वेषण AI कोटा narcotics related कोटा AI portal AI वाला क्वेश्चन पचार एग्जाम रा थोड़ा पचार थिला AI रे अंकर so AI related जहाँ भी current रे अच्छे that is important anyway को मतलब narcotics analysis related AI portal कोटा AI investigation portal actually टा बोले after decades 10-14 years I think narcotic analysis से तो कोटा yes it is नारित AI है ना जोटा कि narcotics analysis investigation portal गोटे AI based yes very good all of you narit AI correct next question in context of nuclear physics and reactor operation which of the following best describe the state of criticality eta gote bhala question currently news re thila important exam point of view re be important in the context of nuclear physics and reactor operation which of the following best describe the state of criticality ebe mate first to kuha which nuclear plant achieved criticality currently को plant criticality achieve करछि आ क्वेश्चन पचारछि what does mean it is ना criticality माने टा कोन yes प्रधान it is right narcotics n for narit चलो एटा मते को criticality first को तमर nuclear plant हेछि and ता माने कोन चलो या पर गोटे क्वेश्चन रहला लास्ट क्वेश्चन कल्पकम तमिलनाडु लॉन्च कर क्रिटिकलिटी अचीव ही क्रिटिकलिटी माने होची कोन कि the point at which the number of neutrons produced by fission exactly balances the neutrons lost and those causing new fissions हला criticality माने कोन
फिजन द्वारा जति भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होची नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड एक्जाक्टली बैलेंसेस द जति न्यूट्रॉन लॉस होचे सेति प्रोड्यूस होची तो सेति पे सेटा एनर्जी रिलीज करूची है ना क्रिटिकलिटी माने कोन कि निजे निजर जति एनर्जी दरकार ताकू न्यूक्लियोफाइल को निज निजर एनर्जी निजे क्रिएट कर पारुची ओके तो ऑप्शन ए चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन टाइप 5 डायबिटीज एबे होचे बहुत देखा जाई जेटा बेस्ट कैरेक्टराइज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप 5 डायबिटीज कहा को कहिबा को ये को ए जर्म ऑफ gestational diabetes observed only during pregnancy, a genetic disorder common in high income countries with high obesity rates, a metabolic disorder linked primarily to autoimmune pancreatic damage, a malnutrition associated diabetes seen in lean individuals with protein deficiency. है ना टाइप 5 डायबिटीज से अभी कोटा टाइप 5 डायबिटीज कोटा है अभी टाइप 5 डायबिटीज कोटा सी सी डी सी डी सी डी इट सॉरी 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 कौन पूरा पड़ेगा लास्ट हाँ इट इज डी ए माल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड डायबिटीज है माल न्यूट्रिशन रु जो डायबिटीज क्रिएट हुए प्रोटीन डेफिशिएंसी रु जो डायबिटीज क्रिएट हुए दैट इज टाइप 5 डायबिटिक्स है ना आंसर डी ना ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नुहटा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नुहटा माल न्यूट्रिशन associated diabetics okay so with this we have completed the April month current affairs and all the questions we have covered and I hope you guys enjoyed the class if you enjoyed please like the class please push the like button and the next जेतोला में current affairs रे session आनिबा again आउ टिके 6 months रे current affairs आउ टिके आनिबा and again बच्चा बच्चा current affairs जोटा में repeat करिन एतरे नाही अलग करंट थिबो करियो एंड इट इज एनफ दीटा करंट अफेयर्स रो मैराथन क्लासेस जति के करंट अफेयर्स क्लास दिया होची तुमको करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन इट इज एनफ ओके एंड पीडीएफ अबाउट द पीडीएफ ओके ओके स्पाइकर अबाउट द पीडीएफ प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल इन दिस चैट देयर इज अ पिन्ड मैसेज फ्रॉम कैक्साइएस ना टेलीग्राम चैनल लिंक दिया जाई छी क्लास एबे सरी गला परे क्लास रो वीडियो यूट्यूब लिंक एंड पीडीएफ both will be uploaded in कैक्साइएस टेलीग्राम चैनल I hope you guys all enjoyed the class and thank you so much for your patience सकाळ 8 टारू स्टार्ट हेची it is been 3 pm right okay 3 pm so समस्ते जोड़ी हे की अच्छा so बहुत बहुत धन्यवाद तमन को बहुत धन्यवाद thank you so much thank you all of you thank you चलो जो मैंने लंच करी ना लंच करा I will go for lunch also okay तो एंड हाँ जो लास्ट जोटा है आमर मैराथन अबाउट द कौन होता लास्ट मैराथन क्वेश्चन जो अदर पीसीएस 5टा पीसीएस हरियाणा तो नहीं ना मध्य प्रदेश में नो झारखंड नो जम्मू काश्मीर यूपी बिहार पंजाब उत्तराखंड ये 5टा पीएससी क्वेश्चन डिस्कस होथर एग्जाम रे इथर जो से क्लास रे हला इथर एग्जाम हिच से वर्ष तो तमे देख से वीडियो देख रिवीजन करा क्वेश्चंस ओके